हेलो एवरीवन समस्त जय जगन्नाथ स्वागत करछि आपनकर प्रिय यूट्यूब चैनल सीईआई को जल्दी जल्दी ये ऑनलाइन मैराथन सेशन को जोड़ी जातु समस्ते स्वागत करछि तो समस्त को गुड इवनिंग एलटीआर मेन्स टीजीटी सीबीजेड बहुत निकटवर्ती से आज ही लाइव सेशन रे आमे डिस्कशन करबा जूलॉजी और बॉटनी रो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज तो जल्दी जल्दी जोड़ी जातु नमस्कार प्रणाम समस्त को ओके मोर साउंड परफेक्टली ऑडिबल की काइंडली टिके इन्फॉर्म कर दियंतु तापर आमे स्टार्ट करिबा गुड इवनिंग ओके मोर वॉइस सुना जाउछ कि समस्त को काइंडली टिके यस ओके चलंतु आरंभ करिबा ताले समस्त को जय जगन्नाथ वेलकम टू क्रिएटिव एजुकेशनल आइडिया यूट्यूब चैनल आज आम डिस्कसन करबा गुड मैराथन सेशन बायोलॉजी एमसीक्यूज फॉर एलटीआर मेन्स टीजीटी सीबीजेड यही वीडियो माध्यम रे आमे बहुत गुडा इंपोर्टेंट एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कसन करबा बोथ जूलॉजी और बॉटनी वीडियो आरंभ करबा पूर्व आपण मानन को इन्फॉर्मेशन अछि कि एई सीईआई आप माध्यम आपण माने एलटीआर टीजीटी सीबीजेड मेन रो 10टा फुल मॉक सीरीज विथ सॉल्यूशन पाई परिबे जे आपणकर आसुथिबा एलटीआर मेन रियल एग्जाम पाई बहुत हेल्पफुल हबो बहुत एफोर्डेबल प्राइस रे अवेलेबल आपण करि परिबे एही व्हाट्सएप नंबर को आपण कांटेक्ट करंतु नेक्स्ट सेमिति पीसीएम टीजीटी पीसीएम मेन पाई मध्य मॉक सीरीज 10टा फुल मॉक सीरीज अवेलेबल अछि ता सहित ओएवीएस रो रिक्रूटमेंट बहुत जल्दी बाहर को जाउची ओएवीएस रो टीजीटी पाई कांसेप्ट क्लास रिवीजन क्लास पीवाईक्यू नोट ई बुक 499 एफोर्डेबल प्राइस रे आपण पाई परिबे ठीक अछि आपण एही व्हाट्सएप नंबर रे कांटेक्ट करिकि एही कोर्स को अवेलेबल करि परिबे तो समस्त को मो तरफ रो स्वागत जणाउची एही लाइव सेशन को आपण मानकर एलटीआर मेंस पे प्रिपरेशन तो जोरदार चलथिबो ता आपण मानकर बहुमूल्य समय रो एतिकी समय बाहर करिकि आपण एठी योगदान देइजंती बहुत जण लाइव चैट रे भी आसलानी समस्त को मो तरफ धन्यवाद ताले चलंतु आ विलंब न करिकि स्टार्ट करबा हमर एलटीआर पाई सीबीजेड पाई एमसीक्यू मैराथन तो जूलॉजी और बॉटनी सेपरेट डिस्कशन करबा तो प्रथम हम स्टार्ट करबा जूलॉजी टैक्सोनॉमी चैप्टर रो आपण माने क्वेश्चन देखि पारथुबे जदी क्वेश्चन देखा जाउनी ताले मते कोनतु मु स्क्रीन साइज टी बढ़े दोची ओके ठीक अच्छे आपण माने क्वेश्चन रो आंसर जल्दी जल्दी कहतु फटाफट कौन आंसर हम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव मोस्ट एक्सटेंसिव डाइवर्सिटी इन न्यूट्रिशन को ऑर्गेनिज्म रो ओके शो करूची मोस्ट एक्सटेंसिव डाइवर्सिटी इन न्यूट्रिशन कौन हम देखा जाऊनी ठीक अच्छे एबे विजिबल ही पाउची Okay, first question, which of the following have most extensive diversity in nutrition? Nutrition ro extensive diversity. कौन आंसर हम
देखंतु न्यूट्रिशन रो डाइवर्सिटी माने कोन जो थे बोथ ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक भितर पैरासाइटिक सिम्बायोटिक ए सब जगह आसु तो एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफिक्स फंगाई आर मोस्टली decomposers that means saprotrophic plants are generally autotrophic so bacteria हम जो देखिवा the answer is correct answer is bacteria yes जदि बैक्टेरिया हम देखिवा तो बैक्टेरिया रे कोन अछि एठी ऑटोट्रॉफिक बैक्टेरिया अछंती केमोट्रॉफिक मध्ये बैक्टेरिया अछंती ता सहित बहुत गुडे बैक्टेरिया हेटेरोट्रॉफिक कैटेगरी जाउछंती पैरासाइटिक सैप्रोफाइटिक सिम्बायोटिक बैक्टेरिया राइजोबियम ठीक अछि तणो मोस्ट एक्सटेंसिव डाइवर्सिटी न्यूट्रिशन जदि पचारला बैक्टेरिया अच्छा बैक्टेरिया को किंगडम रे जाउछि हमरो मोनेरा ठीक अछि मोनेरा ओके ओके नेक्स्ट आमे जिबा 2 नंबर क्वेश्चन को सेल वॉल ऑफ बैक्टेरिया सेल वॉल कोथरे तयारी हेछि कोन आंसर हबो सेलुलोज तो प्लांट रो पॉलीपेप्टाइड पेप्टिडोग्लाइकन सुडोमोरेन तो आंसर इज पेप्टिडोग्लाइकन पेप्टिडोग्लाइकन इज द करेक्ट आंसर पेप्टिडोग्लाइकन भी एठी अछि आपण मानकर NAG two types of peptidoglycan are found NAG and N-acetyl glycosamine N-acetyl muramic acid okay two type of peptidoglycan are found yes cellulose is found in plant cell wall तो आपण माने कहि परिबे कि फंगस रो सेल वॉल कोथरे तयारी हेछि फंगस सेल वॉल फंगस रो सेल वॉल कोथरे तयारी हेछि फंगस रो सेल वॉल होछि काइटिन वेरी गुड काइटिन रे तयारी हेछि फंगस रो सेल वॉल okay chitin is the correct answer number 3 कोंतु मेसोजोम in u bacteria is analogous to u bacteria रे थिबा मेसोजोम is analogous to मेसोजोम रो बेसिकली कोन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अछि बैक्टीरिया रो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो इनफोल्डिंग को कहउछि मेसोजोम ठीक अछि तो बेसिकली मेसोजोम इज हेल्पफुल इन respiration मेसोजोम इज फाउंड इन यू बैक्टीरिया व्हिच इज एनालोगस टू तो मेसोजोम रो काम होछि रेस्पिरेशन हमर यूकैरियोट मानकर रेस्पिरेशन रो काम कोन माइटोकॉन्ड्रिया ठीक अछि तेणु मेसोजोम इज एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया ठीक अछि एटा मन रखंदु आपण माने नंबर 4 नंबर जाको सब राइट साइड लिखा जाइए ठीक अच्छे हेट्रोसिस्ट इज नंबर 4 कहतु हेट्रोसिस्ट कोड देखा जाउची ब्लू ग्रीन आल्जी मानकर देखा जाउची ब्लू ग्रीन आल्जी बा सियानोबैक्टीरिया ठीक अच्छे हेट्रोसिस्ट देखा जाउची तो हेट्रोसिस्ट कौन जमिति नस्टक आनाबेना ओके एठी देखा जाउची हेट्रोसिस्ट फर्स्ट कहया चाहूची हेट्रोसिस्ट होची यस नंबर 4 बी कहले हेट्रोसिस्ट इज ओनली इन्वॉल्वड इन नाइट्रोजन फिक्सेशन इट इज नॉट इन्वॉल्वड इन फोटोसिंथेसिस माने ये नाइट्रोजन फिक्सेशन रे हेल्प करे ठीक अछि तणु फोटोसिंथेसिस रे हेल्प करे नै ऑप्शन 4 दैट इज ऑप्शन डी माने ऑप्शन 4 इज करेक्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन रे हेल्प करे नॉन फोटोसिंथेटिक फोटोसिंथेसिस रे हेल्प करे नै नो हेट्रोसिस्ट आर नॉन फोटोसिंथेटिक मन रखंतु ब्लू ग्रीन आल्जी रे क्रोमाटोफोर थाए फोटोसिंथेसिस रे हेल्प करिया पाई नाइट्रोजन फिक्सेशन रे हेल्प ओनली करे हेट्रोसिस्ट
ठीक अच्छे नेक्स्ट जीवा ओके नेक्स्ट नंबर 5 कहतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वॉल लेस माने सेल वॉल लेस स्मॉल ऑर्गेनिज्म माने सेल वॉल नहीं सेल वॉल नहीं यू बैक्टीरिया तो सेल वॉल अच्छी माइकोप्लाज्मा सियानोबैक्टीरिया एंड आर्किबैक्टीरिया कौन हबो यस नंबर 2 दैट इज माइकोप्लाज्मा बहुत बढ़िया माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन रो एब्सेंस रे बंचे ये ठीक अच्छे आउ वॉललेस एमानकर सेल वॉल नहीं ठीक अच्छे तापर हम देखिया माइकोप्लाज्मा कौन चारटा ऑप्शन को भल से पढ़ा नंबर 6 देखंतु फैकल्टेटिव एनारोबस ऑब्लिगेट एनारोब्स फैकल्टेटिव एरोबिक ऑब्लिगेट एरोबिक यस माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ कह जाउछ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म बहुत बढ़िया ए सब मु मोर प्रीवियस जूलॉजी और बॉटनी दिटा मैराथन वीडियो को मध्य आपण माने देखि दियंतु जो माने देखि नांती बहुत उपयोगी हो आपण मानन पय तो माइकोप्लाज्मा फास्ट कथा होची एनारोब माने ऑक्सीजन रो एब्सेंस रे बंची पारे बट तो फैकल्टेटिव एनारोब हबो ना ऑब्लिगेट एनारोब हबो तो 1 और 2 भीतर कंफ्यूजन रहला ऑब्लिगेट माने कोन फ्री लिविंग जे निजे बंची परिबो अन्य कोनोसी ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करिवोनी बट माइकोप्लाज्मा तो गोटे पैरासाइट ठीक अछि गोटे होस्ट एनिमल बा प्लांट रे सी रहइबो ठीक अछि फैकल्टेटिव माने जे डिपेंड करिवो अन्य लिविंग ऑर्गेनिज्म पर जे न्यूट्रिशन पय तेनु द आंसर इज फैकल्टेटिव एनारोब्स ओके नंबर 1 फैकल्टेटिव एनारोब्स इज द करेक्ट आंसर 2 1 और 2 रे कंफ्यूजन रहला but 1 is the correct answer because it is an anaerobe काहे anaerobe कहले माइकोप्लाज्मा को काहे ना ऑक्सीजन रो एब्सेंस इज बंची परिबो ठीक अछि ऑक्सीजन रो एब्सेंस रे तार लाइफ प्रोसेस चलिबो बट फैकल्टेटिव माने डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म इट इज तो ये फैकल्टेटिव ठीक अछि ओके नेक्स्ट नंबर 7 एंड नंबर 8 नंबर 7 कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन मार्सी एरिया कौन यस 6 रे पाओ मार्सी एरिया मार्सी एरिया कौन हम कहूँ तो कमेंट सेक्शन यस मिथानोजेन मार्सी एरिया सन्तोषंतिया जगह रे हालोफाइल्स सल्टी एरिया रहबो मिथानोजेन्स थर्मोएसिडोफिल्स एंड ऑसिलेटोरिया ने माने कमेंट सेक्शन रे कहूँ कौन हम आंसर मिथानोजेन नंबर 4 मु 7 नंबर क्वेश्चन रे अछि देखंतु भला रे मार्सी एरिया रे को बैक्टीरिया तो नहीं को आर्किबैक्टीरिया जनरली हालोफाइल्स मिथानोजेन्स थर्मोएसिडोफिल्स ऑसिलेटोरिया हो जोटे ब्लू ग्रीन एल्जी थर्मोएसिडोफिल्स तो थर्मल स्प्रिंग रहबो हालोफाइल्स सल्टी एरिया रहबो मार्सी एरिया आउ रुमिनेंट मानकर गट ठीक अच्छे काउ बफालोर एलिमेंटरी कैनाल रहिबो मिथानोजेन प्रोड्यूसिंग मिथेन गैस तो मार्सी एरिया रो आर्किबैक्टीरिया ना होची मिथानोजेन्स मन रख दियंतु ठीक अच्छे नंबर 8 कोंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ आर्किबैक्टीरिया प्रोवाइड टॉलरेंस फॉर सर्वाइविंग इन एक्सट्रीम कंडीशंस हमर जो आर्किबैक्टीरिया माने अछंती एमाने बहुत एक्सट्रीम हार्श कंडीशन रे भी रही पाउछंती तो एमानकर को स्ट्रक्चर से मानकर टॉलरेंस को वृद्धि करूची बा सेठी एक्सट्रीम कंडीशन रे सर्वाइव करिया पे हेल्प करूची सेल मेम्ब्रेन रो स्ट्रक्चर ना सेल वॉल रो स्ट्रक्चर ना डीएनए रो स्ट्रक्चर ना साइटोप्लाज्म नंबर 8 को कोन दो वर्ता नंबर 8
आर्किबैक्टीरिया, नंबर 8 yes cell wall समस्त कहते yes the correct answer is cell wall ठीक अच्छे आर्किबैक्टीरिया cell wall जी कि ताको एक्सट्रीम कंडीशन रे टॉलरेट करबा को हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आड़क जीवा ओके सिंगल सेल नंबर 9 देखंदु सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल मीन्स यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म माने आर प्लेस्ड इन व्हिच किंगडम कोंदु यस 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 नंबर 9 रा आंसर आछी किंगडम प्रोटिस्टा ठीक देखंदु किंगडम मोनेरा रे सबु यूनिसेलुलर माने अछंदी बट दे आर प्रोकैरियोट्स unicellular all unicellular prokaryotes are in kingdom monera एटी क्वेश्चन पचारला यूनिसेलुलर यूकैरियोट सिंगल सेल माने यूनिसेलुलर यूकैरियोट तो ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट आर प्रेजेंट इन किंगडम प्रोटिस्टा फंगाई रे समस्त रहउचंती मल्टीसेलुलर डिकंपोजर एटी मल्टी प्लांटी रहउचंती मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफ ठीक अछि तो किंगडम प्रोटिस्टा इज द राइट आंसर यस डायनोप्लाज्मेट मते गोटे प्रोटिस्टा जाउची बहुत बड़े प्रोटिस्टा ठीक अछि नेक्स्ट 10 नंबर टा कोन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटिस्ट इज रेस्पोंसिबल फॉर रेड टाइड्स पई के रेस्पोंसिबल रेड टाइड्स क्रिजोफाइट्स डायनोफ्लाजलेट्स यूग्लिनॉइड्स स्लाइम मोल्ड्स क्रिजोफाइट्स को मन रखंतु गोल्डन आल्जी बोली कहवा होची किछि इंफॉर्मेशन को नोट डाउन भी कर दियंतु ताको कोन कहवा होची गोल्डन आल्जी क्रिजोफाइट्स भितरे डायटम जाउची they are known as golden algae okay they are placed in kingdom protista but the question is red tide pai ki responsible the answer is dinoflagellates ganelux good dinoflagellate okay example कहली so dinoflagellates are responsible for red tides okay the answer is B yes but 2 10 नंबर 2 नंबर बा बी ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नंबर 11 कोंदु नंबर 11 नंबर 12 चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियंस ए ऑप्शन चैप्टर कोन हो डायटम और क्रिजोफाइट्स डायनोफ्लाजलेट्स और पायरोफाइट्स यूग्लिना और यूग्लिनॉइड्स स्लाइम मोल्ड्स और जिम्नोमाइकोटा चीफ प्रोड्यूसर को प्रोटिस्टा चीफ प्रोड्यूसर यस नंबर 11 रो ए समस्त कहउछन चीफ प्रोड्यूसर डायटम आज सबु जाक चैप्टर जूलॉजी बॉटनी रो सबु जति की सिलेबस अछि सेत्रु आमे इंपोर्टेंट एमसीक्यू जाक डिस्कशन करबा ठीक अछि okay so the chief producer in ocean hochi diatom or chrysophytes yes golden algae ठीक अच्छे करेक्ट आंसर होची diatom or chrysophytes okay chief producer of oceans okay आउ टिके स्पीड करियो कहउछंती okay which of the following is unicellular fungi देखो fungi माने समस्त multicellular but one fungus which is unicellular that is your yeast okay number 12 next question बुझिबा
Number 13. Okay, number 13 देखंतु. Which of the following is parasitic fungi? Rhizopus, albugo, yeast and aspergillus. Parasitic माने living organism को effect पकौथो. कौन तो समझते एटा? Parasitic fungi. Number 13. Which of the following is parasitic fungi? अच्छा कमेंट्स रे कहउचंती क्वेश्चन लेवल एमित रहयो. यस क्वेश्चन लेवल एई टाइप रे ही अछि जहा मु प्रीवियस ईयर देखंतु आपण एई चैनल रो लाइव सेशन को जिबे मु जूलॉजी रो 3टा पीवाईक्यू और बॉटनी रो 3टा पीवाईक्यू प्लस 2टा मैराथन वीडियो कंप्लीटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड ए सिलेबस को आखि आगे रखी बनैछि. एई क्वेश्चन जा मध्ये सही सिलेबस को देखि बनैछि. ठीक अछि आसीबो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी एथि ऐड करछि. ठीक अछि ओके यार आंसर कोंदु. आर आंसर कौन देखो राइजोपोस होची ब्रेड मोल्ड. मु 13 नंबर अच्छी बर्तमान राइजोपोस होची ब्रेड मोल्ड. तो ये सैप्रोफाइटिक. ईस्ट भी कौन करची एनारोबिक रेस्पिरेशन करिकी निजर न्यूट्रिशन डिराइव करची. एस्परजिलस रो साइट्रिक एसिड बाहरची. तो दे आर कमर्शियली इंपोर्टेंट फंगस. बट अल्बुगो जी कंप्लीटली पैरासाइटिक फंगाई. मस्टर्ड पैरासाइट मस्टर्ड गच्छ लिविंग मस्टर्ड गच्छ ऊपर ये इफेक्ट पकाउची. ठीक अछि तेणु तार आंसर हम अल्बुगो. अल्बुगो कैंडिडा बा अल्बुगो पैरासाइटिक फंगाई होची अल्बुगो मस्टर्ड पैरासाइट. ठीक अछि बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखंतु मतलब अल्बुगो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ फंगाई हैव डाइकारियन कंडीशन. प्रथम हम जानिया पड़े व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइकारियन. डाइकारियन माने गोटिए सेल भितर दुईटा न्यूक्लियस थिबो. ओके दिस कंडीशन इज नोन एज डाइकारियन. जो फंगस मान देखा जाउची तो फंगस रो को क्लास रे देखा जाउची आस्कोबेसिडियो आस्कोड्यूटेरो बेसिडियोमाइसिटिस फाइकोमाइसिटिस एंड ऑल ऑफ दिस. यस अल्बुगो कैंडिडा. यस यस 14 कोन हबो 14 नंबर कोन डाइकारियन कंडीशन. जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन रे कहंदो डाइकारियन कंडीशन. आस्कोबेसिडियो आस्कोड्यूटेरो बेसिडियो फाइको. आस्कोबेसिडियो ओके 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 बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन मन रखंदो. आंसर भलसे फंगस रो चारिटा क्लास अछि आस्कोमाइसिटिस बेसिडियोमाइसिटिस फाइकोमाइसिटिस एंड ड्यूटेरोमाइसिटिस. सो आस्कोमाइसिटिस एंड बेसिडियोमाइसिटिस रे डाइकारियन स्टेज बा डाइकारियन कंडीशन आस्ता है. ओके बोथ आस्को एंड बेसिडियो रिमेंबर. नेक्स्ट जीवा आराम रे जहाँ भी पढ़ी टिके मन पकई कहतु. ओके नेक्स्ट नंबर 15. Which of the following is not applicable for fungi? They are eukaryotic. They are heterotrophic. They are both unicellular and multicellular. They possess a purely cellulosic cell wall. मु तो फंगस रो सेल वॉल ऊपर आपन क्वेश्चन पचारथिली. तो नंबर 14 ना कोन कोन हबो नंबर 15 फंगस को पॉइंट एप्लीकेबल हम ना. देखो फंगस माने समस्त यूकैरियोटिक हेटेरोट्रोफिक यूनिसेलुलर फंगाई तो ईस्ट तेणु बट सेल वॉल तो काइटिन रे तयारी हिची बट एठी कहले सेलुलोजिक सेल वॉल. तो आंसर इज योर डी. दैट इज 4. They possess a pure cellulosic cell wall is not applicable to fungi. सेमानका सेल वॉल तयारी हिची काइटिन. काइटिन होची गुटे नाइट्रोजन कंटेनिंग
polysaccharide or extra point chitin रे nitrogen थाए nitrogen containing heteropolysaccharide. Okay. Okay, number 16. In Whitaker's 5 kingdom classification, eukaryotes are assigned to all the 5 kingdom, only 4 of the 5 kingdom, only 3 kingdom, only 1 kingdom. Yes. तो बर्तमान आमर व्हिटाकर 5टा किंगडम रे प्रोकैरियोट माने ओनली गोटे किंगडम रे अछंती मोनेरा आउ जो 4टा किंगडम अछि प्रोटिस्टा फंगाई एनिमलिया प्लांटी सेठी 4टा किंगडम सेठी सब जा कोन अछंती यूकैरियोट तो बहुत इजी क्वेश्चन तो एडा आंसर हो ओनली 4 ऑफ द 5 किंगडम जोडी यूकैरियोट माने अछंती आ गोटिए किंगडम मोनेरा रे ओनली प्रोकैरियोट्स माने अछंती इट्स वेरी इजी क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन बुझिबा 16 रो 2 वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन चलंतु ब्लू ग्रीन एल्गी पर आसला इन ब्लू ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेसिस आर करेक्ट ब्लू ग्रीन एल्गी रे फोटोसिंथेसिस रे की हेल्प होछ क्रोमाटोफोर क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेटिक लामेला जोडा थाइलाकोइड्स और क्रोमोप्लास्ट प्रीवियस मो डिस्कस ब्लू यस कोंदो blue green algae or cyanobacteria nostoc anabana photosynthesis yes the answer is chromatophore okay chromatophore the pigment helps in photosynthesis to the prokaryotic blue green algae or cyanobacteria like nostoc and anabana so the answer 1 is correct the answer a option is answer 1 chromatophore is correct number 17 number question okay next question को जिबा number 18 को infoldings of plasma membrane bacteria ए क्वेश्चन आस्तिला माइटोकॉन्ड्रिया सहित एनालॉगस थिला इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग को कौन कहबा बैक्टीरिया रो आंसर इज मेसोजोम यस प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ओके नंबर 19 को जिबा एटीन मेसोजोम हम 19 कहतु आउ थे क्वेश्चन आसला हेट्रोसिस्ट is a structure which is associated with heterocyst कोथरे काम बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बट आपको मन रखी देबे तो इजीली क्वेश्चन रो आंसर करि परिबे हेटेरोसिस्ट ब्लू ग्रीन एल्गी बा सियानोबैक्टीरिया मानकर स्ट्रक्चर हेटेरोसिस्ट कोथरे हेल्प करछि 19 रो आंसर 3 दैट इज योर नाइट्रोजन फिक्सेशन ओके नाइट्रोजन फिक्सेशन रो हेल्प करछि Okay. So the answer is nitrogen fixation. Next question number 20 को जिबा heterocyst बहुत टर्मिनल इंटरकलरी यस नाइट्रोजन फिक्सेशन नष्ट गाना बड़ी ब्लू ग्रीन एल्गी बा सियानोबैक्टीरिया मानकर थाए ओके हार्मफुल एक्टिविटी ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी नंबर 20 देखंतु ब्लू ग्रीन एल्गी रो हार्मफुल एक्टिविटी कोन यस आंसर पळे आसलानी क्वेश्चन न सरुणो डीनाइट्रिफिकेशन वाटर ब्लूम increase alkalinity of soil decrease fertility of soil so blue green algae मानकर देखो blue green algae तो नाइट्रिफिकेशन करे नाइट्रोजन फिक्सेशन करिता तो डीनाइट्रिफिकेशन करे ने वाटर ब्लूम और आकु को जाउछ आ गोटे टर्म अछि कहि परिबा आ गोटे कोन टर्म algal bloom okay
এই algal bloom বা water bloom रे कौन हुए ब्लू ग्रीन algae मानकर पॉपुलेशन बढ़ जाए ठीक अच्छे से माने से वाटर जो एक्वाटिक सोर्स जहाँ पॉन्ड की रिवर थी ताको डिस्कलरेशन कर दियंती प्लस सेठी ऑक्सीजन रो लेवल को से माने कौन करंती जहाँ भी न्यूट्रिएंट थी से न्यूट्रिएंट को निजे यूज कर दियंती ओके सो दिस इज द हार्मफुल एक्टिविटी ऑफ ब्लू ग्रीन algae ओके नेक्स्ट नंबर 21 नेक्स्ट चलो जल्दी यस एडा कोंदु व्हिच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट्स नंबर 21 रो आंसर कोंदु यस बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड विल मोर दैट मींस द वाटर इज मोर पॉल्यूटेड ऑक्सीजन कम जाए यस ओके बहुत बढ़िया नंबर 21 कोंदु व्हिच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट्स इज एनालोगस टू लाइसोसोम यूकैरियोट मानकर लाइसोसोम सुइसाइडल बैग बा विभिन्न प्रकार हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रखे जहाँ भी सेल भितर वेस्ट मटेरियल पड़े आसे जहाँ भी किसी ऑर्गेनेल खराब हो गला ताको डिस्ट्रॉय करे तो प्रोकैरियोट मानकर को स्ट्रक्चरटा लाइसोसोम सहित एनालोगस मेसोसोम जिनोफोर पेरिप्लाज्मिक स्पेस एंड पेरिन्यूक्लियर स्पेस जिनोफोर कहले बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 21 जिनोफोर हम नहीं द आंसर इज पेरिप्लाज्मिक स्पेस बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रख साइट सेल मेम्ब्रेन रो जो स्पेस थाए दीटा वॉल भीतर दीटा मेम्ब्रेन भीतर जो स्पेस थाए दिस इज नोन एज पेरिप्लाज्मिक स्पेस द पेरिप्लाज्मिक स्पेस कंटेन्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स लाइक लाइसोसोम जेमिति हाइड्रोलाइटिक एंजाइम निज पाखे रखी सेमिति पेरिप्लाज्मिक स्पेस रे मध्य किछि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम थाए लाइसोसोम भली जे कि डिग्रेडेशन करे वेस्ट मटेरियल को ठीक अछि सेलुलर डेब्रिस को द आंसर इज योर 21 रो 3 पेरिप्लाज्मिक स्पेस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन that is 22 the main difference between gram positive and gram negative resides in the composition of cilia cell wall cell membrane cytoplasm 22 The answer is yes, cell wall. Gram positive cell wall is thick as compared to the thin cell wall in gram negative. So the answer is cell wall. The correct answer is cell wall. Okay. ग्राम पॉजिटिव रो थिक सेल वॉल रहता है सेल वॉल स्टेनिंग यस ओके ओके ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 23 को जीवा चलो जल्दी 23 24 फर्स्ट कहूँ बैक्टीरियल फ्लैजेला आर मेड अप ऑफ ता सहित मत कहूँ से प्रोटीन रो ना कौन बैक्टीरियल फ्लैजेला कौन तैयारी होइछि तो आंसर मु कहिदेली द आंसर इज प्रोटीन ओके सो ए प्रोटीन रो ना कौन व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोटीन यस द नेम ऑफ द प्रोटीन इज फ्लैजेलिन प्रोटीन बैक्टीरिया रो फ्लैजेला को प्रोटीन रे तैयारी होइछि फ्लैजेलिन प्रोटीन वर्तमान क्वेश्चन आ गोटे जाउछि आपण मानक पई यूकैरियोटिक मानकर फ्लैजेला को प्रोटीन रे तैयारी होइछि कमेंट सेक्शन रे कहंतु यार आंसर हो फ्लैजेलिन फ्लैजेलिन बर्तमान मोर नेक्स्ट क्वेश्चन होची यूकैरियोटिक मानकर फ्लैजेला
को प्रोटीन रे तयारी हिची यूकारियोटिक मानकर आंसर ट्यूबुलिन कहले वेरी गुड यूकारियोटिक मानकर होची ट्यूबुलिन ओके मन रखंतु फ्लैजेलन बैक्टीरिया मानकर यूकारियोटिक मानकर जदि फ्लैजेला जदि रहइबो देन दिस फ्लैजेला इज मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन नंबर 24 golden algae is the common name of algae belonging to it's very easy question मो पूर्वर कहूली गोल्डन आलजी कहूँ बट गोल्डन आलजी कौन हम क्रिजोफाइटा पायरोफाइटा इग्लिनोफाइटा सियानोफाइटा द आंसर इज क्रिजोफाइटा डायटम्स आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी गोल्डन आलजी यस ट्यूबुलिन प्रोटीन मन रखु 24 आंसर 1 बा ए ऑप्शन क्रिजोफाइटा According to five kingdom 25 number five kingdom system, the unicellular algae like dinoflagellates, diatoms, euglenoids are included in kingdom. Very easy question. That is your dinoflagellate, diatom, euglenoid सब जगह जाउछंती हमरो को किंगडम रे किंगडम प्रोटिस्टा ओके किंगडम प्रोटिस्टा नंबर 25 प्रोटिस्टा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा बहुत गुडा क्वेश्चन आपनकर बेसिक लेवल रो आसीबो आ किछि क्वेश्चन मॉडिफाइड हे कि एडवांस लेवल रो आसीबो ठीक अछि आ एनसीईआरटी बुक रो बहुत गुडा क्वेश्चन आसी प्रीवियस आरएसटी ठीक अछि ओएवीएस रे भी एंड LTR मेन्स रो भी आशा करा जाउछि कि एनसीईआरटी रो ही आसीबो तो एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक को भलसे रेफर कर दियंतु प्लस मोर जो दुईटी मैराथन वीडियो जूलॉजी एंड बॉटनी बहुत हेल्पफुल होबा आपण माने आउथरे ताकू पढ दियंतु ताकू नोट डाउन कर दियंतु ओके नंबर 26 को जीवा डिकम्पोजर प्रोटिस्ट डिकम्पोजर माने जो प्रोटिस्ट फंगस बली बिहेव करछि फंगस बली बिहेव करछि answer is slime molds yes sorry you don't worry okay first slime molds is the correct answer yes आपन टेलीग्राम ग्रुप रे सब पीडीएफ मिल जिवो डिकम्पोजर प्रोटिस्ट माने प्रोटिस्ट रे किछि अछंती जो माने प्लांट भली बिहेव करछंती जो एग्जांपल यूग्लिना डायटम्स माने क्रिजोफाइट्स हला सेमिति फंगस भली बिहेव करथवा प्रोटिस्ट माने जो डिकम्पोजर प्रोटिस्ट so they are slime molds option C option 3 number 27 yes neurospora which is popularly known as Drosophila plant kingdom belongs to माने बहुत गुडा जेनेटिक्स रो एक्सपेरिमेंट जाको न्यूरोस्पोरा को यूज करी करा जाउची ठीक अछि 27 रो आंसर कोन नंबर 27 न्यूरोस्पोरा न्यूरोस्पोरा अस्को ठीक अछि प्रीवियस मैराथन रो लिंक लाइव सेशन जान सीआई चैनल रो लाइव बोली प्लेलिस्ट रे अछि आपन को मिलि जिवो जूलॉजी बॉटनी yes the answer is ascomycetes मन रखन तो important memory based question okay so the answer is ascomycetes neurospora
नंबर 28 को जानतु न्यूरोस्पोरा होची एस्कोमाइसिटिस सेल वाला फंगाई होची काइटिन ओके असला इजी क्वेश्चन एंड रिपीटेड क्वेश्चन नेक्स्ट 29 the fungus without mycelium the fungus body is known as mycelium okay network of thread like structure known as hyphae तो को फंगस रो mycelium नहीं 29 रो आंसर कोंतु fungus without mycelium कौन हबो Phytophthora infestans, Rhizopus, Saccharomyces, Microsporum. देखंतु Saccharomyces माने होची yeast. Saccharomyces is the scientific name of yeast. तो yeast होची निजे गोटे unicellular तो mycelium आसीबो कोडू. तो आंसर हबो Saccharomyces. Okay. Next number 30. Deuteromycetes are called imperfect fungi. It will be a question question भितरे ଗୋଟେ concept clear होला कि Deuteromycetes group class ର fungus ମାନଙ୍କୁ imperfect fungi କୁହା ଯାଉଛି କାହିଁକି number 30 because they have no cell wall, no mycelium, no sexual reproduction, no asexual reproduction. Yes, 30 C. Yes, no sexual reproduction. They don't possess sexual reproduction. ठीक है? That's why Deuteromycetes are known as imperfect fungi. Okay. Next. (31) Gondu. Which 31? Very important question. Biotechnology को relate करके दिया अछि. Which one of the following bacteria has found extensive use in genetic engineering work in plant? Plant मानंकर genetic engineering करिया पे को bacteria को use करा जाए? Clostridium septicum, Xanthomonas cypri, Bacillus coagulans, Agrobacterium tumefaciens. Okay. 31. Yes, the 31 number D, number 4 that is correct. Agrobacterium tumefaciens is the correct answer. Agrobacterium. So not ठीक है Bacterium tumefaciens ठीक है okay next time जिबा next question number 32 which of the following is non-cellular organism? Non-cellular means they have not a typical cell-like structure. That means acellular also. Bacteria, fungi, algae, virus. कौन हबो? (32) Yes, the answer is virus. Virus is the correct answer. Virus है non-cellular organism. Virus ठीक है acellular. It is only living in host organism. ठीक है नंबर 33
The thalloid body of a slime mold myxomycetes is known as बहुत गुड़ाए slime mold यदि मिसी गले aggregate slime mold होची protista रे अछि ठीक अछि तो बहुत गुड़ाए slime mold मिसी गल ताको कोन कुआ होची thalloid body aggregation of slime mold number 33 कोन हबो बहुत इंपोर्टेंट स्लाइम मोल्ड रो थालोइड बॉडी कोन कुआ माने स्लाइम मोल्ड्स आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स सेति तो सेमाने प्रोटिस्टा अछन तो सेमानकर एग्रीगेशन को कोन कुआ जबो यस प्लाज्मोडियम नंबर 4 दैट इज नंबर डी प्लाज्मोडियम इज द करेक्ट आंसर स्लाइम मोल्ड बहुत सारा मिसिगल ताको प्लाज्मोडियम बोली कहउ छी प्लाज्मोडियम तो गोटे अछि आपण मानकर मलेरिया पैरासाइट प्रोटोजोआ रे अछि आ गोटे स्लाइम मोल्ड मानकर एग्रीगेशन को मध्य प्लाज्मोडियम कहउ छी ओके यस प्लाज्मोडियम नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा प्लाज्मोडियम समस्त कहले बहुत बढ़िया प्लाज्मोडियम 34 black stem rust of which is caused by rust and smart दिया disease को अपन मन रखिया पड़िबो rust both are basidiomycetes कहि दोची ठीक अछि yes Coccinia graminis बहुत बढ़िया rust तले smart कोन हबो कहि परिबे smart कोन हबो कहि परिबे Coccinia ठीक अछि स्मार्ट कोन हबो कोन स्मार्ट रस्ट पाई होची आंसर Coccinia graminis स्मार्ट हबो उस्टिलागो smart both are in basidiomycetes Coccinia होची rust उस्टिलागो स्मार्ट उस्टिलागो ट्रिटिकी यस ओके बट यूज genus name होची उस्टिलागो involves in smart disease Coccinia is a rust disease okay number 34 complete next जीवा number 35 already गोटे ऑप्शन रे आस्थिला मु कहितली तार आंसर कोंदु a good producer of citric acid both are basidiomycetes yes rust and smart citric acid are good producer alternate solani yes yellow blight potato कोंदु good producer of citric acid कौन yes the correct answer is aspergillus next 36 चलंदु pseudoxylum is found in platyhelminthes urochordata nematoda arthropoda 36 कोंदु 36 कौन हबो aspergillus रु citric acid तयारी होची बहुत बढ़िया next 36 pseudoxylum एट होचंती aschelminthes ठीक अछि aschelminthes जोटा राउंड वर्म अछि बट एटी तो aschelminthes लिखा है नै aschelminthes रो अन्य ना होची nematoda or aschelminthes are pseudoxylomate so here the correct answer is number 3 or number C that is your nematoda okay or aschelminthes बहुत बढ़िया so we'll go to number 37 Aurelia is known as pseudoxylomate in aschelminthes okay next question go on to number 37 Aurelia catfish jellyfish silverfish cuttlefish कौन हम
एनिमल किंगडम रो मन रखिया पई किछि इंपोर्टेंट जाको जहा जहा मु मैराथन रे जहा जाय जति कि एनिमल किंगडम कहि ना सेति आपण नोट डाउन कर दियंतु मैराथन वीडियो रो ठीक बा सेति बहुत इंपोर्टेंट सेति मन रखि दु ऑरेलिया so ऑरेलिया is known as jellyfish okay phylum Coelenterata ऑरेलिया is known as कौन jellyfish how male and female ascaris can be identified yes 38 number टा कहंतु 38 number मेल और फीमेल आस्कारिस राउंड वर्म को क्राइटेरिया तांको आइडेंटिफाई करि होबो से कहला कि anterior end of male is curved while that of female is straight anterior end of female is curved while that of male is straight number 3 posterior end of male is curved while that of female is straight female has cloaca 38 एठी बहुत माने भूल हेबार चांसेस अछि जदि एनसीईआरटी बायोलॉजी 11th क्लास रो बुक को देखिबे एंड प्रीवियस ईयर को तो आरएसटी रे आसने कि तो अन्य किछि एग्जाम रे आछि जति के भलसे देखिबे तार आंसर आछि आर आंसर नंबर 3 आसियो ओके posterior end of male is curved while that of female is straight एनसीईआरटी बायोलॉजी रो 11th क्लास बुक रे अछि posterior end of male is curved पूरा posterior end टा जो देखिबे पूरा फाइनल पूरा टर्मिनल पोजीशन को देखिबे ताले से कर्व हो जाय छै ओके बट फीमेल रे कोन अछि स्ट्रेट अछि पूरा ओके सो 38 रो 3 मन रखो posterior end of male is curved पूरा जदि एनसीईआरटी बुक रो डायग्राम टा देखिबे मेल आस्कारिस रो टेल रे पूरा टर्मिनल से कहै छै posterior end कहै छै end तो टर्मिनल पॉइंट टा कोन हो जाय छै कर्व हो जाय छै बट फीमेल रे कोन अछि स्ट्रेट अछि ओके सो 38 रो 3 ओके तो नेक्स्ट जीवा में यस 39 एक्सक्रीटरी ऑर्गन एनालिड्स कोन हो कहंदु एनालिड मानकर एक्सक्रीटरी ऑर्गन कोन हो नेफ्रिडिया प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेल्स किडनी yes female longer than male ठीक अछि बट कर्व जदि आसला ताले मेल रो टिके कोन होई छि posterior end टा कर्व होई छि just look the diagram of NCERT okay the answer is nephridia annelid मानकर nephridia proboscis gland next question number 40 को जाउ छि proboscis gland in balanoglossus is associated with proboscis gland in balanoglossus hemichordata proboscis gland digestion respiration excretion reproduction yes plateal means flame cell बहुत बढ़िया ओके एनालिड्स मानकर एक्सक्रीटरी ऑर्गन होची नेफ्रिडिया ठीक अछि दिस इज आंसर करेक्ट नेफ्रिडिया प्रथम नेक्स्ट क्वेश्चन को नंबर 40 proboscis gland in balanoglossus it is also an excretory organ balanoglossus hemichordata proboscis gland excretory organ so it is involved in excretion next question को जिबा beside the mammals vivipary is also found in the members of so first time जाने पड़ियो कि vivipary माने कोन निजे जदि अंडा दउचंती then it is called oviparous young one को जदि जन्म कराउचंती then it is called viviparous mammals माने तो viviparous ए चारटा ऑप्शन रु के viviparous हबो chondrichthyes माने cartilaginous fish ostrichthyes माने bony fish amphibians and apes माने bird तो 41 कोन हबो कोन 41 yes 41 रो कोन आंसर हो
एम्फिबियन हम ना भिविपारी यंग वन को जन्म दौरान मैराथन वीडियो को देखी दिंतु जूलॉजी कंट्रिक थाइस और ऑस्ट्रिक थाइस को मु पूरा डिटेल डिफरेंशिएट करी से डिफरेंस रो क्वेश्चन आसीबो मन रखंतु कंट्रिक थाइस माने कार्टिलाजिनियस फिश दे सो भिविपारस ऑस्ट्रिक थाइस माने बोनी फिश दे सो ओविपारस माने अंडा दोछन तो कंट्रिक थाइस इज द करेक्ट आंसर दे आर भिविपारस they produce they give birth to young ones option A is correct 41 option A remember बहुत important effect रा मन रखंतु viviparous constrict thighs yes sir constrict thighs to produce young ones okay next question number 42 notochord occurs all through the length of body and throughout the life कड़टा पड़े स्लैब तो नोटोकॉर्ड लाइफ सारा परसिस्ट की रहिबो हेमिकॉर्डटा यूरोकॉर्डटा सेफालोकॉर्डटा वर्टिब्रेटा व्हाट इज द आंसर नोटोकॉर्ड हेमिकॉर्डटा यूरोकॉर्डटा सेफालोकॉर्डटा वर्टिब्रेटा कौन आंसर कौन यस यस सेफालोकॉर्डा बहुत बढ़िया सी ऑप्शन बिकॉज यूरोकॉर्डा ओनली लार्वाल टेल रे थाए ठीक अच्छे वर्टिब्रेटर तो नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम सो द करेक्ट आंसर इज योर सेफालोकॉर्डा ठीक अच्छे नेक्स्ट चलंदु नंबर 43 को जीवा सेफालोकॉर्डा इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को दो नंबर 43 The limbless amphibian is limbless. Salamander तो हबने. Salamander has limb. Ichthyophis, okay. Ichthyophis को limbless amphibian बोली कहा जाऊँ. Okay, तो आंसर is Ichthyophis. Okay. Next question number 44. Number 44 कौन दो which one of the following is oviparous बहुत important it is also a GK fact also platypus flying fox माने bat elephant whale ये समस्ते mammal but mammals are the viviparous but चारटा ऑप्शन रु किए होची oviparous which lay egg कौन आंसर यस करेक्ट आंसर इज योर प्लैटिपस नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 45 को द वेक्टर फॉर कॉजिंग स्लीपिंग सिकनेस इन मैन स्लीपिंग सिकनेस इज ए डिजीज रे होउची का पई गोटे प्रोटोजोआ लागि होउची ओके नाडा मन रखि दंतु ट्रिपानोसोमा मन रखु स्लीपिंग सिकनेस रो पैथोजेन माने एई प्रोटोजोआ ही कैजुअल एजेंट ट्रिपानोसोमा स्लीपिंग सिकनेस बट तार बाहक किए गोटे एनिमल रो आउडे हेल्दी पर्सन को किए कैरी करी नौची वेक्टर किए हाउस फ्लाई मस्किटो सीसी फ्लाई एंड सैंड फ्लाई yes option C option 3 that is your sissy fly T silent rebo sissy fly is the vector for sleeping sickness
but the pathogen or causative agent is your trypanosoma, which is a protozoa. Number 45 complete. Next. In which of the following nuclear dimorphism is seen? माने दीटा न्यूक्लियस देखा जाउची, मैक्रोन्यूक्लियस गोटे माइक्रोन्यूक्लियस गोटे, एंटामिबा लेशमानिया ट्रिपानोसोमा पारामेसियम कौन हबो? न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म मैक्रोन्यूक्लियस माइक्रोन्यूक्लियस दीटा न्यूक्लियस देखा जाउची, न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म. Forty-six. Number 4. Yes, the correct answer is paramecium. Paramecium रे न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म देखा जाउची. मन रखंतु फैक्ट रा. न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म माने two different shape. One is macronucleus, another is micronucleus. Micronucleus is involved in reproduction. Okay. So no, the answer is paramecium. Paramecium is the correct answer. Nuclear dimorphism पे. Next चलंदु. Animals showing metameric segmentation. 47 कौन हबो? Metameric segmentation. Body is segmented. Porifera, Annelida, tapeworm, Ascalminthus. 47. Yes, 47 or 2. Option B, that is your Annelida, is correct. Okay, metameric segmentation. मन रखंतु Annelida सहित जोड़ी की ए वाटर रहबो मेटामेरिक सेगमेंटेशन. एनलिडा आसला माने मेटामेरिक सेगमेंटेशन मन पड़ जाव पड़िबो. ओके. 47 ऑप्शन बी और ऑप्शन 2 इज करेक्ट. एनलिड्स और एनलिडा मेटामेरिक सेगमेंटेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा. Yes, the canal system or water canal system is characteristic feature of बहुत important. Water canal system आसु आउट अछि water vascular system आसीबो. Water canal system कार characteristic sponges माने porifera, helminthes, echinoderm, coelenterata. 48 number. 48 number चल जी कोन 48 number. Canal system is characteristic sponges माने porifera, helminthes, echinoderm, coelenterata. What is the correct answer? Number 48. Sponges माने पोरिफेरा. पोरिफेरा रे वाटर कैनाल सिस्टम बहुत इंपोर्टेंट फीचर होटे. ठीक अछि. नेक्स्ट 49 को जिबा. Polyp stage is not found in which coelenterate? को coelenterate रे polyp stage देखा जाय ने. polyp माने स्थिर सेसाइल स्टेज मेडुसा जी मूव करि परथुओ. ठीक अछि. तो पॉलिप स्टेज देखा जाय ताले केवल मेडुसा स्टेज ही देखा जीवो. को which cylinder एटा पॉलिप स्टेज not found. (49) कोन फर्स्ट 49. The answer is Aurelia. Aurelia means jellyfish. यार केवल को फेस देखा जीवो ओनली मेडुसा. ठीक अच्छे नोट डाउन कर दियंतु. ओनली मेडुसा. मेडुसा फेस देखा जीवो. ओके. नेक्स्ट चलन जीवा नंबर 50. Number 50. Bioluminescence is very important, very easy question. Coelenterata, Ctenophora, Platyhelminthes, Ascalminthus. Bioluminescence, the property of emitting light from body. कौन हो आंसर आरो? Bioluminescence. Yes, the answer is Ctenophora.
Tenephora is the correct answer. Next challenge you have number 51. Number 51. Protonephridia jago हम flame cell भी कहूचे of freshwater platyhelminthes help you. Already discussion है सारी flame cells help करची platyhelminthes को कोई function रे excretion से excretory organ. So option A or 1 is correct. Excretion and also osmoregulation. Okay. तो आपण जानि रखन फ्लेम सेल को प्रोटोनेफ्रिडिया कहउची. नेफ्रिडिया आसजो आपण मानकर एनलिडा मानकर ठीक अछि. एंड माल्फिजियन ट्यूबुल्स आर्थ्रोपोडा. ओके. एक्सक्रीटरी ऑर्गन. नंबर 52 को जिबा. सिक्रेशन ऑफ सेल इन मोलस्क टेक प्लेस इन. मोलस्क मानकर जो आउटर लेयर टा अछि सेल कैल्कारियस सेल सिक्रेट के करूची. फूड कैबर्स ऑर्गन रेडुला मेंटल. 52 कोंदु मोलस्क सेल इज सिक्रेटेड बाय कौन अब आंसर आंसर इज मेंटल. ठीक अच्छे मेंटल. नेक्स्ट टाइम जीवा मेंटल इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट देखो 53. अच्छा member of Echinodermata has a specific system which is not found in other phylum. It is Echinodermata रे गोटे specific system देखा जाउची other phylum मानकर देखा जाउ. जेमिति आमे जानले कि ओरिफेरा मानकर गोटे देखा जाउतला ताहा कोन थिला सॉरी वाटर कैनाल सिस्टम थिला. तो एकाइनोडर्माटा मानकर कोन हो कैनाल सिस्टम वाटर वास्कुलर सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम जॉइंटेड अपेंडेज. यस द आंसर करेक्ट आंसर इज वाटर वास्कुलर सिस्टम. वाटर वास्कुलर सिस्टम इज द करेक्ट आंसर. ओके वाटर वास्कुलर सिस्टम इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट चलन आम जा नंबर 54. एकाइनोडर्माटा मन रखु एकाइनोडर्माटा हूँ वाटर वास्कुलर सिस्टम. पोरिफेरा स्पंज हूँ वाटर कैनाल सिस्टम. ठीक अच्छे. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा. लोकोमेटरी ऑर्गन्स ऑफ एकाइनोडर्मस आर. एकाइनोडर्माटा लोकोमेटरी ऑर्गन कौन ट्यूब फीट. वेरी बहुत बढ़िया ट्यूब फीट एकाइनोडर्मा. सुडोपोडिया एमिबार सिटा एंड पारापोडिया हूँ एनलिड्स मानकर. तो ये करेक्ट आंसर हम ट्यूब फीट. ट्यूब फीट इज द करेक्ट आंसर. ओके नेक्स्ट टाइम जी नंबर यस आउ टिके फास्टर है बाबू. ठीक अच्छे किसी प्रॉब्लम नहीं आराम से जीवा. नंबर 55. नोटोकॉड इज फाउंड ओनली इन द टेल ऑफ लार्वा. तो ऑलरेडी डिस्कशन है नोटोकॉड लार्वाल टेल रहिबो. कौन जल्दी आंसर कौन हम ओनली द टेल ऑफ लार्वा. करेक्ट आंसर इज यूरोकोडोटा. सेफालोकोडोटा रे पूरा लाइफ सारा रहिबो केवल लार्वाल टेल रहिबो यूरोकोडोटा. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 56 कहतु रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ व्हेल. व्हेल इज नॉट फिश. इट इज इंक्लूडेड इन mammals. जदि mammals ताल से मानको रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन हबो बुक लंग लंग्स गिल्स स्किन. whales are in your mammals. ठीक अच्छे. if they are mammals ताल से मानको रेस्पिरेटरी ऑर्गन whales
Yes, the answer is lungs. Okay, lungs is the correct answer. It's এটা ଗୋଟେ ବହୁତ important question. আর answer টা କୁହନ୍ତୁ, ବହୁତ important question ये. Which of the following animal is radially symmetric? ये निजे radially symmetric but has a bilaterally symmetric larva. Larva होची bilaterally symmetric but निजे living adult living organism होची radially symmetric. Ascaris, roundworm, Neris, ringworm, Pila, apple snail, Asterias, starfish. What is the correct answer? बहुत important question. Previous year भी आछे question. Animal निजे होची radially symmetrical adult animal but the larva is bilaterally symmetrical. एटा को phylum रो Echinodermata ये चारटा भितर किए the option 4 option D, that is starfish or Asterias. ठीक है, that's the correct option is Asterias. Echinodermata have a radially symmetric adult organism but bilaterally symmetric larva. Which of the following, next question 58, Coelenterata exist in both forms, polyp and medusa, and exhibit metagenesis. That means polyp reproduce medusa sexually and medusa produce polyp. Sorry, polyp produce medusa asexually and medusa produce polyp sexually. This is known as metagenesis. Okay, so एमानक भितर किए जी metagenesis देखो जी. Yes, the correct answer 58. That is Obelia. Okay, both polyp and medusa. Obelia. बहुत बढ़िया. 58 सल्ला. Next जीवा 59. That is your which one is not the character of osteichthyes? Terminal mouth, gills with operculum, body covered by placoid scale, air bladder regulate buoyancy. जदि आपण माने chondrichthyes osteichthyes रो character पढिचंती differentiate करचंती then you can answer this. osteichthyes रो कोडा character नुह कोन हबो? 59 रो answer 3. बहुत बढ़िया. Yes, एटा body covered by placoid scale हबो नहीं. तो को स्केल हम कहि परिबे? प्लाकोइड स्केल तो हबनी. ताले को स्केल हबो? प्लाकोइड स्केल होची कॉन्ट्रैक्टाइज मानकर. ओके, टेनोइड स्केल. टेनोइड scale. Tenoid scale is found in bonifacious osteichthyes. Placoid scales are the characteristics of chondrichthyes. ठीक अछि, तो एटा character हबो. 59C. Next चलन जीवा number 60. Yes, a marine cartilaginous fish that can produce electric current. Pristis, torpedo, trigon, scoliodon. Number 60 कौन दो? Torpedo. Okay, the very easy question. Electric organs are found in torpedo. So we'll move towards the next chapter, that is your cytology. Okay, first question of cytology. Which element mainly occurs in middle lamella? Number 61. कौन समझते? Number 61 कौन दो? Which element mainly occurs in middle lamella? Middle lamella माने cell wall दीटा plant र cell wall को connect जी करची. ठीक अछि. Middle lamella cell wall र गोटे layer middle lamella, primary and secondary wall, then middle lamella. तो middle lamella रे को element अछि? Calcium, magnesium, sodium, potassium. The correct answer नाही, magnesium हबो नाही. Actually middle lamella रे कोन अछि कहूची सुनंतु.
मिडिल लामला रे थिबा केमिकल रो ना होची कैल्शियम पेक्टेट तो एटी को एलिमेंट पचार तो आंसर हो कैल्शियम प्रकृत में कैल्शियम पेक्टेट रही कैल्शियम पेक्टेट इज प्रेजेंट इन मिडिल लामला तो द करेक्ट आंसर इज कैल्शियम 62 ओमनी सेल्ला ई सेल्ला ये स्टेटमेंट किए देथिले स्क्लेडन स्क्वांत सेल थ्योरी देथिले रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस डिस्कवर करथिले रॉबर्ट हुक सेल डिस्कवरी तो द करेक्ट आंसर इज रुडोल्फ वर्च्यू ओके 62 रुडोल्फ वर्च्यू इज द करेक्ट आंसर ओमनी सेल्ला ई सेल्ला दैट मीन्स न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल रुडोल्फ वर्च्यू बहुत बढ़िया 63 कहूँ ए मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड स्टीरोइड हार्मोन बा लिपिड को तैयारी करबा पाई को सेल ऑर्गेनल बहुत हेल्प करछ न्यूक्लियोप्लाज्म आरईआर ना एससीआर आरईआर माने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना लाइसोसोम 63 रा आंसर को लिपिड सिंथेसिस यस द करेक्ट आंसर इज SER smooth endoplasmic reticulum okay चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 64 as they release hydrolysis that digest old and damaged cells the term suicidal bags is used for cell biologist suicidal bag कौन हबो very easy question suicidal bag correct answer is lysosomes okay 65 देखिबा number 65 सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल दैट मीन्स ये एमिति गोटे सेल ऑर्गेनल सेल भितर रही कि मध्य निजर डीएनए रेप्लिकेशन करि पाउछि निज पाखरे किछि प्रोटीन तयारी करि पाउछि निज भितर किछि डीएनए रखिछि राइबोसोम रखिछि तो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल एई चारिटा ऑप्शन रु कोन माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पेरोक्सिसोम ओके माइटोकॉन्ड्रिया आ गोटे कहि परिबे एनी अदर ऑर्गेनल जे कि सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल एनी अदर माइटोकॉन्ड्रिया छडा माइटोकॉन्ड्रिया व्यतीत अन्य कोनोसी आ गोटे सेल ऑर्गेनल कहतु जे सेमी ऑटोनोमस हेतिबो 65 एनी अदर cell organelle which is semi autonomous except mitochondria कौन हम प्लास्टिड्स ठीक अच्छे प्लास्टिड्स क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड्स आर also semi autonomous next कौन तो प्लास्टिड्स which store fat and oil 66 plastids which store fat and oils कौन हम yes chloroplast fat and oil एलिरोप्लास्ट प्रोटीन हबो एमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट क्रोमोप्लास्ट द कलर प्लास्टिड्स इलायोप्लास्ट आर द करेक्ट आंसर इलायोप्लास्ट होची फैट एंड ऑयल एमाइलोप्लास्ट कोन कार्बोहाइड्रेट एलिरोप्लास्ट होची प्रोटीन्स ठीक अछि सो इलायोप्लास्ट नंबर डी इज करेक्ट चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 67 which enzyme performs detoxification of hydrogen peroxide H2O2 in peroxisome peroxisome हमरो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोले गोटे टॉक्सिक सब्सटेंस को डिटॉक्सिफिकेशन करूची तो सेति पई को एंजाइम हेल्प करूची यूरेट एसिड ऑक्सीडेज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कैटालेज ascorbic acid synthetase कौन तो कौन हो 67 कौन हम कहतु डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड यस ताले मु कहि दोछि यार करेक्ट आंसर हबो कैटालेज मन रखंतु कैटालेज एंजाइम यूज करिकी पेरोक्सिजम कोन करूछि हाइड्रोजन पेरोक्साइड भली टॉक्सिक सब्सटेंस को डिटॉक्सिफाई करूछि एठी पई जो एंजाइम हेल्प करूछि तार नाम होछि कैटालेज ओके कैटालेज इज द एंजाइम
performs detoxification of H2O2 माने हाइड्रोजन पेरोक्साइड by peroxisome. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 68 the two subunits of ribosome हमें जानी चाहिए कि दीटा सबयूनिट अच्छी लार्जर सबयूनिट और स्मॉलर सबयूनिट remain united at a critical ion level को ion level help करे दीटा सबयूनिट राइबोसोम रो को जोड़ी रखिया पाए मैग्नीशियम कैल्शियम कॉपर और मैंगनीज कौन हम आंसर यस कैटालाइज कहले ठीक है कैटालाइज मन रखन देडा बड़ इंपोर्टेंट निसो 68 कोन फर्स्ट 68 yes the answer is magnesium magnesium ion help to join the two subunits of ribosome रो दीटा सबयूनिट को जॉइन करिया पई हेल्प करछु मैग्नीशियम ओके so magnesium is the correct answer manganese हबो magnesium is the correct answer okay magnesium number 1 by number A option next question को जिबा okay synthesis of 69 question cellular material takes place in cellular रो material को synthesis माने production किए करूची डिक्टियोजोम आर प्लांट गल्गी बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम ईआर माने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन हबो सेलुलर मटेरियल सिंथेसिस 69 गल्गी बॉडी कहजंती यस गल्गी बॉडी बहुत बढ़िया तार आंसर हबो गल्गी बॉडी ओके गल्गी बॉडी हेल्प करची सेलुलर मटेरियल सिंथेसिस रे एंड प्लांट गल्गी बॉडी इज नोन एज डिक्टियोजोम नेक्स्ट क्वेश्चन number 70 chemical modification of substance like glycosidation of lipid and glycosylation of protein mainly occur in endoplasmic reticulum Golgi apparatus lysosome and ribosome number 70 कोन हबो कोंदु हमरो जेते बेले प्रोटीन तयारी हला राइबोसोम रे आर ई आर काहे कहबा रफ ई आर सेही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे राइबोसोम लागि थिबो राइबोसोम आर द प्रोटीन फैक्ट्री वर्तमान से प्रोटीन बा लिपिड जहां भी हमरो सेही ई आर दे की गल्गी बॉडी को जीवो आ गल्गी बॉडी भीतर तार मॉडिफिकेशन हो ठीक अछि तो मॉडिफिकेशन सर कोठी हुए गल्गी बॉडी रे हुए तो आंसर इज गल्गी apparatus सो केमिकल मॉडिफिकेशन कोठी हुए Golgi body packaging chemical modifications are all performed in Golgi apparatus okay next number 71 okay during spermatogenesis Golgi is thought to be responsible for the formation of sperm ro ko part को Golgi body तैयारी करछ tail middle piece head acrosome खाई की अच्छा अच्छा ओ 71 कौन तो ये 71 रो एक्रोजोम कहि सारलेनी बहुत बढ़िया स्पर्म रो एक्रोजोम द फ्रंटल एंड एक्रोजोम पार्ट को प्रोड्यूस करूची के गल्गी नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 72 72 कौन तो 72 कौन हम endomembrane system does not include the endomembrane system रे के अछि ER is present, lysosome is also present, vacuoles is also present. So, it does not include plastid endomembrane system. Sorry, okay. But mitochondria are not included
in endomembrane systems. So correct answer is mitochondria. 73 कौन हम RER is well developed in a cell engaged in the synthesis of को सेल को जिनस को सिंथेसिस करुथबो सेही सेल रे RER अधिक मात्रा रे देखा जाउथबो स्टेरॉइड्स तो SCR हबो फैट भी SCR हबो विटामिन्स एंड प्रोटीन्स RER काई कहला बिकॉज़ रफ माने राइबोसोम अछि आ जे कि प्रोटीन सिंथेसिस करिवे रे हेल्प कुछ तो आंसर इज 73 रो 4 दैट इज योर प्रोटीन SCR कहता ताले स्टेरॉइड्स एंड फैट हेता ठीक अछि smooth endoplasmic reticulum involved in steroid or fat synthesis. Okay, next question go to 74. Which of the following cell organelles is non-membrane bound and found in both prokaryotic and eukaryotic? Membrane nahi prokaryote और eukaryotic दिजन उभयंकर देखा जाउछ membrane nahi lysosomes ribosomes centrioles mitochondria 74 कौन हो The answer is ribosomes. बहुत बढ़िया ribosomes are non-membrane bound organelle found in both prokaryotic and eukaryotes. Next question. Next जीवा 75 को in photorespiration the cell organelles involved are photorespiration C2 cycle ठीक अछि photorespiration रे कोन होची RUBP जे कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करिया कथा ऑक्सीजन सहित ऐड हे जाउछ हला ता कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हे परने ग्लूकोज बा स्टार्च तयारी परने फोटोरेस्पिरेशन हे जाउची तो फोटोरेस्पिरेशन करिया पे को सेल ऑर्गेनल माने इन्वॉल्वड yes number 4 that is your 75 चल बडदार chloroplast mitochondria and peroxisome okay all the three organelles मिसी के माने फोटोरेस्पिरेशन करछन फोटोरेस्पिरेशन रे कोन होची RUBP ऑक्सीजन सहित ऐड हे जाउची ओके सेवेंटी सिक्स को जीवा द मेन एरिना ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज ऑफ सेल सेल रो बहुत गुडे जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी को जगह रे होची पचाछ कि कंट्रोल करची पचानी को जगह एरिना माने एरिया को एरिया रे होची एनसीईआरटी रो बिड लाइन डाउड अछि न्यूक्लियस प्लाज्मा मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म 76 कोन हो कोंदु मेन एरिया को एरिया रे सेल रो बहुत गुडा एक्टिविटी एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो ठीक सिंथेसिस एक्टिविटी हो वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटी कंट्रोल करछि पचारनी को जगह रे होछि पचारछि न्यूक्लियस प्लाज्मा मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म 76 आंसर इज साइटोप्लाज्म इज द एरिया जोठी ऑल टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हैपेंस इन ए सेल so cytoplasm is the correct answer okay number 77 को जीवा सेवेंटी सेवन कहतु এটা बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन 77 टा 77 is important question कौन हम 77 रा आंसर राइबोसोमल आरआरएनए माने आरआरएनए ठीक अछि राइबोसोमल आरएनए माने आरआरएनए इज एक्टिवली सिंथेसाइज्ड इन कोठी तयारी होछ फैक्ट बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आरआरएनए कोठी तयारी होछ न्यूक्लियोप्लाज्म राइबोसोम लाइसोसोम न्यूक्लियोलस 77
Yes, the correct answer is nucleolus. Nucleolus is a spherical body found inside the nucleus. Nucleus भितर थिबा nucleolus जोठी हमर कोन होची rRNA राइबोसोमल RNA तयारी होची एक्टिव साइट बहुत इंपोर्टेंट एटा nucleolus रे rRNA तयारी होची ओके मन रखंदु 78 को जिबा nucleolus है 78 को which one of the following structures is an organelle within an organelle माने ये निजे गोटे organelle आ गोटे organelle भितरे रहउची ER मेसोसोम राइबोसोम पेरोक्सिसोम कौन हबो organelle within an organelle जो सेमी ऑटोनोमस कांसेप्ट ला मु कहली माइटोकॉन्ड्रिया होची गोटे organelle ता भितरे को organelle रहइबो क्लोरोप्लास्ट गोटे ऑर्गेनल ता भितर को ऑर्गेनल रहइबो माने निजे गोटे ऑर्गेनल रही कि अन्य गोटे ऑर्गेनल भितर से रहइबो ऑर्गेनल विथ इन ऑर्गेनल कोन हबो ईआर मेसोसोम राइबोसोम पेरोक्सिसोम एमाना भितर कहा को हमें ऑर्गेनल विथ इन ऑर्गेनल कहबा कोन हबो आंसर ऑर्गेनल विथ इन ऑर्गेनल Yes, the correct answer is ribosome. Ribosome को हमें organelle within organelle कहबा ओके बहुत इंपोर्टेंट 79 को जिबा Which of the following cell organelles is present in the highest number in secretory cell? Secretory cell रे ठीक अछि secret में जनरल एंजाइम्स एंड हार्मोन्स तयारी करथबे हला जहां भी प्रोटीन्स रो मॉडिफिकेशन होइथो तो secretory cell मानन करे हाईएस्ट नंबर को सेल ऑर्गेनल रहइबो माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम कौन आंसर 79 ER कहले हाईएस्ट नंबर इन सिक्रेटरी सेल अच्छा सिक्रेट माने कौन सिक्रेट हो जनरली एंजाइम्स एंड हार्मोन्स अच्छा माने कौन होइथिबे सो जो जहां भी प्रोटीन जागो से मॉडिफाई होइथिबे मॉडिफिकेशन करिया पे की हेल्प कुछ ER mind को आसीबो बट ER is not correct ER is not correct the correct answer is Golgi complex जदि खाली प्रोटीन कहि थांता प्रोटीन सिंथेसिस जदि प्रोटीन सिंथेसिस कहि थांता ER हे थांता ठीक है आ पूर्व रो क्वेश्चन गला कि सिक्रेटरी सेल कहला सिक्रेटरी माने कोन एंजाइम सिक्रेशन करथुबो हार्मोन सिक्रेशन करथुबो से एंजाइम हार्मोन माने कोन होइथिबे मॉडिफिकेशन होइथिबे गोटे पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल फंक्शन पय मॉडिफिकेशन होइथिबे तो सेति पे आंसर कोन हबो गोल्गी गोल्गी कॉम्प्लेक्स अधिक परिमाण रे थाए सिक्रेटरी सेल मान करे ओके चलंतु 80 नंबर क्वेश्चन को जिबा नंबर 80 सेल साइकिल आडू आसला री स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर जोटी कौन होची हमरो स्पिंडल फाइबर जाको कनेक्ट होची 8 नंबर कौन हो आंसर नंबर 8 कोंदु सेंट्रोमियर क्रोमोसोम रो सेंट्रोमियर रे थिबा स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर को हमें कौन करबा मु आउर हिंट भी दे देली कि एठी कौन होची ना स्पिंडल फाइबर माने कनेक्ट होचंती यस द आंसर इज काइनेटोकोर बहुत बढ़िया
81 क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन क्रॉसिंग ओवर कोठी हुए क्रॉसिंग ओवर हो कि रिकॉम्बिनेशन हो कोठी हुए मियोफेज मियोसिस रो प्रोफेज 1 रो को स्टेज जाइगोटिन पैकेटिन डिप्लोटिन डायाकाइनेसिस क्रॉसिंग ओवर कोठी हुए फर्स्ट गोटे जिनस मन रखु सिनाप्सिस तैयारी हबो जाइगोटिन रे सिनाप्सिस बा सिनाप्टोनेमाल कॉम्प्लेक्स जाइगोटिन रे हबो हला पर कोन हबो पैकेटिन रे क्रॉसिंग ओवर हिजो द आंसर इज पैकेटिन ओके पैकेटिन रे क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन हबो ओके नेक्स्ट 82 कोंदु क्रोमोसोमल मॉर्फोलॉजी और स्ट्रक्चर इज बेस्ट ऑब्जर्व्ड क्रोमोसोम रो मॉर्फोलॉजी को जानिया पई एक्सपेरिमेंट करिया पई को स्टेज डा बहुत इजी माने क्रोमोसोम इजीली देखा जाय थाए तार मॉर्फोलॉजी को स्टडी करिवे प्रोफेज मेटाफेज इंटरफेज एनाफेज यस द करेक्ट आंसर इज मेटाफेज जोटी तार इक्वेटोरियल प्लेट रे अलाइन हे के क्रोमोसोम माने रहिबे क्लियरली विजिबल हेबे माइक्रोस्कोप रे जदर क्रोमोसोमल मॉर्फोलॉजी को हम स्टडी करि परिबे मेटाफेज 82 रो करेक्ट ऑप्शन मेटाफेज ओके बहुत बढ़िया कमेंट सेक्शन रे पूरा पूरी करेक्ट आंसर ही आछी बहुत बढ़िया तो आपण मानकर सिलेबस प्रॉपर्ली पढ़ी दैछन्ते आपण माने ठीक अछि 83 को जिबा 83 कोंदु इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज कॉल्ड तो हिंट दोची माइटोसिस इंटरवल बिटवीन माइटोसिस सरला नेक्स्ट आउट रे जो इंटरफेज स्टार्ट हबो तो डीएनए रेप्लिकेशन को फेज रे होची डीएनए रेप्लिकेशन होची एस फेज रे तो माइटोसिस फेज आउ एस फेज ता मझिरे को फेज अछि 83 इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन कोठी होची एस फेज रे तो बुझी परछो नै इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन तार भितरे को फेज रे अछि पछे 83 रो G2 फेज G1 फेज कार्योकाइनेसिस एस फेज क्वेश्चन को भल से देखंतु आपण एस फेज कहउछंदी क्वेश्चन को भलार देखंतु इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन तो माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज ता भितरे को फेज रे अछि यस G1 फेज इज द करेक्ट आंसर ओके क्वेश्चन बुझले माइटोसिस एंड एस फेज भितरे को कोन अछि पछछ तो G1 फेज ओके नेक्स्ट चलन जीवा 84 को it is said that one cycle of cell division in human cells takes place 24 hours cell cycle pura which phase of the cycle do you think occupy the maximum time को cycle को phase को लागु छी प्रोफेज इंटरफेज एनाफेज मेटाफेज कोन हो आंसर 84 प्रोफेज इंटरफेज एनाफेज एंड मेटाफेज which phase requires longest duration प्रोफेज इंटरफेज अछि देखो प्रोफेज इंटरफेज एनाफेज मेटाफेज द आंसर इज इंटरफेज जे की अधिक समय नै ओके सो इंटरफेज इज द करेक्ट आंसर interphase which is the preparatory phase for next cell division requires maximum time 85 को जिबा which phase is marked by terminalization of chiasmata जे जो क्रॉसिंग ओवर होतला ताक को फेज रे टर्मिनालाइजेशन हे जाय डायाकाइनेसिस पैकेटिन डिप्लोटिन जाइगोटिन टर्मिनालाइजेशन ऑफ chiasmata 85 कोंदो बी पैकेट टर्मिनालाइजेशन chiasmata पूरा पूरा अदृश्य हो जिवो यस डायाकाइनेसिस इज द करेक्ट आंसर बहुत बढ़िया ओके ए सब मोर मैराथन वीडियो रो पीडीएफ बा मैराथन वीडियो को पाई जाई देखि दियंतु ठीक अछि 85 डायाकाइनेसिस द करेक्ट आंसर
terminalization of chiasmata is happened in diakinesis stage. Kindly refer the marathon video of zoology. सेठी डिटेल्स मु कहि सिनाप्सिस सिनाप्टोनमाल कॉम्प्लेक्स कोडी हुए जाइगोटिन रे पैकेटिन रे कोन हुए क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन देन डिप्लोटिन रे सिनाप्टोनमाल कॉम्प्लेक्स टा डिसोल्यूशन हो जाए बट काइजेमेटा रे टर्मिनाइजेशन हुए डायाकाइनेसिस रे मन रखंतु बहुत इंपोर्टेंट नले जूलॉजी रो मोर मैराथन वीडियो ए सेगमेंट टा गुडे पढ दियंतु नेक्स्ट देखंतु द एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज रिक्वायर्ड एट व्हिच देखंतु रिकॉम्बिनेज एंजाइम कोन पे दरकार हो रिकॉम्बिनेशन पे बा क्रॉसिंग ओवर कोड हुए पैकेटिन रे द करेक्ट आंसर कोन हो पैकेटिन द 86 आंसर इज पैकेटिन नेक्स्ट क्वेश्चन 87 को चलन जिबा ड्यूरिंग सेल ग्रोथ DNA synthesis takes place in synthetic phase, that is your S phase. So 87 कौन होगा S phase. 87 DNA synthesis को phase रे हुए तो कौन होगा आंसर करेक्ट आंसर इज C or 3, that is your synthetic phase or S phase. चलो नेक्स्ट जिबा हमें नंबर 88 को जिबा 88 को समझते ड्यूरिंग meiosis 1 in which stage synapsis takes place synapsis कोड हुए synaptonemal complex कोड तैयार हुए पैकेटिन जाइगोटिन डिप्लोटिन लेप्टोटिन मो एबे ही जस्ट कहली कि synapsis कोड हुए क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन कोड हुए synaptonemal complex जोडी एही थाए से डिसोल्यूशन कोड हुए और टर्मिनाइजेशन ऑफ chiasmata हमें पढ़ले डायकाइनेसिस तो synapsis कोड हुए जाइगोटिन इज द करेक्ट आंसर बहुत बढ़िया एथ्रू श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आसी पारे मोस्ट प्रोबेबली ठीक अछि सबु जो हमर मेयोसिस 1 रो जो प्रोफेज 1 अछि तार जो पांचटा सब स्टेज अछि लेप्टोटिन जाइगोटिन पैकेटिन डिप्लोटिन एंड डायाकाइनेसिस एमानकर टिके इंपोर्टेंट फैक्ट जको मन रखि दियंतु मोर मैराथन वीडियो रो पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप रो अछि बा वीडियो को जाई देखि दियंतु ठीक अछि मु डिटेल्स स्लाइड रे पूरा बुझे देछि को स्टेज रे कोन होउछि बहुत इंपोर्टेंट ठीक अछि ओके फटाफट मन रहि जिवो आपन मानकर से स्लाइड को देखले तार आंसर हो जाइगोटिन जोडी सिनाप्सिस होउछि पैकेटिन रे कोन होउछि क्रॉसिंग ओवर बा रिकॉम्बिनेशन होउछि ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग 89 को आसीओली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पिरिमिडाइन प्यूरिन होउछि एडेनाइन गुआनाइन और प्यूरिन साइटोसाइन थायामिन यूरासिल्स आर पिरिमिडाइन तो ये thiamine is a pyrimidine, cytosine and uracil are pyrimidine, but adenine and guanine yes तो guanine होची कौन purine से कुछ not a pyrimidine माने purine ही थी तो आंसर इज guanine okay 89 complete next चलन जीवा move towards to number 90 90 को दो a nucleoside differs from a nucleotide nucleoside differs from a nucleotide is not having कौन अब आंसर 90 नंबर क्वेश्चन न्यूक्लियोटाइड रे कौन थिबो सुगर थिबो नाइट्रोजनियस बेस थिबो प्लस फॉस्फेट ग्रुप लागि थिबो बट न्यूक्लियोसाइड रे कोन थिबो सुगर थिबो प्लस नाइट्रोजनियस बेस थिबो तो न्यूक्लियोसाइड रे सुगर प्लस नाइट्रोजनियस बेस ताकू जदि गोटे फॉस्फेट ग्रुप लागि गला ताले ताकू हम कोन कहबा न्यूक्लियोटाइड तो डिफरेंस टा ओनली कोन अछि फॉस्फेट रे तो 9 रा आंसर कोन हबो फॉस्फेट 91 कोन दु बैकबोन इन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए डीएनए रे बैकबोन का कहबा पेंटोज सुगर एंड फॉस्फेट हेक्सोज सुगर एंड फॉस्फेट प्यूरिन पिरिमिडाइन सुगर एंड फॉस्फेट देखो
कौन आंसर हम फास्ट कहतु मत किछि पिला कहे सर सुगर एंड फॉस्फेट तो हम सियोर आउ किछि पिला कहे सर पेंटोज सुगर एंड फॉस्फेट हम हेक्सोज सुगर हबनी डीएनए हेक्सोज सुगर नहीं जो राइबोज सुगर अच्छी आरएनए रे डीऑक्सी राइबोज सुगर अच्छी डीएनए रे पेंटोज सुगर तेणु ऑप्शन 2 तो हबनी ऑप्शन 3 भी हबनी बट मोस्ट एप्रोप्रिएट जदि आंसर देखिबा सुगर एंड फॉस्फेट तो हे परिबो बट पेंटोज सुगर कहीं डीएनए हो कि आरएनए हो तार सुगर होची पेंटोज सुगर तो मोस्ट एप्रोप्रिएटली द ऑप्शन 1 इज करेक्ट दैट इज पेंटोज सुगर एंड फॉस्फेट आर द बैकबोन ऑफ डीएनए okay a type of question to ask calculation based in the DNA of an animal percentage of adenine is 30 then percentage of guanine केता हो कोन दु 92 डा कोन दु कोन हो adenine रा percentage देला 30% ताले guanine केता percent हो 92 कैलकुलेट करी कोंतु एडेनाइन 30% अच्छी गुआनाइन केता हिंट जो देबी एडेनाइन रो परसेंटेज इक्वल हबो थायामिन सहित साइटोसाइन रो परसेंटेज इक्वल हबो गुआनाइन सहित तो जदि एडेनाइन 30% रहिला एडेनाइन जो 30% रहिला तो थायामिन भी केत रहो 30% रहो ओके तो टोटल के 60% कंप्लीट होगला आउ रहा 40 40 को डिवाइड कर देबा के साइटोसाइन केते हबो 20 आ गुआनाइन को बदे केते पड़िबो 20% रहो काहे कि 30 प्लस 30 60% एडेनाइन थायामिन कवर कर देले तो साइटोसाइन गुआनाइन 40% तो गुआनाइन पचार जी तो गुआनाइन केते परसेंट हबो 40/2 दैट इज योर 20%. तो आंसर हम yes 92 20%. % is the correct answer. Okay, बहुत बढ़िया ये टाइप रो कैलकुलेशन बेस्ड पड़िबो एठी गोटे कांसेप्ट यूज होबो एडेनाइन रो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू थायामिन कंसंट्रेशन एंड सिमिलरली साइटोसिन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू गुआनाइन कंसंट्रेशन. चार ग्राफ रूल पकी के आपण एटा करि परिबे. Okay, DNA RNA difference asla 93. DNA differs from RNA only sugar, nitrogen base only, nitrogen base and sugar none. कौन है बहुत इजी क्वेश्चन 93 कौन जल्दी 93 रा कौन आंसर हो DNA RNA तो डिफरेंस only sugar, nitrogen base only, nitrogen base and sugar none. Difference between DNA and RNA. Nitrogen base only. Nitrogen base. भल से क्वेश्चन देखो तो DNA differs from RNA. B ऑप्शन आछी कोन नहीं 93 yes DNA रो सुगर होची डीऑक्सी राइबोज सुगर आरएनए होची राइबोज सुगर डिफरेंस अछि ना नहीं सुगर सुगर भी डिफरेंस अछि द सुगर ऑफ आरएनए इज राइबोज द सुगर ऑफ डीएनए इज डीऑक्सी राइबोज तो सुगर भी डिफरेंस आसला तापर हम नाइट्रोजन बेस कथा धरिबा आरएनए रो नाइट्रोजन बेस यूरासिल अछि एंड डीएनए रो कोन थायामिन आरएनए रो अछि RNA अच्छी यूरासिल DNA अच्छी थायामिन ओके तेणु बोथ नाइट्रोजन बेस एंड सुगर रे डिफरेंस अच्छी ऑप्शन 3 थायामिन इज प्रेजेंट इन DNA यूरासिल इज प्रेजेंट इन RNA डीऑक्सी राइबोज सुगर इन DNA राइबोज सुगर इन RNA तेणु ऑप्शन 3 ऑप्शन C इज करेक्ट ओके 93 कंप्लीट 94 ओके जेनेटिक्स आसलारी साइटोलॉजी सल्ला जेनेटिक्स को जिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना लीड्स टू वेरिएशन इन डीएनए डीएनए रे वेरिएशन
आनिया पे को फेनोमेना रिस्पांसिबल कोंतु लिंकेज म्यूटेशन रिकॉम्बिनेशन लिंकेज म्यूटेशन रिकॉम्बिनेशन एनियोप्लॉइडी और लिंकेज तो लिंकेज कौन लिंकेज होची क्रोमोसोम रे जीन जो जीन माने क्लोजली थिबे से माने गोटिए जनरेशन टू आउट जनरेशन को ट्रांसफर होबे तो लिंकेज पई केबे वेरिएशन आसीबोनी तो जो जो ऑप्शन रे लिंकेज अछि से ऑप्शन तो हबनी लिंकेज 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 ए ऑप्शन जगह तो हबनी तो करेक्ट आंसर कौन हम म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन म्यूटेशन रिकॉम्बिनेशन हेले वेरिएशन आसीबो ओके 94 रो सी बहुत बढ़िया चलतु नेक्स्ट ओके कांसेप्ट केमिति अप्रोच करके क्वेश्चन को सॉल्व करा जाए ता भी मु कहू जे आपण माननकु ओके विथ इंक्रीजिंग एज द लिंकेज बिकम्स जदि एज बढ़ी बढ़ी जाए गोटे ऑर्गेनिज्म रो तो लिंकेज कौन हम फैक्टर अफेक्टिंग लिंकेज रे अछि स्ट्रांग हे जो लिंकेज वीक टर्मिनेट्स हे जो रिमेन अनचेंज्ड 95 कोन एज एज सहित लिंकेज रो कौन संपर्क डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिंकेज इनवर्सली क्रॉस यस यस ओके एज सहित कौन संपर्क एज सहित विथ इंक्रीजिंग एज लिंकेज कौन ये आर आंसर मन रखु जदि एज बढ़ी बढ़ी जीव गोटे ऑर्गेनिज्म रो लिंकेज कौन हम स्ट्रांग हे जीवो fact based question linkage becomes strong with increasing in age body body gale linkage becomes strong मन रखो very important question 95 रो 1 माने a option is correct okay मन रखो तो जिनसडा with increasing age the linkage becomes strong okay next चलन जिबा 96 को अच्छा कंप्लीट लिंकेज इनकम्प्लीट लिंकेज मोर मैराथन वीडियो रे मु कहि दिली हाउ पचाले कि परि लिंकेज देखो इट इज अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन फैक्टर्स अफेक्टिंग लिंकेज रे अछि डिस्टेंस रो गोटे एज टेम्परेचर कोन कोन इफेक्ट पकाई थाए तो एज जदी बढ़ी बढ़ी जाए लिंकेज ग्रुप भितर थिबा जीन माने क्लोज हे जान डिस्टेंस कमी कमी जाए जदि डिस्टेंस कमी कमी जीवो देन लिंकेज बिकम्स स्ट्रांग ओके ओके स्ट्रांग ठीक है बर्तमान कोंतु कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज ड्रोसोफाइलर आसीबो एडा पर मैराथन वीडियो रे मु कहितली कंप्लीट लिंकेज इज फाउंड इन आउट इनकम्प्लीट लिंकेज तो कंप्लीट लिंकेज आसीबो मेल ड्रोसोफाइलर रे बहुत बढ़िया ताले इनकम्प्लीट कोन हबो फीमेल ड्रोसोफाइलर रे इनकम्प्लीट लिंकेज हबो complete linkage 100% complete linkage is found in male Drosophila okay let's move towards the next question that is your 97 okay 97 देखो frequency of crossing over will be relatively more crossing over अधिक ऑप्शन कौन देखो डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स इज लेस डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स इज मोर लिंक्ड जीन्स आर मोर बोथ 2 and 3 बर्तमान अप्रोच केमिति करबा 97 क्वेश्चन रे फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर अधिक कहिछि देखो क्रॉसिंग ओवर मोर त लिंकेज कोन कम क्रॉसिंग ओवर जदि मोर त लिंकेज कोन हो लिंकेज एटे लिंकेज कौन हम लेस तो लिंकेज को लिंकेज लेस केते बेले हम जेते बेले डिस्टेंस मानकर बढ़ जिवो तो डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स इज मोर ठीक अछि डिस्टेंस जदी बढ़ जिवो लिंकेज कमी जिवो लिंकेज जदी कमी गला ताले क्रॉसिंग ओवर अधिक हो जिवो एई अप्रोच रे आंसर हबो 2 that is distance between the two genes is more अरे distance जदी बढ़ी गला त लिंकेज कमी जिवो लिंकेज जदी कमी गला तले क्रॉसिंग ओवर भल से हे परिबो रिकॉम्बिनेशन हे परिबो ओके एई अप्रोच रे हमें करबा आंसर आसीबो ऑप्शन बी बा ऑप्शन 2 97 रो ओके
नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा कैलकुलेशन क्वेश्चन आसला ए नॉर्मल वुमेन whose father had color blindness married a normal man. What is the chance of occurrence of color blindness in the progeny? The calculation question करियो ट्राई करंतु समझते 98 जड़े नॉर्मल वुमेन ओके नॉर्मल वुमेन whose father had color blindness the father थिले color blindness XCY ये होचंदी फादर फादर होचंदी कलर ब्लाइंडनेस भलसे देखंतु क्वेश्चन ना मु करूची ओके 50% आपण माने कहिले जना पड़ियो एबे मु कला पर आंसर एक्चुअली कोन आछुची तो देखंतु फादर होचंदी कलर ब्लाइंड तांको डॉटर जी को नॉर्मल वुमेन बट फादर तो एक्स क्रोमोसोम आसीबो तो XCX माने ये कैरियर बट नॉर्मल वुमेन माने कैरियर जेतु आंको फादर होचंदी यो जी फादर XCY फादर कलर ब्लाइंड थिले फादर इज कलर ब्लाइंड तो तांकर डॉटर कोन हबो कैरियर बट तांको रोग जेतु हेनी तो नॉर्मल वुमेन कहला क्वेश्चन रे मैरिड ए नॉर्मल मैन ये मैरिज कले काकू नॉर्मल मैन माने एक्स वाई बर्तमान एमानकर प्रोजेनी रे कलर ब्लाइंडनेस रो प्रोबेबिलिटी बा चांस केते देखंतु बर्तमान चेंज कुछ बर्तमान देखंतु प्रोजेनी रे चारिडा इंडिविजुअल आसीबे XC को X तो ये हबो झियो हबो डॉटर हबो XCX ये कैरियर गर्ल वुमेन हबो बा नॉर्मल वुमेन हबो सेमिति ए XC को Y मिसिबो तो कोन हबो XCY आको कलर ब्लाइंड हे जिवो ठीक अछि बर्तमान ए X जदि कथा धरिबा X को X तो नॉर्मल गर्ल हबो XX सेमिति XY तो नॉर्मल बॉय हबो तो चारिटा प्रोजेनी जदि आनले एबे चारिटा प्रोजेनी तो चारिटा प्रोजेनी रे आपण जानि पड़थुए ये नॉर्मल ये भी नॉर्मल याकू हे गला कलर ब्लाइंड जणे कलर ब्लाइंड तो चारि जण जणु कलर 1/4 तले कोन आंसर कोन हबो चांस केते 25% एही वे रे आपण सॉल्व करिवे तो आंसर हबो 25% ओके एही वे रे एही टाइप रो क्वेश्चन को आपण सॉल्व करिवे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 99 ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोजेज होमोगेमेटिक मेल हमरो मनुष्य मान कथा जे धरिबा ह्यूमन बीइंग मेल होची XY females are XX so in human male are heterogametic but question पचारची चारिटा ऑप्शन रु कहारो होमोगेमेटिक मेल देखा जाए होमोगेमेटिक मेल कौन प्लांट मैन इंसेक्ट और बर्ड होमोगेमेटिक मेल माने मेल रो जो दीटा सेक्स क्रोमोसोम रहइबो सी इक्वल रहइबो तो फर्स्ट मु कहया चाहूची आर आंसर हबो बर्ड यस बर्ड इज करेक्ट ZWZZ सेक्स डिटरमिनेशन मेथड ओके एटी फीमेल हबो हेटेरोगेमेटिक मेल हबो होमोगेमेटिक ZZ
तो होमोगैमेटिक। ओके ठीक अच्छे, तो आंसर इज बार्ड, होमोगैमेटिक मेल, बार्ड, ZWZZ मेथड। यस नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। मेल हेटेरोगैमी फाउंड इन केस ऑफ नंबर्स 100 नंबर क्वेश्चन। मेल हेटेरोगैमी भलसे क्वेश्चन पढ़िबा। मेल हेटेरोगैमी ग्रास ओपर रे x0 तो x0 माने हेटेरोगैमी हबो, किछि मेल गैमेट एक्स रहबो, किछि मेल गैमेट एक्स रहबो नाही। ग्रास ओपर रो ह्यूमन रो भी कोन xy तो मेल हेटेरोगैमेटी, ZW मेल तो नाही, ZW तो फीमेल हबो, तेणु 1 and 2 बोथ हबो। तेणु ए दि जण जे कहउछन्ते हमर मेल हेटेरोगैमस, ग्रास ओपर आउ ह्यूमन तो 1 and 2 बोथ हबो, 1 and 2 बोथ मेल हेटेरोगैमी। ठीक अछि, बार्ड होची फीमेल हेटेरोगैमी, मेल होमोगैमी। ओके सब मैराथन वीडियो रे अछि, काइंडली टिके मैराथन वीडियो को आउथरे देखि दियंतु जो माने देखि नांती। यस नंबर 4 ठीक अछि। चलन जीवा 101 क्वेश्चन। 101 101 नंबर क्वेश्चन। What map unit centimorgan is adopted in the construction of genetic map? जीन मैपिंग बा जेनेटिक मैप रे मैप यूनिट यूज करा होची, जहा को कहउची 1 cm 1 सेंटीमोर्गान बोली कहउची। तो चारटा ऑप्शन रो कोन हो? सेंटीमोर्गान मैप यूनिट बोली कहउची। 1 मैप यूनिट रे 10% हबो कि 10% बोले डेसीमोर्गान मन रखंतु। 10% क्रॉसिंग ओवर जदी होउची ताको डेसीमोर्गान को आजिबो सेही यूनिट को जेनेटिक मैपिंग रे। 100% क्रॉसिंग ओवर ताले मोर्गान को आजिबो। 1% हला ताले ताको आजिबो सेंटीमोर्गान बा 1 मैप यूनिट। ओके तो 1 मैप यूनिट होची यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन्स एंड क्रोमोसोम रिप्रेजेंटिंग 1% क्रॉसिंग ओवर। So number C or 3 is correct. 1 centimorgan or 1 map unit. Clear? Next 102. So type of gene mutation which involves replacement of purine with pyrimidine or vice versa, or the substitution of one type of base with another type of base. Purine गोटे mutation हो जाउची, purine बदल रे pyrimidine जो लगे जीवो ताल ता कोन कहबे? ट्रांसडक्शन, ट्रांसवर्सन, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसक्रिप्शन। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन मन रखंतो और आंसर हबो ट्रांसवर्सन। प्यूरिन रिप्लेस्ड बाय pyrimidine। ठीक अछि, गोटे प्यूरिन बदल रे pyrimidine लागि जीवो बा pyrimidine बदल रे प्यूरिन जद लागि जीवो ताहले ताकू सेही टाइप रो जीन म्यूटेशन को कुआ जीवो ट्रांसवर्सन कुआ जीवो। ओके 103 को जीवा। नंबर 103 a class of mutation induced by addition or deletion of nucleotide। देखो तो मिससेंस, नॉनसेंस एंड सब्स्टिट्यूशन ये सब पॉइंट म्यूटेशन जाको। बट जदी एडिशन डिलेशन कथा आसला ताले दिस इज कॉल्ड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। डिटेल एनालिसिस यू कैन वॉच द मैराथन वीडियो जोटी मु मिससेंस और नॉनसेंस विषय आउट साइलेंस म्यूटेशन हला तीनटा विषय मु कहि छी। साइलेंस कोन, मिससेंस कोन, नॉनसेंस म्यूटेशन कोन सेठी मु डिटेल बुझेई छी। ओके तो जदी न्यूक्लियोटाइड रो ऐड हला कि डिलीट हला ताले ताकू कहै जीवो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहै जीवो। ओके नेक्स्ट चलन जीवा 104 क्रोमोसोम्स विथ जीन्स। देखंतु क्रोमोसोम रो जीन जगर पैटर्न को देखंतु। गोटे एग्जांपल वे देछि A B
सी डी ई एफ जी ए टाइप थिला तो म्यूटेशन हैला पर कौन हैगला ए बी तो रहिला बट सी डी ई ओल्टी की कौन हैगला ई डी सी हैगला आ एफ जी अच्छी ठीक अच्छी तो सी डी ई चेंज हैगला ई डी सी तो कौन आंसर हम डुप्लीकेशन डिलेशन ट्रांसलोकेशन इनवर्सन कौन हम आंसर ओके उल्टी जाइए डी डी चार यस द आंसर इज इनवर्सन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बुझा Number 105. The mechanism that causes a gene to move from one linkage group to another. गोटे लिंकेज ग्रुप रो जीन आउ गोटे लिंकेज ग्रुप रे जोड़ी हे जिवो ता कोन को आजो डुप्लीकेशन को आजो ना ट्रांसलोकेशन क्रॉसिंग ओवर ना इनवर्सन 105 गोटे लिंकेज ग्रुप रो जीन अन्य गोटे लिंकेज ग्रुप रे जोड़ी हे जिवो इंसर्शन नहीं देखो ऑप्शन देखो डुप्लीकेशन ट्रांसलोकेशन क्रॉसिंग ओवर इनवर्सन कौन होगा आंसर यस करेक्ट आंसर इज ट्रांसलोकेट लोकेशन ट्रांसलोकेट हे जिवो गोटे लिंकेज ग्रुप रो और लिंकेज ग्रुप को जिवो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा बहुत इंपोर्टेंट सिकल सेल एनीमिया ऊपर Autosomal recessive disorder sickle cell anemia is caused due to substitution of which amino acid to valine? हमर जो हीमोग्लोबिन अच्छी ग्लोबिन हीमोग्लोबिन रो दीटा पार्ट हीम आउ ग्लोबिन हीम होची आयरन पार्ट ग्लोबिन होची प्रोटीन पार्ट से प्रोटीन जा कोडी एमिनो एसिड रे तयारी होची से ग्लोबिन चेन रो 6 नंबर एमिनो एसिड ता प्रकृत रे थाउची कोन थाउची ग्लूटा आंसर कौन दो आंसर कौन हम 106 कौन थाउची और रिप्लेस होगी से भालाइन हो सब्स्टिट्यूशन ऑफ व्हिच एमिनो एसिड टू भालाइन माने नॉर्मल हेल्दी पर्सन रे को एमिनो एसिड थाउची 6 नंबर पोजीशन इन बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन रो ग्लोबिन प्रोटीन रो 6 नंबर पोजीशन रे को एमिनो एसिड थाउची जे की भालाइन हो जाउची जा द्वारा से लोक को सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाउची यस आंसर सी सी यस सो आंसर कौन हम ग्लूटामिक एसिड तो नॉर्मल लोकर ग्लूटामिक एसिड थाए तो म्यूटेशन रे जदि ग्लूटामिक एसिड बदल रे भालाइन जदि आसीबो देन दैट पर्सन अफेक्टेड बाय सिकल सेल एनीमिया एठी आपण मन रखंतु एथि पई गुड जीन म्यूटेशन कौन हुए GAG जीन म्यूटेशन GAG थाए डीएनए रे से ग्लोबिन को जो डीएनए बा आरएनए तैयारी करे हला GAG नॉर्मल पर्सन रो थाए GUG हे जाए GUG ठीक अछि तो ए जिन छडा भी मन रखि दंतु ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय भालाइन ओके सिकल सेल एनीमिया 106 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 107 सो नेक्स्ट चैप्टर पढ़े आसला इवोल्यूशन कौन दो डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज बेस्ड ऑन inheritance of acquired character mutation enormous rate of reproduction in organism struggle for existence survival of the fittest changes due to the use and disuse of organs डीप रो थ्योरी आपण पई देखंतु मु जो मैराथन वीडियो करथिली सीईआई चैनल रो टेलीग्राम चैनल रे मैराथन जो वीडियो करथिली जूलॉजी और बॉटनी तार पीडीएफ अवेलेबल अछि सेतरे सब सिलेबस को मु कंप्लीट कर देछि एवरी पॉइंट जहाँ भी आपंकर प्री पीवाईक्यू और सिलेबस को आखिर रखी करी तो आप मैराथन वीडियो को देखी दिंतु पूरा सिलेबस वाइज तापर ये एमसीक्यू वीडियो देखिए बहुत बढ़िया हम ओके तो देखो इवोल्यूशन डार्विन नेचुरल सिलेक्शन कौन हम बहुत इजी क्वेश्चन तो डार्विन कहते कि स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इट इज डार्विनिज्म
यही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आउ स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस रे ही नुआ स्पीसीज तैयारी होची बोली कांसेप्ट देइतले हमरो डार्विन तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 107 ओके तापर नेक्स्ट जिबा हमें 108 कहतु which of the following is important for speciation seasonal isolation reproductive isolation behavioral isolation tropical isolation speciation ପାଇଁ कौन important speciation mean creation of origin of new species evolution रो process रे नुआ species तैयारी को speciation कहै छै तो कौन हेले नुआ species तैयारी seasonal isolation species माने seasonally isolate हे जबे reproductively isolate हे जबे behaviorally isolation tropical isolation 108 yes correct answer is reproductive isolation reproductively जदी सब isolate हे गले then अलग अलग species तैयार हेबे बहुत बढ़िया नंबर 109 को जिबा yes 109 the idea not related to the Darwinian evolutionary theories survival of the fittest struggle for existence inheritance of acquired characters origin of species by natural selection 109 yes option C by option 3 बहुत बढ़िया inheritance of acquired character was given by Lamarck तो not related Darwin हबो correct answer C next question को जो 110 okay the chance of elimination of genes from a small population is an example of natural selection speciation adaptation genetic drift yes by Lamarck ठीक अछि गोटे स्मॉल पॉपुलेशन रु जीन एलिमिनेशन हे जबो चांस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ जीन रैंडमली जीन एलिमिनेट हे जबो मो बारंबार बहुत गुडे एमसीक्यू पीवाईक्यू सॉल्व कला बेले मैराथन रे कहि छी रैंडमली जी गोटे पॉपुलेशन रु जीन एलिमिनेट हे जबो जीन ऐड हबो जहां भी चांस फैक्टर ताल तार आंसर कोन हबो genetic drift is the correct answer next time jiba 111 next question 111 according to new Darwinian theory okay which of the following is responsible for the origin of new species new Darwinian theory modern synthetic theory जोड़ा ठीक अछि जुलियन हुक्सले डबजांस्की शो देथिले थियोरी तो न्यू स्पीसीज थियरी पई की रेस्पोंसिबल म्यूटेशंस ओनली यूजफुल वेरिएशंस एंड नेचुरल सिलेक्शन म्यूटेशंस टुगेदर विथ नेचुरल सिलेक्शन हाइब्रिडाइजेशन ओनली इट ऑप्शन बी और सी मतलब ऑप्शन 2 और 3 टिके कंफ्यूज करियो यस ऑप्शन तो आपण 3 कहि सालेनी यस न्यू डार्विनियन थ्योरी रे म्यूटेशन को डार्विन म्यूटेशन को नहीं नथले नेचुरल सिलेक्शन को नैतले म्यूटेशन को कंसीडर कर नथले न्यू डार्विनियन थ्योरी रे ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पई बा इवोल्यूशन पई म्यूटेशन को कंसीडर करा गला तो आंसर इज सी बा 3 म्यूटेशंस टुगेदर विथ नेचुरल सिलेक्शन okay hold 1 second so 111 clear 112 factors helps in formation of new species नुआ species पई को factor help करे competition variation reproductive isolation competition mutation reproductive isolation and mutation
कौन हम आंसर 112 112 कौन हम 112 answer is D, reproductive isolation and mutation. Okay, नुआ species formation 112 D. Okay, next देखिबा comment section रे पूरा जिते क्वेश्चन मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन रो करेक्ट आंसर आछी. Next कहूँ 113 नंबर द फैक्टर दैट लीड्स टू फाउंडर इफेक्ट इन ए पॉपुलेशन. आर आंसर कहूँ 113 नंबर रो फाउंडर इफेक्ट पई किए रेस्पोंसिबल. फाउंडर इफेक्ट किसी पॉपुलेशन आउ गोटे पॉपुलेशन को आसीबे आ से पॉपुलेशन को चेंज कर देबे. फाउंडर इफेक्ट कोडी आसो. यस, जेनेटिक ड्रिफ्ट बहुत बढ़िया. जेनेटिक ड्रिफ्ट रे फाउंडर इफेक्ट रो concept अछि. So this is all about your evolution. Next jiba ecology. Ecology देखो ecology word ecosystem was coined by 114 कहतो. Word ecosystem was coined by इकोसिस्टम टर्म को किए डिस्कवर कॉइन करथिले. इकोसिस्टम बहुत इंपोर्टेंट. एडा जदी आसीजो ऑप्शन 2 गोजंदी ऑप्शन बी गोजंदी. यस, टेंसले वेरी इंपोर्टेंट वेरी बढ़िया कहले आपण माने. इकोसिस्टम टर्म जो इकोसिस्टम वर्ड टाको कॉइन करथिले किए टेंसले. Next, energy flow in ecosystem unidirectional, bidirectional, multidirectional, none of these. Energy flow सब बेले कौन हबो सोर्स माने सन रु प्रोड्यूसर देन कंज्यूमर माने को जीवो. तो एटा हबो सब बेले यूनिडिरेक्शनल. ओके, यूनिडिरेक्शनल 115 रो ऑप्शन 1 यूनिडिरेक्शनल. नेक्स्ट जीवा 116. बर्तन कौन द pyramid of energy in the ecosystem is 116. Always upright, maybe upright, always inverted, none of this. Pyramid of energy. pyramid of energy कौन होगा? Yes, 116 pyramid of energy is always upright. Pyramid of energy is always upright because the direction of energy always unidirectional. ठीक अच्छे तेणु always upright. 117 नंबर क्वेश्चन 117 देखो. The rate at which light energy is converted to chemical energy of organic molecules is the ecosystem speech. Light energy is converted to chemical energy of organic molecule is in the ecosystem is. But ecosystem रे प्रोड्यूसर कौन करुच्ची लाइट एनर्जी को ऑर्गेनिक कंपाउंड रे परिणत करुच्ची, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करुच्ची. से पूरा बायोमास तो कौन कुआ जीवो आ निजर रेस्पिरेटरी लॉस रे जदी यूज कर दोछ ताल ताको कौन कुआ जीवो. तो 117 आंसर तब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. जति कि टोटल बायोमास तयारी करुच्ची फोटोसिंथेसिस रे दिस इज नोन एज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी. जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी निजर रेस्पिरेशन में प्लांट किसी यूज कर दोछ. तो जदि परीक्षा आउ जहाँ रहिला ताकू कुआ जीवो एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. सो एनपीपी इज अवेलेबल टू कंज्यूमर्स. प्लांट तयारी करथिबो फोटोसिंथेसिस रे
which is available to consumers. That is your net primary productivity. So total biomass theory habo photosynthesis ray. This is your gross primary productivity. Okay. Okay. GPP gross primary productivity. Yes. Next challenge was 118 number question को. The storage of energy of consumer level is known as. Consumer माने जो energy store करंती ताकू कौन को आजू. Option 1 the gross हबो. Gross is gross. Gross primary production, secondary productivity, net primary productivity, net productivity. तो consumer मानकर कौन को आजू. Yes. Consumer मानकर secondary को आजू. तो secondary productivity हो. Secondary productivity the correct answer. Correct answer कौन हो? Secondary productivity. Next चलन जीवा 119 नंबर क्वेश्चन को. शहे 19 कहतु बहुत 119 टा को मु इंपोर्टेंट मार्क करी. ये गोटे नुआ क्वेश्चन. ओके 119 the mass of living material at a trophic level at a particular time is called. गोटे फूड चेन रो गोटे पिरामिड रो डिफरेंट लेवल को हमें ट्रॉपिक लेवल कहूजे. तो गोटे पार्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल रे जति लिविंग माने कोन ऑर्गेनिक जति ऑर्गेनिक मटेरियल रहिबो ताकू कोन कहबा. स्टैंडिंग स्टेट कहबा ना नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ना स्टैंडिंग क्रॉप कहबा ना ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहबा. स्टैंडिंग क्रॉप कहउछन्ते के जणो. स्टैंडिंग क्रॉप ऑप्शन ए. स्टैंडिंग स्टेट भी कहउछन्ते. ओके but standing crop बहुत जण कहउछन्ते. yes the correct answer is standing crop. तले what is the meaning of standing state? मु कहउछि सुनंतु भला रे. स्टैंडिंग क्रॉप माने गोटे ट्रॉपिक लेवल रे जति की ऑर्गेनिक कंपाउंड होचे लिविंग मटेरियल ऑर्गेनिक बायोमास गोटे ट्रॉपिक लेवल फूड चेन बा गोटे इकोलॉजिकल पिरामिड रो गोटे पार्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल रे जति की अमाउंट रो लिविंग मटेरियल बा ऑर्गेनिक कंपाउंड अच्छी ऑर्गेनिक बायोमास अच्छी इट इज नोन एज स्टैंडिंग क्रॉप. तो स्टैंडिंग स्टेट माने कौन? स्टैंडिंग स्टेट माने होची इनऑर्गेनिक मटेरियल. इनऑर्गेनिक मटेरियल गोटे इकोसिस्टम रो गोटे पार्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल हो. ठीक अच्छी. इनऑर्गेनिक मटेरियल मानकु टोटल इनऑर्गेनिक मटेरियल मानकु कुआ जीवो स्टैंडिंग स्टेट बोली कुआ जीवो. मिनरल्स ठीक अच्छी. इनऑर्गेनिक मटेरियल मानकु कौन कुआ जीवो? स्टैंडिंग स्टेट. बट ऑर्गेनिक मानकु कुआ जीवो स्टैंडिंग क्रॉप. ओके कांसेप्ट क्लियर हला. नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 120. 120 देखंतु. which of the following group of animal is the most vulnerable to extinction? okay most vulnerable to extinction को ग्रुप एम्फीबियंस एप्स इंसेक्ट और मामल. वर्तमान आज डेट रे को ग्रुप ऑफ एनिमल एक्सटिंक्शन को जाउछंती? एम्फीबियंस एप्स इंसेक्ट और मामल. कौन आंसर? सेमितिकार क्वेश्चन 121 मध्य. which of the following group of plant most vulnerable to extinction? angiosperm, bryophyte, gymnosperm, pteridophyte. yes जदि को एनिमल एक्सटिंक्शन आड़ को फेस करूची ताले आंसर इज योर एम्फीबिया. ओके एंड जदि पचारला कि को प्लांट ताले कौन हबो? प्लांट एडर आंसर हबो एम्फीबियंस. ठीक अछि. प्लांट कौन हबो? amphibians are the animals who they are most vulnerable to extinction present date. को plant हबो vulnerable to extinction आड़ को जाउची कहि परिबे? प्लांट को प्लांट एक्सटिंक्शन आड़ को जाउची? ब्रायोफाइट नाही. ब्रायोफाइट हबोनी. जिम्नोस्पर्म्स. ओके जिम्नोस्पर्म्स आर nowadays gymnosperms are nowadays are vulnerable to extinction. okay वर्तमान जहाँ भी क्लाइमेटिक कंडीशन बा एनवायरनमेंट रो जो सिचुएशन हलानी एम्फीबियंस एनिमल रे और जिम्नोस्पर्म प्लांट रे
they are most vulnerable to extinction. Remember the fact. Okay. 120 fact based questions. Okay, in situ ex situ ro asla. Which of the following is a method of in situ conservation? What is in situ? Say organism mananकर natural place को ही protect करिबा. It is in situ. तो in situ किए कोटा in situ national park, cryo preservation, botanical garden, all of these. कौन होगा आंसर? 122. national park, cryo preservation, botanical garden, all of these. cryo preservation low temperature रे जो seed bank ठीक अच्छी तो सेटा तो ex situ हबो तो cryo preservation हबोनी. The cryo preservation हबोनी ताहले all of these तो हबोनी. botanical garden और national park रू गोटा हबो तो आंसर कौन हबो? national park. national park माने botanical garden ex situ निजे artificially मनुष्य तैयारी करता है but national park सही particular plant मानन को जोड़ थिबे सही जगह को हमें संरक्षण करिबा कंजर्वेशन करिबा. so that is your national park is in situ. okay, प्रथम 123 रो आंसर कोंतु with the example of ex situ. ex situ माने नेचुरल जगह आनी कि हमें आर्टिफिशियली तांको संरक्षण करिबा. तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सीड बैंक, सेक्रेड ग्रुप, नेचुरल नेशनल पार्क. तो नेशनल पार्क, सेक्रेड ग्रुप्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी all are in situ. सीड बैंक मन रखो सीड बैंक, जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन एसु एक्स सिचु. यार कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपण माने पाई जिवे मैराथन वीडियो. जूलॉजी बॉटनी मैराथन वीडियो आपण पाई जिवे एक्स सिचु और इन सिचु. ठीक अछि. फॉर एग्जांपल वाइज कहि दोछि मु सीड बैंक, जूलॉजिकल पार्क, जू जाक ठीक अछि. आ हमर बॉटनिकल गार्डन सो एक्स सिचु, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेक्रेड ग्रुप ए सब जाक होछि इन सिचु. सीड बैंक होछि एक्स सिचु. 123 सरला. 124 कहतु बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मार्क करी. ये भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन. I want to mark this as an important question. सौ 24 आंसर कहतु which of the question नाम फर्स्ट कहि दोछि कौन which of the following is the most important cause of animals and plants being driven to extinction. एनिमल और प्लांट एनिमल किंगडम रु अधिका क्वेश्चन आसीबो कि कमेंट सेक्शन रे कहउछन ओम प्रकाश. सेमिति त कहि हबनी. देखंतु मु जति कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिली एनिमल किंगडम रु क्वेश्चन सब बराबर इक्वल टाइप रे क्वेश्चन आसे. बट एक्सक्रिएशन और फोटोसिंथेसिस, बॉटनी रो फोटोसिंथेसिस, जूलॉजी रो एक्सक्रिएशन एई पार्ट रु तो 45 क्वेश्चन यूनिफॉर्मली आसीबो कि कहि हबनी. तणो आमे सब सेक्शन को टिके इक्वली फोकस देकी सिलेबस को हमें कवर कर दवा. ठीक अच्छे. बट एनिमल किंगडम कौन मैं क्वेश्चन कहीं एनिमल किंगडम रो प्रैक्टिस करेली बिकॉज बहुत सारा वेरिएबल क्वेश्चन से भीतर अछि एनिमल किंगडम रे. ठीक अच्छे. तो बर्तमान आंसर कहतु 333C. यस मो मैराथन वीडियो रे भी कहि सारछि जिनछडा. तो एनिमल प्लांट मानकर एक्सटेंशन होबार मोस्ट चारिटा तो एई चारिटा रीजन अछि पिला माने. ये चारिटा रीजन को कुआ होछि इविल क्वार्टेट. चार जन को कुआ होछि इविल क्वार्टेट माने चारिटा रीजन ऑफ एनिमल ऑफ प्लांट एक्सटेंशन. चारिटा इविल क्वार्टेट बोली से कुआ होला इविल क्वार्टेट. तो चारिटा रीजन भितरु मोस्ट की रेस्पोंसिबल ओवर एक्सप्लोटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेशन, हैबिटेट लॉस, फ्रैगमेंटेशन. ना एक्चुअली क्वेश्चन टिके अधिका थिला. ओके चलो अच्छा हाँ एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम रो क्वेश्चन आसीबो. एमिति नै कि अधिक आसीबो. आप सिलेबस रे जति कि अछि ताकू कवर कर दियंतु ला हे जो कि असुविधा. तर आंसर कोन हो देखंतु मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज होची ऑप्शन 3. कमेंट सेक्शन रे समस्त कहले हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन. ठीक अछि. चारिटा कारण अछि बट मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज होची हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन.
ओके तो नेक्स्ट जीवा हमें रेस्पिरेशन को जीवा आपनकर एलटीआर मेन रो सिलेबस आपन जानि दिबे रेस्पिरेशन टा कंप्लीटली सेलुलर रेस्पिरेशन अछि एरोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल सब अछि रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर ऊपर नै 125 कोंदु द लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल भीतर लिंक की साइट्रिक एसिड मालिक एसिड फ्यूमारिक एसिड एस्टाइल कोएंजाइम ए यस एस्टाइल कोएंजाइम ए कहीं ग्लाइकोलाइसिस रे कोन हबो ग्लूकोज रो ब्रेकडाउन है कि पायरुविक एसिड हबो बट पायरुविक एसिड देन कन्वर्टेड टू एसिटाइल कोएंजाइम ए देन ए एसिटाइल कोएंजाइम में प्रवेश करिवो क्रेब्स साइकिल बा टीसीए साइकिल बा साइट्रिक एसिड साइकिल डिफरेंट ना अछि तोरा आंसर हो एसिटाइल कोएंजाइम ए नेक्स्ट 126 जीवा अल्टरनेट नेम ऑफ क्रेब्स साइकिल कौन हम ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल ग्लाइकोलेट साइकिल साइट्रिक एसिड साइकिल ईएमपी पाथवे क्रेब्स साइकिल रो अन्य ना कौन 126 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द अल्टरनेट नेम ऑफ क्रेब्स साइकिल ईएमपी हबनी ईएमपी होची ग्लाइकोलिसिस तीन जन साइंटिस्ट को ना आंसर हिची ईएमपी पाथवे इज द अदर नेम ऑफ ग्लाइकोलिसिस साइट्रिक एसिड साइकिल इज द अदर नेम ऑफ क्रेब्स साइकिल साइट्रिक एसिड कहि परिबा बा टीसीए बोली कहि परिबा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल सेम और क्रेब्स साइकिल आप कहि परिबा ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन 127 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन 127 कौन कहले साइटोप्लाज्म यस सो ग्लाइकोलिसिस होची साइटोप्लाज्म रे क्रेब्स साइकिल बा साइट्रिक एसिड साइकिल बा टीसीए साइकिल कोठी हबो माइटोकॉन्ड्रिया रे ठीक अछि ईएमपी होची ग्लाइकोलिसिस ईएमपी पाथवे इज द अदर नेम ऑफ ग्लाइकोलिसिस ईएमपी तीन जन साइंटिस्ट को ना रही फर्स्ट अल्फाबेट अनुसार से तीन जन साइंटिस्ट को ना मु ऑलरेडी कही मैराथन वीडियो रे मोर टिके देखि दियंतु ईएमपी ओके सो ग्लाइकोलिसिस रो अदर ना होची ईएमपी पाथवे ओके ग्लाइकोलिसिस कोठी होची साइटोप्लाज्म क्रेब्स साइकिल कोठी होची माइटोकॉन्ड्रिया ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जबा 127 चलो 128 को जबा हाँ एमडन मेरफ एंड परनास यस यस ये तीन जन बहुत बढ़िया ईएमपी थैंक यू फॉर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन ईएमपी 128 चलंतु देखंतु ग्लाइकोलिसिस गिव राइज टू गोटे ग्लाइकोलिसिस रे कोन हुए केतटा एटीपी तैयारी हुए केतटा एनएडीएच पायरुवेट कोन 128 नंबर क्वेश्चन पायरुवेट ओके ग्लाइकोलिसिस गिव राइज टू 128 रो 3 यस तो टोटल 4टा एटीपी तो तैयारी हुए 2टा एटीपी खर्च हो जाए तेणु ग्लाइकोलिसिस रे नेट गेन जदि कहबा 2टा एटीपी 2टी एनएडीपीएच बा एनएडीएच2 एंड 2टा ग्लाइकोलिसिस रो एंड रे गोटिए ग्लूकोज रु 2टा पायरुविक एसिड तैयारी हुई ठीक अछि ओके पायरुविक एसिड और 3 कार्बन कंपाउंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 129 which of the following is
5 carbon compound of Krebs cycle, citric acid, fumaric acid, oxalosuccinic acid, alpha ketoglutaric acid. RUBP एटी रेस्पिरेशन चलछि RUBP आसीबन एटी 5 कार्बन कंपाउंड Krebs cycle रे की Krebs cycle रे एसिटाइल कोएंजाइम A oxaloacetic acid सहित मिसिबो एसिटाइल कोएंजाइम ए 2टा कार्बन oxaloacetic acid 4टा कार्बन मिसिकी हबो साइट्रिक एसिड जार 6टा कार्बन साइट्रिक एसिड रु 5टा कार्बन हबो डिकार्बोक्सिलेशन कार्बन डाइऑक्साइड गोटे कमी कमी जीवो तो 5 कार्बन रो तयारी हो ता ना होची अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड जे होची 5 कार्बन देन फ्यूमारिक एसिड सक्सिनिक एसिड एमन सब 4टा कार्बन ठीक अछि अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड इज 5 कार्बन कंपाउंड अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड 129 सरला 130 को जीवा सहे 30 क्वेश्चन नंबर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड चलो ओके वेरी इजी क्वेश्चन व्हाट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग एक्सरसाइजिंग इन स्केलेटल मसल रे एनारोबिक रेस्पिरेशन हे गले कोन हुए काय आमे ह्यूमन बीइंग तो एरोबिक रेस्पिरेशन हुए किंतु एक्सरसाइज हेवी एक्सरसाइज कला बेले मसल सेल को जब ऑक्सीजन जाई पारेनी तथापि तो रेस्पिरेशन होगा पड़िबो तो आ गोटे पाथवे रे हे जाय तो बहुत इजी क्वेश्चन यस लैक्टिक एसिड तो आंसर इज लैक्टिक एसिड नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द मेटाबोलाइट इज कॉमन टू रेस्पिरेशन मेडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ फैट कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन ए सब समस्त ब्रेकडाउन रो कॉमन केमिकल की हमारा जनरल रेस्पिरेशन कार्बोहाइड्रेट ही थाए बट जब कार्बोहाइड्रेट अभाव हो तो स्टोरेज होता प्रोटीन और फैट भी आम रेस्पिरेशन होकर एनर्जी दिखती तो ये 3 जन जाक जो ब्रेकडाउन हुए तो डिफरेंट पाथवे आम जाना दरकार नहीं बट कॉमन केमिकल किए आसे एसिटाइल कोएंजाइम में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट पायरुविक एसिड 131 4 कहते पायरुविक एसिड कहते यस पायरुविक एसिड आड़ जाऊँगी बट कन्फ्यूजन हो पायरुविक एसिड बट कॉमन एटा रही पायरुविक एसिड पर जो पायरुविक एसिड हेनी ना पायरुविक द करेक्ट आंसर इज एसिटाइल कोएंजाइम ए ओके इट इज कॉमन लिंक acetyl coenzyme A is the metabolite which is common to respiration mediated breakdown of fat carbohydrate protein मन रखंतु pyruvic acid हबो नहीं correct answer is acetyl coenzyme A common chemical in the breakdown of all fat protein and carbohydrate मन रखंतु acetyl coenzyme A 131 क्वेश्चन तापर आम जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को 132 व्हाट इज द नेट गेन ऑफ एटीपी व्हेन ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बर्तमान कहली मु ग्लाइकोलिसिस क्वेश्चन रिपीट हला उधर ग्लाइकोलिसिस रे टोटल केतडा एटीपी गेन होची टोटल थियरी 4टा तो 2टा खर्च हो तो नेट गेन केते हला नेट गेन ऑफ एटीपी ग्लाइकोलिसिस रे आंसर इज 2 एटीपी सर गेन 132 answer is 2 net gain of ATP 132 रो 3 ऑप्शन एटी NADPH को मिसेबे ओनली ATP को मिसेबे ठीक अछि net gain of ATP प्रकृति रे देखिबे तो ग्लाइकोलिसिस पूरा प्रोसेस रे 4टा ATP तयारी होईची बट 2टा ATP इन्वेस्ट हो जाईची खर्च हो जाईची तो नेट गेन हबो 2 ATP ओके 132 रो ऑप्शन नंबर सी बा 3 ऑप्शन आंसर 2 ATP ओके नेट वेरी इंपोर्टेंट नेट गेन ऑफ ATP कहिछि NADPH को कैलकुलेट करिवे नाही 133 को चलंदु 133 क्वेश्चन पूरा हाउ मेनी ATP molecules are produced by aerobic oxidation of one molecule of glucose पूरा एरोबिक ऑक्सीडेशन रेस्पिरेटरी चार्ट जो देखिबा पूरा एरोबिक ऑक्सीडेशन रे केति की एटीपी मॉलिक्यूल तयारी हेबो गोटिए ग्लूकोज रो ऑक्सीडेशन रे द आंसर इज योर यस
38. Total 38 ATPs are produced. ठीक अच्छे. Aerobic respiration 38 ATP. Okay. Next question को जीवा 134. Acceptor of acetyl coenzyme in Krebs cycle. Krebs cycle रे जिते बेला हमर ग्लाइकोलिसिस रे ग्लूकोज रा पायरुविक एसिड हला, पायरुविक एसिड टा उतरे एसिटाइल कोएंजाइम ए हला हे कि से एंटर करबो क्रेब्स साइकिल भितर को. तो क्रेब्स साइकिल रे एसिटाइल कोएंजाइम ए को एक्सेप्ट किए करबो मालिक एसिड. कमेंट सेक्शन टी देखुची एनएडीपीएच को केते बेले कैलकुलेशन करा जीवो क्वेश्चन कोन थिबो. अच्छा जदि नेट गेन ऑफ एटीपी कहिथिबो ताले एनएडीपीएच को कैलकुलेशन करिवे नाही. केवल जदि खाली हाउ मेनी एटीपी जदि कहिथिबो ताले आपण माने एनएडीपीएच को कैलकुलेशन करिवे. गोटी एनएडीपीएच रु 3टा एटीपी बाहरिबो और एफएडीएच रु 2टा एटीपी बाहरिबो. ठीक अछि. नेट गेन जदि कहला एटीपी ताले केवल एटीपी को कंसीडर करिवे. ओके ओम प्रकाश. ओके बर्तमान ए क्वेश्चन र आंसर ऑक्सालो ओ ए. ओके ऑक्सालो एसिटिक एसिड तोर आंसर कोन हबो ऑक्सालो एसिटिक एसिड. ऑक्सालो एसिटिक एसिड रे एसिटाइल कोएंजाइम ए ऐड है कि तयारी हबो साइट्रिक एसिड हला. नंबर 135 को जीवा. कोंतु in which of one of the following processes CO2 is not released. Aerobic respiration in plant, aerobic respiration in animal, alcoholic fermentation in yeast, okay, and lactate formation. तो कोठी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होउनी. बंधु carbon dioxide is not released. Yes, lactate fermentation is the correct answer. Lactic acid तैयारी होची एनारोबिक रेस्पिरेशन मसल जोटी कार्बन डाइऑक्साइड तैयारी हो नहीं. ओके 1 second. देन चलते हमें स्टार्ट करिवा द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज योर सर्कुलेशन. सर्कुलेशन अछि एक्सक्रिएशन कंट्रोल कोऑर्डिनेशन रिप्रोडक्शन सरले जूलॉजी सरीबो. बॉटनी रो पूरा मिसलेनियस कर दी चैप्टर वाइज जाओ करबे. इंपोर्टेंट क्वेश्चन को मिसलेनियस करके डिस्कशन करिवा. ठीक अछि. ए जूलॉजी को चैप्टर वाइज करा जाय छि. तो देखंतु सर्कुलेशन कोन. सर्कुलेशन स्टार्ट करिवा 136 देखंतु. Which smallest plasma protein maintain the blood colloidal osmotic pressure. को प्रोटीन ब्लड प्रेशर को मेंटेन करछु. ग्लोबुलिन तो इम्यूनिटी, फिब्रिनोजेन तो ब्लड क्लॉटिंग. तो आंसर कौन हबो अल्बुमिन हो. अल्बुमिन इज द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर इज योर अल्बुमिन जे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करछु. ओके नेक्स्ट जीवा 137 को ठीक है स्पीड अप करिया. 137 देखंतु. इफ हार्ट रिसीव पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स. मु आपण मानन को इंपोर्टेंट जिंस कहूची. सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम केतेबेले एक्टिवेट हबो जेतेबेले आमे माने कोनोसी इमरजेंसी सिचुएशन रे थिबा. जदि आमे रिलैक्सिंग सिचुएशन रे थिबा रेस्टिंग स्टेज रे थिबा ताले हमर पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल जाको ऑपरेट चलथिबो. तो हार्ट को जदि पैरासिम्पैथेटिक मिलुची माने हम रेस्टिंग स्टेज रे अच्छे से तोले कोन हबो इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट, इंक्रीज द स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, डिक्रीज द कार्डियक आउटपुट, इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन. तो बर्तमान हमें 137 कोन हबो रेस्टिंग स्टेज रे हम अच्छे. जदि हम रेस्टिंग स्टेज रे अच्छे ताले हमर कार्डियक आउटपुट ये कमी जिवो. हार्ट बीट तो बढ़िबो इंक्रीज किछि भी हबोनी. हार्ट बीट इंक्रीज हबोनी कि एक्शन पोटेंशियल हबोनी कि वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन इंक्रीज हबोनी. तो डिक्रीज हो. आंसर कोन हबो डिक्रीज द कार्डियक आउटपुट. 1 मिनट रे जति ब्लड पंप करछि हार्ट ताको होछि कार्डियक आउटपुट 5000 मिलीलीटर 5 लीटर. ठीक अछि. तो सीटी कमी जिवो. ओके parasympathetic neural signal. Okay, the concept is clear. Now
which one indicates the hypertension? 138 चलतु हाइपरटेंशन माने ब्लड प्रेशर बढ़ी जाइथिबो तो को ऑप्शन रे हमु जणा पड़छ कि हाइपरटेंशन 90/60 120/85 110/70 और 140/100 कोन आंसर नॉर्मल ब्लड प्रेशर केते 120/80 तो देखिबे कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दीड जा बढ़ी जाइथिबो तो कोन हो आंसर 140/100 इज द करेक्ट हाइपरटेंशन हमर नॉर्मल होची 120/80 ताट जदि अधिक होइथिबो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 139 सेरम कोन बारंबार मोडा मैराथन वीडियो रे भी बहुत थोर कहि सेरम कोन प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर ब्लड विदाउट ब्लड सेल्स ब्लड विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर ब्लड विदाउट आरबीसी तो कोन सेरम कोन आंसर कोन हो 139 किछि पिला लिखबे कि ब्लड विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर लिख देबे नाइ ब्लड रे तो प्रोटीन थिबो बहुत थिबो ना नाइ प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर ब्लड रे तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट सब थिबो सेरम रो अर्थ होची प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर बहुत इंपोर्टेंट प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज नोन एज सेरम ठीक अछि 140 की जिबा ओ कमेंट सेक्शन रे भी करेक्ट आंसर आछी ओके कंपोनेंट ऑफ ब्लड रिस्पांसिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी एंटीबॉडी तैयारी करिया पई को फास्ट एंटीबॉडी माने इम्यूनिटी पई डब्ल्यूबीसी थ्रोम्बोसाइट माने प्लेटलेट एरिथ्रोसाइट माने आरबीसी हबनी मोनोसाइट लिम्फोसाइट भीतर कोन हो एंटीबॉडी तैयारी करिया पई मोनोसाइट और लिम्फोसाइट एंटीबॉडी किए तैयारी करछ काई थ्रोम्बोसाइट माने प्लेटलेट्स एरिथ्रोसाइट माने आरबीसी छाडंतु तो डब्ल्यूबीसी तो ए दिडा ही अछि मोनोसाइट और लिम्फोसाइट भीतर कोन हो एंटीबॉडी तैयारी करिवो किए लिम्फोसाइट ओके द करेक्ट आंसर इज लिम्फोसाइट बिकॉज टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट माने एंटीबॉडी तैयारी करते मोनोसाइट हबो नाही लिम्फोसाइट इज द करेक्ट आंसर लिम्फोसाइट इज अगेन डिवाइड इनटू टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट जो माने एंटीबॉडी तैयारी करते जदि फॉरेन पार्टिकल किछि आसला सेही फॉरेन पार्टिकल को स्पेसिफिकली मारिबा पई से माने एंटीबॉडी तैयारी करते ठीक अछि ओके नेक्स्ट चलंदु जिबा 141 को प्रोसेस बाय व्हिच ब्लड सेल्स आर फॉर्मड इन बोन मेरो रे हमर ब्लड सेल तयारी होची आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट सब हमर बोन मेरो रे तयारी होची तो जो प्रोसेस रे होता ना कोन हेमोपोएसिस हेमोलाइसिस थ्रोम्बोपोएसिस एरिथ्रोब्लास्टोसिस बहुत इजी हेमोपोएसिस ओके वर्न आउट आरबीसी आर डिस्ट्रॉयड आरबीसी जो 120 दिन तार लाइफ स्पैन 120 दिन पर गोटे आरबीसी नष्ट हो जाए तो नष्ट कोटी हुए स्प्लीन बोन सेल मास्ट सेल किडनी 142 कौन हम स्प्लीन बहुत इजी क्वेश्चन इन इनफॉर्मेटिव क्वेश्चन स्प्लीन को ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी को आजे ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी ओके 142 143 नंबर को जो देखिबा टी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट इन ओके ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहि परिबी ठीक अछि टिके आपण मानन को टिके मुंड खेलाव पड़िबो एडी हला मुंड खर्च करिया पड़िबो टी लिम्फोसाइट कहला लिम्फोसाइट जो तयारी हबो सी मैच्योरेशन हबो हे कि टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट हबो तो टी अछि माने देखंतु टी रिप्रेजेंट्स थायामस तो थायामस आम चेस्ट कैविटी भीतर जो थायामस ग्लैंड अच्छी सेठी टी लिम्फोसाइट हम आउ गोटे लिम्फोसाइट अच्छी बी लिम्फोसाइट जदि बी लिम्फोसाइट पचारला ताले बी लिम्फोसाइट जदि बी लिम्फोसाइट पचारला ताले तार आंसर कोन हो बोन मेरो इज द करेक्ट आंसर बट टी लिम्फोसाइट कोन हो थायामस ओके थायामस इज द करेक्ट आंसर थायामस रे टी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट हो चलो 144 आड़ को जिबा कंटिन्यूअस ब्लीडिंग फ्रॉम एन इंजुर्ड पार्ट ऑफ बॉडी इज ड्यू टू कंटिन्यूअस जदि ब्लीडिंग होची ताहले तार कोन होने
ब्लड क्लॉटिंग ठीक से होनी ब्लड क्लॉटिंग पई कौन कौन दरकार प्लेटलेट तो दरकार कैल्शियम दरकार विटामिन के दरकार तो विटामिन के तार डेफिशिएंसी हो जाए जहाँद्वारा ब्लड क्लॉटिंग होनी एंड कंटिन्यूअस ब्लीडिंग हो इजी क्वेश्चन ओके नॉर्मल कार्डियक आउटपुट केते ठीक किसी समय पूर्व मुझे कहली कार्डियक आउटपुट वैल्यू कही 15 लीटर पर मिनट 5 लीटर इंटू 72 पर मिनट 5 लीटर पर मिनट 5/72 लीटर पर मिनट एमती चार्टा ऑप्शन देछि 5 लीटर पर मिनट बा 5000 मिलीलीटर बा 5 लीटर पर मिनट ठीक अच्छे कार्डियक आउटपुट माने कौन गोटे मिनट रे आमर हार्ट रो वेंट्रिकल माने केतिकी ब्लड पंप करछंती सेटा 5 लीटर बा 500 मिलीलीटर आउ गोटे टर्म अछि मन रखंतु स्ट्रोक वॉल्यूम स्ट्रोक वॉल्यूम कौन स्ट्रोक वॉल्यूम होची गोटिए हार्ट बीट हेले गोटिए थर हार्ट बीट हेले जति वॉल्यूम रो ब्लड पंप होता है तार वैल्यू होची 70 ml मन रखंतु गोटिए थर हार्ट बीट बेले जति अमाउंट जति वॉल्यूम रो ब्लड पंप होता है हार्ट रे ता होची 70 ml गोटिए हार्ट बीट रे ताकू जदि आम 72 72 सहित मल्टीप्लाई करदे इट इज मल्टीप्लाइड बाय 72 कहीं गोटे मिनट रे हमर 72 थर हार्ट बीट होता है एवरेज अडल्ट हेल्दी अडल्ट तो 72 सहित मल्टीप्लाई करदे आपनकर एप्रोक्सीमेटली पळे आसियो 5 लीटर पर मिनट जोड़ा होची कार्डियक आउटपुट ओके कॉन्सेप्ट इज क्लियर okay which enzyme is responsible for the conversion of inactive fibrinogens to fibrin blood clotting बेले fibrinogen डा inactive थिबो fibrin हे जो तो के हेल्प करे थ्रोम्बिन रेनिन एपिनेफ्रिन आउ थ्रोम्बोकाइनेट्स फिब्रिनोजेन को फिब्रिन करिवार के हेल्प करे इनएक्टिव फिब्रिनोजेन को फिब्रिन करिवार को एंजाइम हेल्प करे यस द करेक्ट आंसर इज थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन रो थ्रोम्बिन हबो थ्रोम्बिन हेल्प्स इन फिब्रिनोजेन टू फिब्रिन इजी क्वेश्चन आसला 147 ग्रेवियार्ड ऑफ आरबीसी आउथरे आसला सेटा तो अलग थिला वन आउट आरबीसी थिला एटा ग्रेवियार्ड ऑफ आरबीसी का को पचारछि तो आंसर इज योर स्प्लीन सो 147 क्लियर next we will move towards to excretion excretion start करिया ओके फर्स्ट क्वेश्चन following substances choose the highest toxic excretory product हमरो ए चारटी जा ऑप्शन होचे excretory product सबडो अधिक टॉक्सिक के सबडो अधिक टॉक्सिक होची एमोनिया सेते पई तो हम बॉडी रे एमोनिया कोन होची यूरिया हे जाउची बाय ऑर्निथाइन साइकिल इन लिवर लिवर गोटे ऑर्निथाइन साइकिल होची जोठी एमोनिया यूरिया रे कन्वर्ट हे जाउची आ से सब यूरिया ब्लड दे की ब्लड वेसल रे हमरो किडनी को होची आ किडनी रे फिल्टरेट हे की यूरिन होची blood vessel which transports blood into Bowman's capsule nephron रो Bowman's capsule को blood flow किए कराए ठीक अछि हमें जदि हमें नेफ्रॉन को देखिवा नेफ्रॉन रो डायग्राम जो Bowman's capsule ठीक अछि ताले तो गोटे किछि ब्लड वेसल रे ब्लड आसे आ किछि ब्लड वेसल रे ब्लड जाए तो ब्लड जो आसे ठीक अच्छे यार ना कौन ब्लड इनटू Bowman's कैप्सूल ग्लोमेरुलस बा Bowman's कैप्सूल भितर को ब्लड आसे आंसर कौन हबो एफरेंट आंसर कौन हबो एफरेंट आर्टेरियोल ब्लड जाए एफरेंट ब्लड आसे ग्लोमेरुलस भितर को Bowman's कैप्सूल भितर को तो आंसर कौन हबो एफरेंट आर्टेरियोल ओके
150 को जीवा यस एफरेंट एट्रियल समस्त कहउचंती एंड आंसर इज एफरेंट एट्रियल करेक्ट आंसर देन आंसर लाइड 150 देखो 150 कौन हम फास्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन रो प्रथम स्टेप कौन ट्यूबुलर सिक्रेशन सिलेक्टिव सिक्रेशन अल्ट्राफिल्ट्रेशन ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन which is the first step first तो ग्लोमेरुलस रे फिल्ट्रेशन हबो तो फर्स्ट स्टेप कौन हबो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और आपको को होची ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को होची ओके ग्लूकोज इज टेकन बैक फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलस रो ब्लड रो फिल्ट्रेशन पर जहां बाहरला ताकू होची ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रे बहुत सारा वाटर थिबो ग्लूकोज भी थिबो तो ग्लूकोज कोन हम बॉडी को दरकार से तो यूरिन रे गला हबनी तो ग्लूकोज को कोन करियो हम बॉडी ताकू आउथरे ब्लड वेसल मान को अगेन रीअब्जॉर्ब कर दो तो जो रीअब्जॉर्ब करियो तो को मेथड रे एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑस्मोसिस ब्राउनियन मूवमेंट कोन हबो 151 ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज हमरो बैक अगेन ट्रांसपोर्ट होई कि ब्लड वेसल को पळे आसीबो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रू तो को प्रोसेस रे एक्टिव पैसिव ऑस्मोसिस ब्राउनियन पैसिव कहते ये पैसिव बट पैसिव इज नॉट करेक्ट द करेक्ट आंसर इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज एक्टिव ट्रांसपोर्ट एटी भी खर्च हो एटी भी खर्च होगी आसो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज रिटर्न बैक करके आसो बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 152 देखो वाटर एब्जॉर्प्शन इज मैक्सिमम इन व्हिच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन रे जतलो ग्लोमेरुलस रो जतलो फिल्ट्रेट आसला वर्तमान नेफ्रॉन रो से कोडी पीसीटी हेनल्स लूप डीसीटी हेगी जीवो तो को पार्ट रे वाटर रो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हे जीवो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन कोठी हो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पर मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन पाखापाखि 70 to 80% 60-70% वाटर एब्जॉर्प्शन है यस कमेंट सेक्शन रो करेक्ट आंसर आसला पीसीटी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल रे मैक्सिमम वाटर मैक्सिमम इलेक्ट्रोलाइट मध्य एब्जॉर्ब हे जो हला केमिकली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा एक्सेप्ट हमरो ब्लड प्लाज्मा सहित ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट सिमिलर हबो एक्सेप्ट कोन नथिबो माने ब्लड प्लाज्मा रे थिबो कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रे नथिबो यूरिया ब्लड प्लाज्मा रे रहइबो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रहइबो ग्लूकोज भी रहइबो काई ग्लूकोज रे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रे ग्लूकोज सेति पे रीअब्जॉर्ब होला इलेक्ट्रोलाइट्स बट प्रोटीन रहइबोनी केबे मध्ये प्रोटीन नेफ्रॉन देखि फिल्ट्रेशन हबोनी ग्लोमेरुलस रे प्रोटीन फिल्ट्रेशन हबो नाही ताले ब्लड प्लाज्मा रे प्रोटीन रहइबो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रे प्रोटीन रहइबो नाही यस करेक्ट आंसर प्रोटीन यस प्रोटीन ठीक अछि प्रोटीन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट द रिपीटेड क्वेश्चन नियरली ऑल ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स and 70 to 80% of electrolytes and water are reabsorbed. Again, the question is repeated. Quote reabsorption अधिक होची water और electrolyte मानकर the answer is PCT. Okay. Again, the question is repeated here. 154 complete. Again, we go to the next question. That is your yes. 155 देखो the hormone that promotes reabsorption of water from glomerular filtrate रू water तो पीसीटी reabsorb होउची तो को हार्मोन एडी हेल्प होउची ऑक्सीटोसिन भासोप्रेसिन रिलैक्सिन कैल्सिटोन तो वाटर reabsorption करिवो पीसीटी रू हेल्प करिवो भासोप्रेसिन आपण माने कहि परिबे यस भासोप्रेसिन करेक्ट आंसर व्हाट इज द अदर नेम ऑफ भासोप्रेसिन
What is the other name of vasopressin? What is the other name of vasopressin? Anyone? vasopressin ର other ନା କଣ? Yes, ADH, anti diuretic hormone. Anti-diuretic hormone. Okay, released from posterior pituitary. प्रकृति हाइपोथैलेमस रे तयारी होती है बट पोस्टीरियर पिट्यूटरी रे आसिक स्टोर होची और सेटू सीक्रेट होची. ओके 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 ADH. ओके ठीक अच्छे. नेक्स्ट जी क्वेश्चन 155 सरला 156. concentration of urine depends upon which organ? देखो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेट हला परे पीसीटी तो एब्जॉर्प्शन हे जो किंतु यूरिन को कंसंट्रेट करियार काम कोन काम कहार यूरिन को कंसंट्रेशन करियार काम Women's capsule, length of anal loop, PCT, network of capillary arising from glomerulus. कौन होगा आंसर? Which part of nephron involved in concentrating the urine? Yes, anal loop. ठीक अच्छे. anal loop रो जो हमरो anal loop जो देखिए ए टाइप रो रहेगा. ये U-shaped structure. तो तारो गोटे रहेगा descending limb और गोटे रहेगा ascending limb. Okay. तो डिसेंडिंग लिम्ब रे वाटर परमिबल हबो और एसेंडिंग लिम्ब रे वाटर इनपरमिबल हबो. तो एई प्रोसेस रे कोन हबो यूरिन कंसंट्रेशन हे जिवो हेनल्स लूप रे. ठीक अछि. तो आंसर यो जो हेनल्स लूप इज द करेक्ट आंसर. कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन. ओके मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन पचारला तो आंसर कोन हबो पीसीटी. हेनल्स लूप रे कोन हबो यूरिन कंसंट्रेशन हो. ascending loop of Henle is permeable for मु कहली descending loop रे वाटर को permeable ascending loop रे वाटर को impermeable. यदि वाटर को impermeable तो ascending loop रे कहा को permeable 157 नंबर. ascending loop is permeable to which substance? ascending loop is impermeable to water. मन रखंतु descending loop रे वाटर permeable हो. डिसेंडिंग लिम्ब रे वाटर परमिबल हबो. एसेंडिंग लिम्ब का एसेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिबल टू वाटर हबो नै. एसेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिबल टू वाटर. तो आउ रहला कोन इलेक्ट्रोलाइट ग्लूकोज तो सब पळै छी पीसीडी रे Na+ को एसेंडिंग लिम्ब परमिबल हबो वाटर को परमिबल हबो. डिसेंडिंग लिम्ब जदि पचार थांता ताले वाटर हेता. नोट डाउन कर दियंतु. Henle's loop रो descending limb is permeable to water, ascending limb is permeable to Na+. ठीक अच्छे. एई वे रे यूरिन कंसंट्रेशन यूज काउंटर करंट मेकानिज्म बोली कहौ जो. वन 158 जिबा. Which of the following is completely absorbed in PCT? Proximal convoluted tubule रे complete absorb के हे जिवो. 158 नंबर क्वेश्चन. वाटर सॉल्ट Na+ ग्लूकोज कौन हम 158 नंबर आंसर कौन? पीसीटी रे कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हबो. देखो वाटर तो 60-70%, इलेक्ट्रोलाइट भी 78% से होई जी. ग्लूकोज 100% एब्जॉर्प्शन हे जो पीसीटी रे एक्टिव ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज. तो ग्लूकोज 100% एब्जॉर्प्शन हे जो. ठीक है. 159 ureter, blood vessels, nerves enter in kidney through रे kidney रो को पार्ट रे सब मिसचंदी ureter, blood vessel, nerve
पेल्विस हाइलम कन्वेक्स सरफेस कॉर्टेक्स कौन आंसर हम सब जाक पेल्विस हाइलम भीतर कंफ्यूजन हेबे बट द करेक्ट आंसर इज योर हाइलम हाइलम देकी जाइछि पेल्विस ओके हाइलम इज द करेक्ट आंसर यस 160 को जीवा 160 conditional reabsorption of Na plus and water takes place in which segment of nephron देखो एबे बर्तमान कहली कि Na plus को ascending limb permeable water को permeable होचे ascending limb तो कंडीशनल रिएब्जॉर्प्शन कोडी होची कौन हम पीसीटी लूप ऑफ हेनल बोमेन्स कैप्सूल डीसीटी बर्तमान डिस्कशन कले हमें कौन हम कंडीशनल रिएब्जॉर्प्शन एबे बर्तमान कहली मु Na प्लस एसेंडिंग लिम्ब रे एब्जॉर्ब हो डिसेंडिंग लिम्ब रे वाटर एब्जॉर्ब हबो तो कहार लूप ऑफ हेनल इज द करेक्ट आंसर ओके लूप ऑफ हेनल conditional reabsorption of Na plus and water ସେଥିପାଇଁ ତ यूरिन concentration होची this is called conditional reabsorption so loop of Henle is the correct answer मन रखंतु DCT हबो नाही conditional reabsorption of बर्तमान एबे रिसेंट कहली जिनसडा बुझेली कि हमर सॉरी जो Henle's loop अछि Henle's loop रो descending limb and ascending limb डिसेंडिंग लिम्ब रे H2O रिएब्जॉर्ब हो जियो तो यूरिन टा कंसंट्रेशन हो जियो कहीं वाटर जगह रिएब्जॉर्ब होला तापर जो यूरिन एसेंडिंग लिम्ब जो Na प्लस जगह रिएब्जॉर्ब हो तो आउ टिके डाइल्यूट हो एमिति है कि कंसंट्रेशन टा बैलेंस हो ठीक अछि आंसर कोन हो लूप ऑफ हेनल नेक्स्ट क्वेश्चन कोंतु 161 हाउ मच अमाउंट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज फॉर्म्ड पर मिनट इन ए हेल्दी पर्सन प्रति मिनट रे केति की जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट केता हो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट केति की तयारी होची 125 ml 600 to 700 1100 to 1200 ml 180 लीटर जीएफआर केते ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यस करेक्ट आंसर इज योर 125 ml करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन रे समस्त करेक्ट आंसर कहउछन्ती बहुत बड़े गूगल डीसीटी कहउछ गूगल रे देखा गूगल रे सर्च करनी गो टू द एनसीईआरटी बुक ओके एनसीईआरटी बुक देखो देन यू कैन फाइंड आउट द करेक्ट आंसर ओके सो नेक्स्ट टाइम जिबा तो 125 होगा जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 162 देखंदु द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज एंड कीटोन बॉडी इन यूरिन रे जदी ग्लूकोज आसला तल ताकू डायबिटीज कहबा बट को डायबिटीज मेलिटस ना डायबिटीज इंसिपिडस ए दिरा ही कंफ्यूजन रहबो हमर जो एडीएच पड़थिला हम एडीएच भासोब्रेसिन रो अभाव रे कोन हबो यूरिन रे अधिक वाटर आसीबो अधिक यूरिन वाटर लॉस हबो ताहा होची डायबिटीज इंसिपिडस ये होची एडीएच रो बा भासोब्रेसिन इंसुलिन रो अभाव रे ब्लड रे ग्लूकोज लेवल अधिक होई जो ग्लूकोज जदी अधिक आसला ग्लूकोज और कीटोन जदी अधिक आसला इंसुलिन रो अभाव रे डेफिशिएंसी ऑफ कोन इंसुलिन ताल ताको हम कोन कहबा इंसुलिन then this is called diabetes mellitus okay correct then chalan jiba 163 which process plays important role in maintenance of ionic and acid balance body fluid ultrafiltration tubular secretion reabsorption glomerular filtration तो आम बॉडी रे आयन आ एसिड बैलेंस को मेंटेन करया पई के हेल्प कुछ
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन तो हब ना, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तो सेम, मतलब ए दीटा ट्यूबुलर सिक्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन कंफ्यूजन। रीअब्जॉर्प्शन हेगला, रीअब्जॉर्प्शन हेगले यूरिन तयारी हेगला किंतु बॉडी रे आयोनिक और एसिड बेस बैलेंस नहीं, सेति तो फाइनल स्टेप आउथरे आसुची आपण मानकर कोन ट्यूबुलर सिक्रेशन, आउथरे किछि यूरिया बा किछि हाइड्रोजन आयन किछि इलेक्ट्रोलाइट आउथरे रिनल ट्यूब को आउथरे सिक्रेट होछंती। तेणु ट्यूबुलर सिक्रेशन है फाइनाली बॉडी रे आमर आयोनिक एसिड बेस बैलेंस टा होमियोस्टासिस मेंटेन होची। तो द करेक्ट आंसर इज योर ट्यूबुलर सिक्रेशन। यस ट्यूबुलर सिक्रेशन। 164 को जुआ एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन व्हिच स्टिमुलेट्स आरबीसी फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड। एरिथ्रोपोइटिन, एरिथ्रोपोइटिन गोटे हार्मोन जी कि आरबीसी को तैयारी करियर हेल्प करे, आ ताको किए तैयारी करे। तो ये चारिटा ऑप्शन देखो पानक्रिएज, एडेनो हाइपोफिसिस, पिट्यूटरी, बोन मैरो आ किडनी। तेणु आम जानी रखिए कि किडनी रू तैयारी होची, तो किडनी रो कोड तैयारी होची जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल रू तैयारी होची, जेजी सेल जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। बट आम एति मन रखी एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जे आरबीसी तैयारी करे हेल्प करची से किडनी रे तैयारी होची। तो आंसर होची किडनी। ओके, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, किडनी इज द आंसर। 164 ऑप्शन डी किडनी। ओके 165 कहतु 165 देखो कौन रिमूवाल ऑफ प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल फ्रॉम द नेफ्रॉन विल रिजल्ट इन। जदि आम पीसीटी को रिमूव करदे एरिथ्रोपोइटिन 4 ठीक अच्छे किडनी। जदि आम पीसीटी को रिमूव करदे 165 क्वेश्चन कहतु पीसीटी को जो रिमूव करदे पीसीटी रे कौन होची वाटर एब्जॉर्प्शन होता तो वाटर एब्जॉर्ब हेनी। जो वाटर एब्जॉर्ब यूरिन रे अधिक वाटर बाहर तो यूरिन टा कौन हो कंसंट्रेटेड कही नो चेंज इन क्वालिटी नो यूरिन फॉर्मेशन मोर डाइल्यूटेड। पीसीटी रे कौन होता अधिक रू अधिक वाटर एब्जॉर्प्शन होता ठीक अच्छे। तो आम पीसीटी को रिमूव करदे तो यूरिन रे वाटर पलि आसो तो यूरिन कौन हो अधिक डाइल्यूटेड हो ठीक अच्छे। तेणु मोर डाइल्यूटेड यूरिन तैयारी। तो आंसर डी इज करेक्ट और आंसर 4 इज करेक्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 166 the maximum amount of electrolytes and water from the globe it repeated hela the answer is PCT अधिक वाटर ये क्वेश्चन टा रिपीटेड कहीं मुझे करछि बिकॉज एटा आपन माइंड रे रखिया पई कि क्वेश्चन टा बहुत इंपोर्टेंट। अधिक अधिक वाटर अधिक अधिक इलेक्ट्रोलाइट आ ग्लूकोज सब रीअब्जॉर्ब हो जाउछि पीसीटी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल बहुत इंपोर्टेंट हला ठीक अछि। जदि एग्जाम रे आसीओ इजीली आपन करि परिबे किसी प्रॉब्लम नहीं ठीक अच्छे। चलते नेक्स्ट जीवा आम नेक्स्ट चैप्टर को दैट इज योर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कौन कहला फर्स्ट क्वेश्चन 167 क्रैनियल स्पाइनल नर्व कैन बी इंक्लूडेड सेंट्रल सीएनएस एएनएस पीएनएस विसरल नर्वस सिस्टम। तो क्रैनियल नर्व 12टा अच्छी स्पाइनल नर्व केतरा अच्छी 31 अच्छी आ ये सब जाक आमर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भीतर जाउछ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम रे जाउछ ठीक अच्छे। वन 167 पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्रैनियल सीएनएस हबनी सीएनएस कौन ना ब्रेन स्पाइनल कॉर्टेक्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम पीएनएस हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्रैनियल एंड स्पाइनल नर्व पचार 12 पेयर 31 पेयर स्पाइनल नर्व 12 पेयर क्रैनियल नर्व पेरिफेरल सेंट्रल होची ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सेरेब्रम। सेरेब्रल कॉर्टेक्स रहिबो हिप्पोकैम्पस हाइपोथैलेमस एंड अमाइग्डला। हिप्पोकैम्पस अमाइग्डला को लिम्बिक सिस्टम को जे सेरेब्रम भीतर ही अच्छे लिम्बिक सिस्टम ठीक अच्छे। माने फियर पेन प्लीजर को कंट्रोल करती कौन कह लिम्बिक सिस्टम ये सेरेब्रम भीतर ही अच्छे
है हिप्पोकाम्पस एमाइगडाला ठीक अच्छे तो ये सेरेब्रम भितर अच्छी हाइपोथैलेमस नहीं सेरेब्रम रे हाइपोथैलेमस नहीं हाइपोथैलेमस डायनसेफालंट अच्छे तो हाइपोथैलेमस इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड सेरेब्रम तो हाइपोथैलेमस इज द करेक्ट आंसर 168 क्लियर ओके नेक्स्ट जीवा ओके नेक्स्ट आसला 169 कहतु which of the following is not the main parts of limbic system amygdala septum hippocampus corpus callosum लिम्बिक सिस्टम रे तो आमे भी देखले एमाइगडाला आ हिप्पोकाम्पस तो अच्छंती लिम्बिक सिस्टम भीतर कौन आंसर हम हिप्पोकाम्पस हम हिप्पोकाम्पस एमाइगडाला तो लिम्बिक सिस्टम रो पार्ट हिप्पोकाम्पस एमाइगडाला लिम्बिक सिस्टम रो पार्ट द आंसर इज कॉर्पस कैलोजम कहीं आमर जो ब्रेन रो जो दीटा सेरेब्रल हेमिस्फीयर अच्छी से दीटा सेरेब्रल हेमिस्फीयर को गोटे हॉरिजॉन्टली गोटे नर्व रो गोटे ट्रैक्ट कनेक्ट करुची दिस इज नोन एज कॉर्पस कैलोजम एंड कॉर्पस कैलोजम लिम्बिक सिस्टम रो पार्ट नुह ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा which part of brain regulates breathing and heartbeat involuntary breathing and heartbeat rate को किए कंट्रोल करुची cerebrum cerebellum medulla oblongata mid brain बहुत इजी क्वेश्चन एंड बहुत थोड़ा परीक्षा रे मध्ये आछी कोन हो आंसर ब्रीदिंग और हार्टबीट रेट को किए कंट्रोल करुची द आंसर इज yes medulla oblongata is the correct answer medulla oblongata 170 clear next time jiba next question identify the region एटा गोटे important question माको important mark करियो चाहूँ कहीं ना confuse जहाँ भी confuse आसियो ता important कह दूँ मु this is an important question कौन identify the region of human brain which has pneumotaxic center that alters respiratory rate by reducing the duration of inspiration तो बर्तमान क्वेश्चन पचार कि ब्रेन रो को जगह रे निमोटैक्सिक सेंटर अछि जे रेस्पिरेशन रे हेल्प करछि तो कंफ्यूजन केते कोडी आसीयो मेडुला को पंस ऊपर कंफ्यूजन आसीयो मेडुला तो रेस्पिरेशन कंट्रोल करछि बट निमोटैक्सिक सेंटर ता अछि जे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करछि निमोटैक्सिक सेंटर इज प्रेजेंट इन पंस कमेंट सेक्शन रे पंस क्वेश्चन बहुत बड़े पंस भारोली बा पंस बोली को ठीक अछि निमोटैक्सिक सेंटर एटा इंपोर्टेंट तापर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेस्पॉन्स फॉर थर्मो रेगुलेशन बॉडी रो टेंपरेचर को रेगुलेट किए करछ बहुत इजी क्वेश्चन 172 नंबर कोन दो थर्मो रेगुलेशन किए करछ यस हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस को थर्मोस्टाट ऑफ बॉडी मध्य कहउछ नेक्स्ट क्वेश्चन 174 सॉरी 173 173 जो जीवा पार्ट ऑफ ब्रेन कंसर्न्ड विथ द मस्कुलर मूवमेंट हमर बॉडी रो मस्कुलर मूवमेंट बॉडी को बैलेंस रखिया पे इक्विलिब्रियम रखिया पे मसल को मूवमेंट करिया पे की हेल्प करछि तो आंसर इज योर cerebellum is the correct answer cerebellum second largest part of the brain cerebellum जे मसल मूवमेंट हेल्प करछि इक्विलिब्रियम बॉडी को बैलेंस रखिया हेल्प करछि ओके cerebellum yes correct answers in comment section बहुत बढ़िया cerebellum चलंतु 174 को जीवा yes ये बड़े इंपोर्टेंट क्वेश्चन
Which of the following conditions will stimulate parathyroid gland to release parathyroid hormone? तो parathyroid hormone आउटे थायराइड रु गोटे हार्मोन बाहर ता ना होची TCT मन रखंतु थायरोकाल्सिटोनिन ठीक अच्छे थायराइड गोटे हार्मोन बाहर थायरोकाल्सिटोनिन पाराथायराइड गोटे हार्मोन बाहर पाराथायराइड हार्मोन तो ए दी जनकर काम कौन से कहूँ कौ कंडीशन रे आमर पाराथायराइड हार्मोन तैयारी हो कौन द्वारा आंसर कौन हम फॉल इन एक्टिव विटामिन डी लेवल फॉल इन ब्लड कैल्शियम लेवल फॉल इन ब्लड कैल्शियम ऑप्शन सी हो बोन कैल्शियम राइज इन ब्लड कैल्शियम कौन हम आंसर yes thyrocalciton increases Ca2 plus yes बर्तमान मोर कॉन्सेप्ट कहना चाहूँगी कि पाराथायराइड हार्मोन कौन करिवो ब्लड रे कैल्शियम लेवल को बढ़ेइबो तो जितेबाला ब्लड रे कैल्शियम लेवल कमी जीवो पाराथायराइड कौन करिवो ब्लड रे कैल्शियम लेवल को बढ़ेइबो जदि ऑटोमेटिकली कौन कारणवश ब्लड रे कैल्शियम लेवल बढ़ी जीवो तो थायरोकाल्सिटोनिन कौन करिवो थायराइड ग्लैंड रु बाहर सी ब्लड रो कैल्शियम लेवल को कमेइबो बट ब्लड रे जदि कैल्शियम लेवल कमी जाउची तो बढ़ेबार काम रोची पाराथायराइड तो जदि को कंडीशन पचाची तेणु जदि फॉल इन ब्लड कैल्शियम लेवल है ताले ये कौन करिवो ब्लड रे कैल्शियम लेवल को बढ़ेबो हाइपर कैल्सेमिक माने कैल्शियम लेवल को बढ़ेबार काम होची पाराथायराइड रो थायरोकाल्सिटोनिन कौन करिवो ब्लड रे कैल्शियम लेवल को कमेइबो ठीक अछि ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा which of the following 175 देखंतु which of the following hormones is responsible for both milk ejection reflex and fetal ejection reflex जेतेबेले पार्चुरेशन बा डिलीवरी ऑफ बेबी हुए सेतेबेले जो fetal ejection reflex आस्ता है बा मिल्क सिक्रेशन बेले मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स आस्ता है तो which hormone is responsible करेक्ट आंसर fetal ejection reflex रे कौन हुए यूट्रेस रो जो मस्कुलर लेयर अछि मायोमेट्रियम तार कंट्रैक्शन हुए ठीक अछि तो आंसर इज योर ऑक्सीटोसिन ये दीट जगह रिफ्लेक्स दिए मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स प्लस fetal ejection reflex मिल्क तैयारी करिया भी प्रोलैक्टिन हार्मोन बट मिल्क को इजेक्ट करिया भी जो रिफ्लेक्स आसे सेति पई रेस्पोंसिबल होची ऑक्सीटोसिन सो ऑक्सीटोसिन इज द करेक्ट आंसर अब fetal ejection reflex मध्य ऑक्सीटोसिन ओके ऑप्शन 3 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन जे टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी किछि समय पई से ग्लैंड तैयारी हिथाय व्हिच इज द टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड कॉर्पस कार्डियाकम कॉर्पस लुटियम कॉर्पस अलाटम पिनियल ग्लैंड कोन हबो 176 कोन हबो कोन करेक्ट आंसर हबो 176 ऑप्शन 2 यस दैट इज योर कॉर्पस लुटियम होची टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड हमर प्रति एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल रे ओभारी भितरे ग्राफियन फोलिकल जेतबे रप्चर की ओवुलेशन करी की ओवम दे दिए सेतबेले ग्राफियन रप्चर्ड ग्राफियन फोलिकल कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस लुटियम रो को हार्मोन सीक्रेट होता है प्रोजेस्टेरॉन ठीक अच्छे तापर जितेबाला प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट है बंद हो जाए से कॉर्पस लुटियम डिजेनरेट होगी कॉर्पस आल्बिकान हो जाए से कॉर्पस लुटियम हूँ गोटे टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड
ओके सो कर्पस लुटियम 177 को जीवा which one of the following pairs is incorrectly matched wrong match is कोटा कोन 177 कर्पस लुटियम रो प्रोजेस्टेरोन करेक्ट अछि इंसुलिन रो डायबिटीज मेलिटस होची करेक्ट अछि ग्लूकागन बीटा सेल रो बाहर छी एडा रॉन्ग अछि बीटा सेल रो इंसुलिन बाहर छी हमरो पैनक्रियाज रो आइलेट्स ऑफ लैंग्रेंज एंडोक्राइन पोर्शन डा तार अल्फा सेल रो बाहर छी ग्लूकागन बीटा सेल रो कोन बाहर छी इंसुलिन तेणु आंसर रेडी ऑप्शन कोन ग्लूकागन जी की रॉन्गली मैच हे सोमाटोस्टैटिन डा डेल्टा सेल रो बाहर तो ये ठीक अछि अल्फा सेल रू ग्लूकागन बीटा सेल रू इंसुलिन एडी बीटा सेल रू कोन दीची ग्लूकागन दीची ठीक अछि तेणु इट इज इनकरेक्टली रॉन्गली मैच्ड ओके नेक्स्ट द लास्ट पोर्शन ऑफ जूलॉजी एंड बॉटनी रो मिससेलेनियस हम प्रैक्टिस कर दबा ठीक अछि जहां रिमेनिंग टाइम अछि हम बॉटनी प्रैक्टिस कर दबा ठीक अछि रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट जल्दी जल्दी देखो रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट बहुत कम क्वेश्चन अछि रिप्रोडक्शन रो फर्स्ट क्वेश्चन 178 कोन हबो स्पर्म्स आर स्टोर्ड एंड नोरिश्ड स्पर्म रो नोरिशमेंट आउ स्टोर टेम्पोररी कोठी स्टोर हेकि रहे काउपर्स ग्लैंड एपिडिडाइमिस सेमिनिफेरस ट्यूबुल भाषा एपरेंसिया यस द आंसर इज एपिडिडाइमिस आ गोटे कथा मन रखंतु ए एपिडिडाइमिस रे ही स्पर्म निजर मोटिलिटी मूव एबिलिटी टू मूव प्राप्त करे हला middle thick layer of smooth muscle which exhibits a strong contraction during delivery of the baby uterus ro muscle layer जे contraction है कि child birth होता है endometrium myometrium epimetrium perimetrium answer is your myometrium 180 नंबर को जीवा 180 आफ्टर ओवुलेशन ग्राफियन फोलिकल बर्तमान कहली ओवुलेशन परे ग्राफियन फोलिकल कौन हो जाए कर्पस लुटियम हो जाए आ प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करे कर्पस लुटियम रीजेनरेट की कौन हम कर्पस आल्बिकान्स कर्पस लुटियम रो रीजेनरेशन नहीं कर्पस आल्बिकान्स हो ओके ये थला कंप्लीट जूलॉजी बर्तमान बॉटनी को हमें मिससेलेनियसली डिस्कस करबा नॉट चैप्टर वाइज किछि इंपोर्टेंट PYQ मु बॉटनी पे आनी बर्तमान बॉटनी रो किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करिवा ठीक अछि तो आउ 30 मिनट रे बॉटनी को डिस्कशन करिवा तो जोड़ी रहंतु बॉटनी रो किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम हम बॉटनी रो टिके अधिक क्वेश्चन आनिबा डोंट वरी ओके जूलॉजी रो बहुत गुडा क्वेश्चन पाखा पाखी केते 180 टा क्वेश्चन हे गला बॉटनी किछि क्वेश्चन डिस्कशन करिया चलंतु जोटा कि PYQ जाको लेफ्ट नो राइट साइड नंबर लिखा है राइट साइड 181 ठीक अछि 182 नंबर लिखा है तो राइट साइड नंबर जाको देखिबे हैला लेफ्ट साइड नो राइट साइड नंबर जाको देखिबे 1 लेट्स गो बॉटनी ओके चलो तो बॉटनी स्टार्ट करिया बट एटा मिससेलेनियसली हबो ओके इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ऑकर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कोटी हुए बर्तमान किसी बॉटनी कर दबा नेक्स्ट क्लास बॉटनी रो चैप्टर वाइज करबा गोटे क्लास करबा नेक्स्ट क्लास करके देखिबा ठीक अछि बॉटनी रो चैप्टर वाइज करबा गोटे मैराथन रे हेलानी बट किछि तो बॉटनी अछि ठीक अछि इंपोर्टेंट आ गोटे 40 30 टा केटा खंडे क्वेश्चन अछि 30 40 टा क्वेश्चन अछि एडा 30 मिनिट आराम से सर जीवो तो काइंडली जोड़ी के रहंतु इंपोर्टेंट PYQ जाको मु सिलेक्टेड करछि प्रीवियस रे आस्तिला तो नेक्स्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जाको बॉटनी रो ओके फर्स्ट क्वेश्चन कहतु कौ जगह आमर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होची ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोनियोजेनेसिस फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 तो आंसर हम फोटोसिस्टम 2 रे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होची 181 नेक्स्ट क्वेश्चन को चलंतु जिबा 182 को जिबा 182 कौन क्वेश्चन कहला इन प्लांट्स फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर लोकेटेड इन व्हिच पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट रो को जगह रे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट माने क्लोरोफिल जैंथोफिल कैरोटिनॉइड सब थाए थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन स्ट्रोमा आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन
182 कहतु 182 चलछि 182 photosynthetic pigments जाक थाए yes that is your thylakoid membrane correct next question को चलंतु 183 in plants which of the following scleroid is star shaped scleroid माने जो अछंती स्क्लेरन काइमारो टिश्यू जाको हला सिंपल परमानेंट टिश्यू तो स्टार शेप्ड तो स्टार पाई द वर्ड कोन कोन हबो ओस्टेरो नाही ओस्टेरो हबो ने एस्टेरो हबो एस्टेरो ए वर्ड एस्टेरो जो अछि द एस्टेरो वर्ड इज यूज्ड फॉर स्टार shaped तो एस्टेरोस्क्लेरोइड इज स्टार शेप्ड स्क्लेरोइड ओके एस्टेरो एस्टेरियस स्टारफिश ठीक अछि तो एस्टेरो वर्ड इज यूज्ड फॉर स्टार स्प्रे ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन 184 को जिबा देखंतु 184 कोंदु स्प्रे ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन इंड्यूसेस आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स फ्रूट राइपनिंग पई को फाइटो हार्मोन को यूज करा जाए एब्सिसिक एसिड एथिलीन साइटोकाइनिन ऑक्सिन कौन हबो बी ऑप्शन कहले yes ethylene ethylene is the correct answer which is used for ripening of fruit ethylene ना मन रखो तो gaseous phytohormone टा ठीक है जो अन्य माने सो liquid solvent आकार रहबे but ethylene is the gaseous phytohormone next question को जिबा 185 को जिबा 185 तो बहुत थोड़ा आसलानी वेरी इजी क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइटोहॉर्मोन्स इज आल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन तो प्लांट पाई स्ट्रेस कोन जदि किछि मरुडी पड़ी गला वाटर स्कार्सिटी से समय रे को हार्मोन को फाइटोहॉर्मोन प्लांट को टॉलरेट करिवार सिकोछि ठीक अछि ताको प्रोटेक्ट करछि तो आंसर इज एबीए दैट इज योर एब्सिसिक एसिड ठीक अछि एब्सिसिक एसिड इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन 186 को जिबा 186 इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम आंथर आंथर को जो देखिबा आंथर रो पोलन चैम्बर चारिडा रहइबो पोलन चैम्बर बा माइक्रोस्पोरेंजियम सेट पे आंथर जो टेट्रास्पोरेंजिएट से माइक्रोस्पोरेंजियम रो बहुत गुडे वॉल लेयर अच्छे एपिडर्मिस अच्छी ठीक अच्छे एंडोथेसियम सब वॉल मिडिल लेयर्स अच्छी तो पूरा इनर मोस्ट लेयर टा हमें कौन कहबा पूरा इनर मोस्ट लेयर टा कहबा यस टैपिटम टैपिटम इज द इनर मोस्ट लेयर मोर इंपोर्टेंट फैक्ट लगी देजी ए टैपिटम कौन करूची नरिशमेंट दोची कागु दोची डेवलपिंग पोलन ग्रेन मानकु एडे भी परीक्षा रे पचरियो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टैपिटम इट गिव्स नरिशमेंट ये पोलन ग्रेन मानकु नरिशमेंट खाद्य दोची नेक्स्ट प्लांट डिजीज रो असला the organism which causes late blight disease late blight of potato को फंगस द्वारा होची कोंदो 187 आंसर डी फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस पूरा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन परीक्षा आसला आराम से लिखिबे फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस इज द causative agent of late blight disease मोर बॉटनी रो मैराथन वीडियो टी देखि दियंतु सेतरे मु डिटेल्स बहुत गुड़ाई डिजीज आउ तार कॉजेटिव एजेंट जगह पूरा एनालिसिस करिछि आपण मानक मिली जिवो एई सीईआई यूट्यूब चैनल रो लाइव प्लेलिस्ट रे 188 को जिबा 188 कोंदु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टॉक्सिन इज फाउंड इन प्लांट्स इन्फेक्टेड राइस ब्लास्ट डिजीज फर्स्ट 189 टिके देखि दियंतु 189 टा टिके देखि देबा 189 को देखि दियंतु काइंडली 189 कौन कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैजुअल ऑर्गेनिज्म फॉर राइस ब्लास्ट डिजीज रो किए कैजुअल ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया फंगस पैरासाइट वायरस ता आंसर हबो फंगस राइस ब्लास्ट डिजीज फंगस द्वारा होची को फंगस मोइड लिखि देछि माग्ना परथे ओराइजा बा पायरिकुलारिया ओराइजा तार दुईटा ना अच्छी नोट डाउन कर दियंतु राइस ब्लास्ट डिजीज टा फंगस द्वारा होची को फंगस द्वारा होची पायरिकुलारिया ओराइजा बा
मैग्ना पोर्थोराइजा। तो 188 क्वेश्चन को चलतु बर्तमान सी कौन कहला राइस ब्लास्ट डिजीज रे को टॉक्सिन तैयारी होची। तो टॉक्सिन रो ना हबो कोन देखंतु पायरिकुलारिया फंगस रो ना तो कोन हबो फ्यूजिकोसिन पायरिकुलारिन सेराटोल्यूमिन जिनियोल। तो आंसर इजीली आपण ऑप्शन चूज कर देबे पायरिकुलारिन। ठीक अछि आ गोटे अछि कौमारिन भी अछि बट पायरिकुलारिन ऑप्शन रु करेक्ट हो। ठीक अछि 188 189 क्लियर ओके बहुत बढ़िया। चलंतु नेक्स्ट जीवा 190 हु एमंग द फॉलोइंग डिस्कवर जिबरलिन हार्मोन। जिबरलिन हार्मोन को किए डिस्कवर करथिले द जापानीज साइंटिस्ट ई कुरोसावा। ठीक अछि एफडब्ल्यू वेंट होची ऑक्सिजन बट एफडब्ल्यू वेंट ऑक्सिजन को आइसोलेट करथिले डार्विन कौन करथिले ऑक्सिजन को डिस्कवर करथिले मन रखंतु एफडब्ल्यू वेंट आइसोलेट करथिले ऑक्सिजन को एक्सपेरिमेंटली पूरा आइसोलेट करथिले बट जिबरलिन हबो ई कुरोसावा को केमे डिस्कवर करथिले फुलिस सीडलिंग डिजीज होतला राइस राइस मानकू गोटे फंगस जिबरेला फ्यूजिकोरी ता अनुसार से ता ना देले जिबरलिन। 191 देखिबा 191 कोंतो ग्यूटेशन कोन हबो ग्यूटेशन अकर्स थ्रू स्पेशलाइज्ड पोर ग्यूटेशन सीब सेल वेसल कंपानियन सेल हाइडाथोड कोन हबो आंसर ग्यूटेशन 191 रो डी हाइडाथोड रे ग्यूटेशन हबो वाटर जाक ड्रॉपलेट आकार बाहरिबो ओके हाइडाथोड। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। 192 को जीवा 192 कोंदु इन प्लांट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू इज डिवाइडेड टू 3 टाइप्स 2 टाइप्स सिंपल परमानेंट कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल रे पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा स्क्लेरेन्काइमा कॉम्प्लेक्स रे जाइलम फ्लोएम। तो इजीली आपण बाछि परिबे देखंतु पैरेन्काइमा सिंपल स्क्लेरेन्काइमा कोलेनकाइमा सिंपल। तो कौन है आंसर 192 डी फ्लोएम इज द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। 193 को जीवा इन ए मैच्योर एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो sac द सेल्स प्रेजेंट एट द चालाजाल एंड। जदि एम्ब्रियो sac को देखिबा एम्ब्रियो sac को जो देखिबा तार दीटा एंड रहबो गोटे होची चालाजाल एंड गोटे एंड कोन हम कहबा चालाजाल एंड आ गोटे हबो माइक्रोपाइलर एंड। तो चालाजाल एंड रे जो तीनटा सेल अछंती ताको हम कोन कहबा एंटीपोडल्स। ठीक अछि माइक्रोपाइलर जे अछि ताको कोन कहबा दीटा सिनर्जिड रहबो आ गोटे कोन रहबो एक्स सेल रहबो ओके। तो आर आंसर हबो एंटीपोडल्स ओके। वन 194 को जीवा when alleles of two contrasting character present together one of the character एक सब previous year रे पढ़ी जाई छी खला opposite जब चला जा ओके। तो one of the character expressed and other remains hidden this is the law of कौन हो गोटे character express करछ आ गोटे character express कर hidden रहुछ law of dominance। मेंडल कर मोनो हाइब्रिड क्रॉस रो कंट्रीब्यूशन लॉ ऑफ डोमिनेंस ओके 194 डोमिनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन बुझिबा ओके 195 को जो चलंदु A typical angiospermic embryo sac at maturity consists of embryo sac रे केतरा सेल अछि केतरा न्यूक्लियस अछि बारंबार रिपीट हलानी क्वेश्चन डा कमेंट सेक्शन कोन जल्दी वन 195 कौन हम 7 सेल 8 nucleus yes 40C
7 सेल 8 न्यूक्लियस इजिली आपण एग्जाम रे करि परिबे बर्तमान कहला हु एमंग द नेक्स्ट क्वेश्चन 196 हु एमंग द फॉलोइंग आइसोलेटेड ऑक्सीजन फ्रॉम टिप्स ऑफ द कोलेक्टिव्स ऑफ ओट सीडलिंग तो मु कोन कहली ऑक्सीजन को आइसोलेट करथिले एफडब्ल्यू वेंट ऑलरेडी डिस्कस करथिली मु 196 रो बी जदि पचारला साइटोकाइन को की डिस्कवर करिछि ताला आंसर हबो एफ स्कूग एंड मिलर मन रखंतु एफ स्कूग मिलर होछि साइटोकाइन कुरोसवा जिबरलिन ठीक अछि गैसियस हार्मोन पचारला नेक्स्ट क्वेश्चन 197 गैसियस हार्मोन कोन एथिलीन राइपनिंग रे हेल्प करे 197 ठीक अछि 197 गैसियस हार्मोन एथिलीन help in artificial ripening of fruits okay next jiba 198 को 198 देखंतु who among the following scientists first discovered the double fertilization and triple fusion angiosperm मानकर यूनिक फीचर डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन या को किए डिस्कवर करथले कोन जल्दी 198 क्वेश्चन 198 डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन सी हबनी डी हबो डी नावास्चिन एंड ग्विग्नार्ड मन रखंतु ए दिरा ना फैक्ट बेस्ड मेमोराइज क्वेश्चन नावास्चिन एंड ग्विग्नार्ड डिस्कवर्ड योर डबल फर्टिलाइजेशन okay answer D is correct हाँ ये सब क्वेश्चन कमेंट सेक्शन रे if I am joining you can I got all these questions again yes ए क्वेश्चन सब मिल जिवो बर्तमान जो लाइव सेशन कंप्लीट हे जिवो CEI चैनल रो YouTube चैनल रो आपण लाइव प्लेलिस्ट को गले ये पूरा रिकॉर्डेड वीडियो रहइबो देखि परिबे एंड टेलीग्राम चैनल सी क्रिएटिव एजुकेशनल आइडिया रो टेलीग्राम चैनल रे ए पीडीएफ जहाँ मुझे बनई पीपीटी आपको अवेलेबल हो किसी टाइम पर नेक्स्ट डे भी हो पारे ठीक अच्छे कि भिडियोटा रीडियो आदर देखीदे किंतु जो मैंने मैराथन वीडियो देखी ना जूलॉजी और बॉटनी कंप्लीट सिलेबस ताको कंप्लीट करूँ देन ये एमसीक्यू वीडियो को देखो ठीक अच्छे नेक्स्ट कहतु 199 को कहतु 199 टेलीग्राम चैनल रे आपण क्रिएटिव एजुकेशनल आइडिया सर्च करंतु पळे आसीबो जॉइन करि परिबे आ वीडियोटा आपण एटी देखि परिबे लाइव प्लेलिस्ट रे देखि परिबे ठीक अछि YouTube ए CEI चैनल रो लाइव प्लेलिस्ट रे वीडियोटा रेकॉर्ड हेकि रहिबो ठीक अछि 12टा पर जेतला हमर लाइव सेशन कंप्लीट हो ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म तो एंजियोस्पर्म रो मेल गैमेटोफाइट काहा कहबा पोलर न्यूक्लियाई सिनर्जिड माइक्रोस्पोर मेगास्पोर तो मेल गैमेटोफाइट यदि आसिला तो माइक्रोस्पोर इज द करेक्ट माइक्रो वर्ड इज रिलेटेड विथ मेल सो माइक्रोस्पोर हबो माइक्रोस्पोर और यदि ऑप्शन था पोलन ग्रेन ताले मध्य ठीक आंसर इज और कोन हेता पोलन ग्रेन को मध्य माइक्रोस्पोर ही डेवलप हेकी कोन होची पोलन ग्रेन होची तो पोलन ग्रेन मध्य हबो कोन करेक्ट आंसर फॉर मेल गैमेटोफाइट ठीक अछि मेल गैमेटोफाइट माने कोन जा भितरे मेल गैमेटा रहूची मेल गैमेट का भितर रहूची पोलन ग्रेन भितर बा माइक्रोस्पोर भितर तन ताको मेल गैमेटोफाइट को हला आ गोटे कथा मन रख नोट डाउन कर दियंतु फीमेल गैमेटोफाइट का को हबो एम्ब्रियो सैक को हबो काई एम्ब्रियो सैक भितरे फीमेल गैमेटा रहबो तेनो कोन को हबो फीमेल गैमेटोफाइट को हबो एम्ब्रियो सैक को क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए okay so number 200 in photosystem 1 the reaction center chlorophyll A has an absorption peak photosystem 1 रे chlorophyll A रो reaction जो reaction center टा को केति की नैनोमीटर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करि परिबो एंड PS2 मध्य मु कहि दैछि कोन अब आंसर PS1 कहला PS1 भीतर थिबा रिएक्शन सेंटर रे क्लोरोफिल ए केति की नैनोमीटर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करिवो तो PS1 हबो केते यस द आंसर बी दैट इज योर 700 नैनोमीटर 200 नंबर 700 नैनोमीटर बहुत बढ़िया PS2 रो डाटा मु दे दीजी 680 देखि दियो PS2 होजी 680 नैनोमीटर PS1 पचाले 700 नैनोमीटर हमर फोटो सिस्टम भितरे गोटे रिएक्शन सेंटर रहबो
आउ ता चारिपटे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स रहिबो ठीक अछि अदर एसोरी पिगमेंट तो रिएक्शन सेंटर PS1 रो 700 नैनोमीटर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करिवो 700 नैनोमीटर PS2 रो 680 नैनोमीटर नेक्स्ट आउ मात्र 39 टा खंडे क्वेश्चन अछि टिके जोडी रुवंतु 15 मिनट रे हमें कंप्लीट करबा और 39 टा क्वेश्चन टोटल इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड तो बहुत हेल्पफुल हम मात्र 15 मिनट रे बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जिवो ओके 201 को जिबा Which of the following is a natural oxygen produced by plant? Indole, butyric acid, cytokinin, ethylene, abscisic acid. तो कौन होगा आंसर 201 201 कौन होगा नेचुरल ऑक्सीजन आंसर हम इंडोल ब्यूट्रिक एसिड बा जदि कहि थांता और जदि कहि थांता और कौन कहि थांता IAA एटा तो IBA कहला IAA मध्ये हबो इंडोल एसिटिक एसिड मध्ये ही परियो इंडोल एसिटिक एसिड आल्सो नेचुरल ऑक्सीजन किंतु नाफ्थालिक एसिडिक एसिड बा NAA 2,4-D एबन सब आर्टिफिशियल IAA IBA इंडोल ब्यूट्रिक एसिड ए सब नेचुरल ऑक्सीजन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 202 plants that require a specific day length for flowering to be triggered are called किछि प्लांट अछंती किछि फ्लावरिंग पई किछि डे लेंथ लाइट रो ड्यूरेशन ऊपर डिपेंड करंती सेही फेनोमेनन को कोन कहउछ 202 फोटोपीरियडिज्म थर्मोपीरियडिज्म वर्नालाइजेशन डॉर्मेंसी तो 202 रा करेक्ट आंसर हबो फोटोपीरियडिज्म थर्मोपीरियडिज्म माने टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करिवे वर्नालाइजेशन माने कोन लो टेम्परेचर रे फ्लावरिंग करिवे एक्सपोजर ऑफ द प्लांट्स टू लो टेम्परेचर फॉर फ्लावरिंग द फेनोमेनन इज कॉल्ड वर्नालाइजेशन ओके 203 को जिबा suppression of lateral buds by the apex is regulated by which plant growth regulator हमर प्लांट मानकर एपेक्स टा जदि बड़ी बड़ी जीव तो तार लेटरल बॉड बा लेटरल साइड रे ब्रांच आउ डेवलप होबनी ए फेनोमेनन कोन को जानचंती एपिकल डोमिनेंस बोली को ए फेनोमेनन कोन को होची एपिकल डोमिनेंस तो ए एपिकल डोमिनेंस पई की रेस्पोंसिबल कोन होबा आंसर 203 रो आंसर हबो ऑक्सीजन बट ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन 203 रो आंसर ऑक्सीजन हबो ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगी एपेक्स कोन होची ग्रो होई जिवो लेटरल बॉड मानकर सप्रेस ही जिवे तो ऑक्सीजन तेडी ऑक्सीजन की अछि IA होची उडा ऑक्सीजन तो आंसर हबो ऑप्शन ए ऑक्सीजन द्वारा एपिकल डोमिनेंस हे थाए लेटरल बॉड रो ग्रोथ सप्रेस हे थाए ओके तो IA इज द ऑक्सीजन तो 203 रो ऑक्सीजन 204 को जिबा which law states that two alleles of a gene separate during gamete formation so that male gamete sperm female gamete egg carries only one allele of each pair को law रे हमें जानी पारुचे कि gamete formation बेले allele बा factor जाको separate ही जाउछ 204 separate रो law कोन segregation तो आर आंसर कोन हो law of segregation ओके ऑप्शन बी इज करेक्ट ओके 205 को जिबा को रुबिस्को इज इन्वॉल्वड इन द फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट इट एक्ट्स एज रुबिस्को कोन हार्मोन एंजाइम इनहिबिटर सबस्ट्रेट रुबिस्को राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम एवडे एंजाइम जे कोन करछि RUBP सहित कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करछि RUBP प्लस कार्बन डाइऑक्साइड
आरयूबीपी रे आरयूबीपी 5 कार्बन एक्सेप्टर सेट्री कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करछि केल्विन साइकिल बा C3 साइकिल सी कैटलाइज्ड बाय एन एंजाइम रूबिस्को बट यस मोस्ट एबंडेंट एंजाइम हमर पूरा बायोस्फीयर रे सबुठु अधिक एंजाइम सबुठु अधिक प्रोटीन कोडा तो रूबिस्को जदि पचला एनिमल वर्ल्ड रे सबुठु अधिक प्रोटीन ताले कोलाजन हबो आंसर बट पूरा बायोस्फीयर रे मोस्ट एबंडेंट एंजाइम मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन होछि रूबिस्को ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा स्टोमाटाइन सी 206 क्वेश्चन स्टोमाटाइन CAM क्रैसुलासियन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट्स आर क्लोज्ड ड्यूरिंग व्हिच पीरियड हमर जो CAM प्लांट एटार ना दिया हला क्रैसुलासी फैमिली को बिलोंग करछन्ती बोली एमाने डेजर्ट मरुभूमि रे बा लो वाटर कंडीशन रे रहबे तो एमाने फोटोसिंथेसिस तो करिवे कि एमाने को स्टोमाटा दिन बेला क्लोज हो जिवो राति बेला सी स्टोमाटा खोलिबे आ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करिवे कहीं दिन बेला जब ओपन करेंगे तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस रे अधिक वाटर लॉस होबार चांस अच्छे तेणु एमानकर डे टाइम रे स्टोमाटा क्लोज हो जाए ओके CAM प्लांट ठीक अच्छे नेक्स्ट जीवा आम नंबर 11 को नंबर 11 चलतु हाउ मेनी टन्स ऑफ द ओके ओके ठीक है 207 देखु How many tons of the Kelvin or C3 cycle are required for synthesis of one molecule of hexose sugar? गोटे हेक्सोस सुगर माने 6टा कार्बन ग्लूकोज तैयारी करिया पे केतेटा टर्न केल्विन साइकिल दरकार गोटे टर्न रे गोटे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होची माने गोटे कार्बन फिक्स होची तो 6 थर केल्विन साइकिल ले 6टा कार्बन डाइऑक्साइड रो 6टा कार्बन फिक्स हो तो 6 टन हो तो आंसर कोन हो 6 टन तो गोटे ग्लूकोज बा गोटे हेक्सोस सुगर तैयारी करिया पे 6 टाइम्स केल्विन साइकिल हेबाकू पड़ो C3 साइकिल हेबाकू पड़ो 208 नंबर को जीवा ओके बहुत बढ़िया आपण जोड़ी के अछंती बहुत बढ़िया लागुची आउ टिके टाइम 208 नंबर को देखंतु क्वेश्चन को सॉल्व करिया ट्राई करंतु इन व्हिच साइकिल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन विथ 5 कार्बन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल एंड द प्रोडक्ट्स आर कन्वर्टेड टू सुगर तो एक्सेप्टर को धरिके आपण करिवे मु C3 की C4 कन्वर्ट हबो कार्बन डाइऑक्साइड टा आरयूबीपी सहित मिसुची C3 साइकिल रे कार्बन डाइऑक्साइड टा पीईपी सहित मिसुची C4 साइकिल रे आरयूबीपी होची गोटे एक्सेप्टर C3 साइकिल रे पीईपी फॉस्फोइनोल पाइरुवेट होची C4 साइकिल रे एक्सेप्टर आरयूबीपी होची 5 कार्बन कंपाउंड C3 साइकिल पीईपी होची पीईपी कोन 3 कार्बन कंपाउंड कार C4 साइकिल रे सेठी कार्बन मिसी की ऑक्साइड एसिडिक तयारी हबो जोड़ा 4 कार्बन कंपाउंड से C4 को तो 5 कार्बन एक्सेप्टर पचारला कौन हो आंसर 208 5 कार्बन किए आरयूबीपी होची 5 कार्बन ता सहित गोटे कार्बन डाइऑक्साइड मिसिबो ये हबो C3 साइकिल रे सेटु दीटा 3 PGA तयारी हबो जार 3टा मॉलिक्यूल ऑफ 3टा कार्बन एटम कंपाउंड आरयूबीपी सहित कार्बन डाइऑक्साइड मिसिले कौन तैयारी हो 3 PGA कौन तो फास्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C3 साइकिल ठीक अच्छे तेणु मु आपको जहाँ कहूँ टे मन देखिए शुणी दिंतु मोर मैराथन वीडियो रे ऑलरेडी तो डिस्क्राइब कर संक्षेप में कहूँ C3 साइकिल फास्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3टा कार्बन अच्छे से C3 साइकिल फास्ट स्टेबल प्रोडक्ट किए 3 PGA तेणु C3 साइकिल ओके C4 साइकिल फास्ट स्टेबल प्रोडक्ट किए ऑक्साइड एसिड तार 4टा कार्बन अच्छे से C4 साइकिल क्लियर बर्तमान कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट जी कर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल तो C3 साइकिल रे एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होची आरयूबीपी जी निजे 5 कार्बन C4 साइकिल रे एक्सेप्टर होची पीईपी फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जी निजे 3 कार्बन तो एक्सेप्टर को मन रखंतु आ फास्ट स्टेबल प्रोडक्ट को मन रखंतु C3 और C4 जहाँ कहली आपण नले नेक्स्ट वीडियो को भल से देखिदेबे ओके 208 तेणु 5 कार्बन एक्सेप्टर कहला तो कौन हम आंसर C3 साइकिल हम चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 209 को 209 को जीवा Rust and smut, both diseases of plant are caused by pathogenic fungi belonging to rust and smut. Rust puccinia, smut ustilago. Already discuss करची कौन हवा आंसर Basidiomycetes. Water और CO2.
मिसिको वाटर और CO2 मिसुची यस यस HCO3 ठीक ठीक हाँ कमेंट सेक्शन में देखुची वाटर CO2 मिस HCO3 हाँ कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करिया वाटर तो फोटोलाइसिस रे यूज हो जाउची ठीक अछि ओके C3 साइकिल रे कार्बन डाइऑक्साइड टा डायरेक्टली ऐड हबो RUP सहित 5 कार्बन कंपाउंड C4 रे कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हबो PEP सहित 3 कार्बन कंपाउंड स्टेबल प्रोडक्ट C3 रे हबो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन सेति में C3 C4 रे तयारी हबो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड सेति में C4 CAM क्या CAM मध्ये C4 साइकिल रे हबो C4 साइकिल जेमिति पाथवे CAM साइकिल मध्ये सेही पाथवे काइंडली जदि डाउट रोची मोर मैराथन वीडियो रे पूरा एनालिसिस करची प्रॉपर्ली आपण जेकी वीडियोटा देखि दियंतु बा पीपीटी रे पढ दियंतु ओके तो रस्ट और स्मॉट पोक्सिनिया रस्ट स्कुस्टिलागो स्मॉट बेसिडियोमाइसिटिस क्लास ओके 210 को जिबा 210 इन व्हिच प्लांट ग्रुप गैमेटोफाइट इज मेन प्लांट बॉडी होची गैमेटोफाइट फ्री लिविंग गैमेटोफाइट ओके कौन हम ब्रायोफाइट्स फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स स्पोरोफाइट होची स्पोरोफाइट डिपेंडेंट ही रहइबो ओके फ्री लिविंग गैमेटोफाइट होची ब्रायोफाइट मानकर ओके नेक्स्ट 211 210 रहे ठीक अछि 211 in tissue culture explants are derived from which part of the plant for large scale production of virus free stock tissue culture रे हमर स्टॉक और स्कियन को मिसा जाउछ मिसै कि नुवा प्लांट करा हो तो टिश्यू कल्चर पे जो एक्सप्लांट प्लांट रो पार्ट जाको टिश्यू कल्चर यूज करा एक्सप्लांट से एक्सप्लांटेड प्लांट रो को जगह रो बाहर करा एपिकल मेरिस्टेम लैटरल मेरिस्टेम ना इंटरकलरी मेरिस्टेम ना एम्ब्रियो साइक कोन हो आंसर व्हाट द आंसर 211 यस करेक्ट आंसर आसला हरी एपिकल मेरिस्टेम रो जदी हमें एक्सप्लांट आने की टिश्यू कल्चर करिबा ताले सेठी वायरस रहइबो नाही ठीक अछि तो आंसर इज एपिकल मेरिस्टेम ओके नेक्स्ट जिबा 212 को pollen grains are generally spherical and has a prominent two layered wall okay pollen grain मानकर दीडा लेयर अछि आउटर और इनर आउटर लेयर को कोन को होछि एक्साइन एंटाइन जर्मपोर टैपिटम तो आंथेर रो ठीक अछि टैपिटम पोलन ग्रेन संपर्क नै आंथेर जो बे कहली पोलन चेंबर बा माइक्रोस्पोरेंजियम आंथेर रो तार इनर लेयर तो टैपिटम को जे कि पोलन ग्रेन खाया दोछ पोलन ग्रेन रो दीडा लेयर मन रखंदो एक्साइन और एंटाइन इनर होछि एंटाइन एक्साइन होछि आउटर लेयर तो आउटर लेयर एक्साइन मन रखंदो एक्साइन बहुत हार्ड एक्साइन रे गोटे केमिकल रहथाय सब बहुत केमिकली रेजिस्टेंट गोटे केमिकल गोटे हार्ड केमिकल थाए से पोलन ग्रेन जाक बहुत दिन पर्यंत प्रिजर्व होकर रही है तार ना हूँ स्पोरोपोलेनिन हार्डेस्ट केमिकल एवर नोन स्पोरोपोलेनिन जी पोलन ग्रेन रो आउटर लेयर एक्साइन रे थाए स्पोरोपोलेनिन ठीक अच्छे पोलन ग्रेन को लॉन्ग टाइम पर्यंत प्रिजर्व होकर रही हेल्प करे स्पोरोपोलेनिन ठीक अच्छे एक्साइन रे थाए ओके नेक्स्ट चलन जीवा 213 213 कौन स्पोरोपोलेनिन ओके 213 देखो which term is used in grafting for the rooted shoot of one plant ग्राफ्टिंग रे कौन करा जाए गोटे गछर रूट पार्ट ला निया जाए आ गोटे एरियल पार्ट ला दीटा गछ को मिक्स करके हाइब्रिड प्लांट तैयारी करा जाए ठीक अछि तो रूटेड शूट रो ना कोन माने जे माटी भीतर जे पोती की थियो रूटेड शूट एरियल पार्ट टा को स्कियन को होची रूटेड शूट को कोन को होची स्टॉक को होची स्टॉक ऊपर स्कियन लागिवो मिसी की हबो हाइब्रिड प्लांट ग्राफ्ट तो आंसर कोन हबो रूटेड शूट कहि माने शूट टा रूट भीतर अछि रूट अच्छे सॉइल भीतर पोती की अच्छी तो स्टॉक
ऊपर जो एरियल पार्ट एटा बांधी कि लागिवो दैट इज नोन एज स्टियर ओके एरियल पार्ट नेक्स्ट जिबा 214 213 कंप्लीट 214 को जिबा yes very important question and it is also a PYQ previous year question in root a cup like region of passive cells lying between root cap and active root meristem is termed as root meristem और root cap भितर जो passive cell मान रहउछन ता कोन को आउछ रिब्लेम क्वेश्चन सेंटर कैलिप्ट्रोजन प्लूरम आवर आंसर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन मन रखंतु कमेंट सेक्शन रे पलेसलानी 214 आंसर बी क्वेश्चन सेंटर ओके 214 बी नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा यस इट इज आल्सो एन इंपोर्टेंट क्वेश्चन टाइलोजेस आर एन आउटग्रोथ ऑफ पैरेन्काइमा सेल व्हिच ब्लॉक द फ्लो विथ द हेल्प ऑफ व्हिच वास्कुलर टिश्यू वाटर कंडक्शन को बंद कर दिए ब्लॉक कर दिए टाइलोज तो ये को कॉम्प्लेक्स टिश्यू बा को वास्कुलर टिश्यू देखा जाए जाइलम वेसल सिप ट्यूब फ्लोएम पैरेन्काइमा कंपानियन सेल टाइलोज कोड देखा जाए जे कि वाटर कंडक्शन को ब्लॉक कर दिए 215 कौन आंसर हम टाइलोज बहुत इंपोर्टेंट PYQ गोटे टाइलोज भास्कुलर बंडल रे देखा जाए थाए आ जे कि वाटर फ्लो को बंद कर दी यस आंसर आसला रे कमेंट सेक्शन रे बहुत बढ़िया यस वेसल जाइलम वेसल ठीक अछि जाइलम वेसल रे टाइलोज देखा जाए थे बैलून लाइक स्ट्रक्चर टाइलोज ओके व्हिच प्रिवेंट द फ्लो ऑफ वाटर ओके ओके कैम्बियम रिलेटेड क्वेश्चन कैम्बियम दैट arises within the bundles of primary vascular tissue of the stem vascular tissue भितर तयारी हबो जदी दीटा vascular tissue भितर तयारी हबो ताल ता ना लगा within the vascular tissue within the जदी vascular tissue कहला ताले से जो इंट्राफासिकुलर vascular tissue between दीटा vascular tissue भितर जदी तयारी हला ताले हबो इंटरफासिकुलर कैम्बियम सेही भास्कुलर बंडल भितर ही कैम्बियम तयारी हिची विथ इन ताले हबो इंट्राफासिकुलर बिटवीन भास्कुलर बंडल्स जदी कहि थांदा ताले हितंदा इंटरफासिकुलर ओके 216 रो इटी 8 ऑप्शन ठीक हो बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन को चलन जिबा 217 which plant growth regulator is responsible for cell division पाई के रेस्पोंसिबल 217 सेल डिवीजन रे साइटोकाइनेसिस को अछि के रेस्पोंसिबल हो साइटोकाइनेन्स आर रेस्पोंसिबल ओके साइटोकाइनेन आर रेस्पोंसिबल फॉर सेल डिवीजन नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा 217 218 कोंदु क्रांज एनाटॉमी इज ए स्पेशल फीचर इन व्हिच प्लांट क्रांज एनाटॉमी कौन हम 218 कहतु क्रांज एनाटॉमी हम C4 प्लांट क्रांज एनाटॉमी रे कौन ना बाहर गोटे रिंग भली सेल रहिबो भितरे किछि सेल रहिबो बाहर को सेल रहिबो मेजोफिल सेल मन रखो बाहर के रहिबो मेजोफिल सेल रिंग ही रहिबो सेल माने सजै के रहबे सेही रिंग भितरे के रहिबो बंडल शीथ सेल अभी एनाटॉमी को कहौ छी क्रांज एनाटॉमी ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ C4 प्लांट ओके नेक्स्ट 219 को जिबा which of the following is an example of C3 plant रो की एग्जांपल मेज सुगर केन तो C4 हबो मन रखंदो मेज और सुगर केन ये C4 ओके ऑर्किड मध्य C4 तो आंसर हम स्पिनाच होची C3 मन रख दियंतु ओके स्पिनाच C3 प्लांट 219 220 को जिबा with respect to photosynthesis what is the full form of the acronym CAM
एबे ही डिस्कशन कली CAM क्रासुलासियन एसिड मेटाबॉलिज्म ओके CAM प्लांट क्रासुलासी फैमिली क्रासुलासियन एसिड मेटाबॉलिज्म नेक्स्ट CAM सरला 221 को जीवा What term used for the triploid nucleus formed as a result of double fertilization or triple fusion? Double fertilization रे female gamete सहित male gamete मिसिकी egg sorry zygote हबो zygote embryo हबो आउ जो सेंटर रे जो दीटा न्यूक्लियस थिला पोलर न्यूक्लियस ता सहित मेल गैमेट तो तीनटा न्यूक्लियस मिसिबो ताको कोन कहउछि ट्रिपल फ्यूजन तो सेठु कोन बाहरिबो अज रिजल्ट डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन एम्ब्रियो साक एंडोस्पर्म ओव्यूल पॉलिनेशन 221 कोन हबो 221 रो आंसर हबो यस एंडोस्पर्म हबो आंसर डबल फर्टिलाइजेशन बा ट्रिपल फ्यूजन रे एंडोस्पर्म तयारी होछ ओके द एंडोस्पर्म जी की नरिशमेंट दोछि डेवलपिंग एम्ब्रियो को ओके ठीक अछि 200 सॉरी केते 221 सरला हमरो यस 222 को जीवा चलंतु इन a leaf each stomata consists of a pore surrounded pore माने कोन pore surrounded by kidney shaped dumbbell shaped structure कोन त कहउछ स्टोमाटा को स्टोमाटल पोर को जे तयारी करछ जो सेल त कोन कहउछ 222 जल्दी कोन 222 रा आंसर कोन हबो स्टोमाटा को तयारी करछि गार्ड सेल सब्सिडियरी सेल एपिडर्मल सेल मेसोफिल सेल करेक्ट आंसर इज यस गार्ड सेल 222 रो ए ऑप्शन गार्ड सेल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा गार्ड सेल है 223 देखो व्हिच इज नॉट ए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट किए नुह कैरोटीन फाइकोबिलिन जैंथोफिल लामिनारिन कौन हम कैरोटीन फाइकोबिलिन जैंथोफिल ए सब तो आमर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ठीक अच्छे लामिनारिन नुह लामिनारिन इज नॉट ए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इट इज ए स्टोर्ड फूड इन ब्राउन आल्जी मानकर स्टोर्ड फूड लामिनारिन और मानिटल ठीक अच्छे तो लामिनारिन स्टोर फूड ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नुह बाकी तीनटा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट तो ऑप्शन डी इज करेक्ट 223 रो डी लामिनारिन एंड मानिटोल ब्राउन आल्जी फियोफाइसी मानकर स्टोर्ड फूड 224 कहतु ट्रैकियोफाइटा इंक्लूड्स को प्लांट ग्रुप मानकू आमे ट्रैकियोफाइटा कलेक्टिवली कहि परिबा ट्रैकियोफाइटा माने जो मानकर भास्कुलर सिस्टम अछि तो का कहबा ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म ऑप्शन डी रखला टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म कौन हबो 224 ट्रैकियोफाइटा तो ट्रैकियो यस ऑप्शन डी टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म ये समस्त कौन कहउची ट्रैकियोफाइटा बिकॉज दे कंटेन्स vascular tissues for conduction of water okay next 225 को जीवा which of the following algae used by space travelers as food supplement space traveler माने को फूड को निजर फूड सप्लीमेंट रूपे यूज करछन को algae को ग्रासिलेरिया जेलिडियम भल्बक्स यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगेरा कैल्प स्पिरुलिना क्लोरेला 225 कौन हम जल्दी कहतु कमेंट सेक्शन रे 225 कौन हम ना ना सी हम नहीं आंसर हम यस डी ऑप्शन इज करेक्ट स्पिरुलिना एंड क्लोरेला सिंगल सेल प्रोटीन यही आल्जी मान को यूज कर स्पेस ट्रैवलर माने फॉर फूड सप्लीमेंट स्पिरुलिना एंड क्लोरेला ओके ऑप्शन डी 225 नेक्स्ट 226 को जीवा फ्लोरिडियन स्टार्च इज फाउंड इन फ्लोरिडियन स्टार्च होची कुछ रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ हमर आल्जी तीन प्रकार
ग्रीन आल्जी क्लोरोफाइसी, ब्राउन आल्जी फिओफाइसी, रेड आल्जी रोडोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी होची ग्रीन आल्जी एमानकर फूड होची स्टार्च। फिओफाइस तो एबे मु कहली लामिनारिन बा लामिनार आउ केत आउ 229 सॉरी 239 मान 239 टा क्वेश्चन अछि। ठीक अछि आ मात्र 13 टा क्वेश्चन अछि। ओके आ 13 टा क्वेश्चन रे सर जीवो। तो फिओफाइसी कोन लामिनारिन मानिटल, क्लोरोफाइस स्टार्च। तो फ्लोरिडियन स्टार्च कार रिजर्व फूड मटेरियल रोडोफाइसी बा रेड आल्जी। ओके रेड आल्जी बा रोडोफाइसी। बहुत बढ़िया 227 को जीवा। Which provides peat that have been long been used as fuel? को ब्रायोफाइट प्लांट पीट प्रोवाइड करछ हमको? मार्कांसिया, फ्यूनारिया, स्पैग्नम, पॉलीट्राइकम। 227 रो आंसर कोन हबो? पीट को ब्रायोफाइट प्रोवाइड करछ? पीट नहीं भी नहीं। आंसर मन रखंतु पीट प्रोवाइड करछ स्पैग्नम। स्पैग्नम ब्रायोफाइट प्रोवाइड करछ पीट। ओके स्पैग्नम इज द करेक्ट आंसर। स्पैग्नम सी ऑप्शन सी 227 रो सी हबो स्पैग्नम। ठीक अछि नेक्स्ट जीवा 227 रो सी हबो स्पैग्नम। ओके 228 को चलंतु। ब्रायोफाइट्स ग्रोथ इन मॉइस्ट एंड सेडी एनवायरनमेंट बिकॉज ब्रायोफाइट माने काहे कि मॉइस्ट और सेडी एनवायरनमेंट रे ग्रो करछन। दे कैन नॉट ग्रो ऑन लैंड, their gametes fuse in water, they lack vascular tissue, they lack roots and stomata। कौन हो आंसर? ब्रायोफाइट माने काहे कि मॉइस्ट और सेडी एनवायरनमेंट रे ग्रो करिवे बिकॉज से माने लैंड रे माने टेरेस्ट्रियल रही पारुचंदी बट से मानकर गेमेट मानकु फ्यूज हेया पे वाटर इज वेरी मच एसेंशियल। से माने मेल गेमेट फीमेल गेमेट फर्टिलाइजेशन हेया पे गेमेट फ्यूजन पे वाटर इज वेरी मच एसेंशियल। सेति पे तो ब्रायोफाइट मानकु कोन कोला कहि परिबे? ब्रायोफाइट्स आर नोन एज एम्फिबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। मन रखंतु एम्फिबियंस माने कोन जो माने बोथ लैंड और वाटर रही परिबे। ठीक अछि तो एम्फिबियंस ऑफ प्लांट किंगडम को गला ब्रायोफाइट। एम्फिबियंस ऑफ प्लांट किंगडम होची ब्रायोफाइट। ओके प्लांट किंगडम। ओके ठीक अच्छे नेक्स्ट चलन जीवा 229 आउट 10 टा क्वेश्चन अच्छी सर जीव फटाफट। ओके 228 सरला 229 कहतु। During C3 cycle, carboxylase enzyme Rubisco catalyzes joining of CO2 with CO2 सहित का सहित मिस होची एक्सेप्टर की? अरे आउ तो रिपीट हला तो आंसर कोन हो? राइबुलोज RUBP। राइबुलोज होबनी राइबुलोज बाइफॉस्फेट हो। ओके राइबुलोज हो राइबुलोज बाइफॉस्फेट RUBP। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करिबा 230 yes RUBP। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेस सरगम। सरगम रो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट किए? तो फर्स्ट टाइम जानिया पड़ियो सरगम गोटे C3 प्लांट ना C4 प्लांट। जदि C3 हेतिबो ताले फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हबो, जदि C4 हबो ताले ऑक्सालो एसिडिक हबो। तो सरगम फर्स्ट मते कोंतु ये को टाइप रो प्लांट C3 ना C4? सरगम होची मन रखंतु C4। जदि C4 ताले फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट के हबो? ऑक्सालो एसिटिक एसिड। क्लियर? सरगम होची गोटे C4 प्लांट तेणु तार फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट के ऑक्सालो एसिटिक एसिड। ओके इजी थी जानिया पड़ो सरगम इज C4 प्लांट देन आंसर आप आसू ऑक्सालो एसिटिक एसिड हबो। ओके 231 को जीवा। In Hatch and slack pathway, the primary CO2 acceptor Hatch slack माने कौन C4 जेतु दि जण साइंटिस्ट केल्विन साइकिल माने C3 साइकिल Hatch and slack होची
C4 रो प्राइमरी कार्बन डाइ एक्सेप्टर किए C4 एक्सेप्टर किए कहली मु फॉस्फोइनोल पाइरुवेट PEP फॉस्फोइनोल पाइरुवेट होचे एक्सेप्टर ओके स्टेबल प्रोडक्ट होचे ऑक्सैलिक एसिड किंतु CO2 को एक्सेप्ट किए करछि जेमि सेठी CO2 को एक्सेप्ट किए करतला C3 RUBP एटी एक्सेप्ट किए करिवो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट ओके एक्सेप्टर 231 तो 231 रहबो D बुझले नै एक्सेप्टर मन रखंतु स्टेबल प्रोडक्ट मन रखंतु नोट डाउन कर दियंतु C3 रो एक्सेप्टर किए कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर किए RUBP C3 रो स्टेबल प्रोडक्ट 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड C4 रो एक्सेप्टर किए फॉस्फोइनोल पाइरुवेट PEP आउ फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट किए ऑक्सैलिक एसिड सल्ला मोर मैराथन वीडियो के देखि दियंतु ए जिंसटा क्लियर हे जो पूरा ओके पूरा इजीली मु डिस्क्राइब करछि तो टिके क्लियर हे जो काइंडली जाई देखि दियंतु 232 को जिबा which of the following is not a product of light reaction of photosynthesis which of the following is not a product of light reaction रो प्रोडक्ट ऊपर डार्क रिएक्शन डिपेंड करछि तो लाइट रिएक्शन रो प्रोडक्ट किए किए जदि हम लाइट रिएक्शन प्रोडक्ट देखिबा एटीपी तयारी होछि लाइट रिएक्शन रे ओके NADPH मध्ये तयारी होछि ऑक्सीजन भी फोटोलाइसिस वाटर रे बाहर छि बट NADH नाही NADH इज नॉट प्रोड्यूस्ड तो NADH तो तयारी होउनी तो आंसर हो 232 रो बी NADH ओके 232 हला ओके 232 NADH 233 को जिबा which of the following growth regulator is an adenine derivative कौन तो 233 एडेनाइन डेरिवेटिव की जदि हम कहे ऑक्सिजन होची इंडोल डेरिवेटिव ठीक अच्छे तो एडेनाइन डेरिवेटिव क्या हो यस साइटोकाइनिन इज एडेनाइन डेरिवेटिव ओके सी एडेनाइन डेरिवेटिव 233 एब्सिक एसिड जिबरलिन सब जाक काइंडली देखि दियंतु मोर मैराथन वीडियो रे मु डिटेल कहि दैछि को फाइटोहॉर्मोन रो प्रिकर्सर डेरिवेटिव जाउ की ठीक अछि तो साइटोकाइनिन एठी हबो एडेनाइन डेरिवेटिव Name the plant growth regulator which upon spraying on sugarcane crop increase the length of stem माने हाइट को बढ़ौछि को प्लांट हार्मोन दा हाइट को बढ़ौछि जिबरलिन एथिलीन एब्सिक एसिड और साइटोकाइनिन प्लांट ग्रोथ की करूछि जिबरलिन ओके प्लांट को रो हाइट बढ़ौछि स्टेम रो लेंथ को बढ़ौछि के 234 ऑफ क्वेश्चन ऑप्शन ए जिबरलिन इज द करेक्ट आंसर ओके जिबरलिक एसिड बा जिबरलिन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 235 को जिबा जदी कोन कहला 235 नंबर क्वेश्चन इन सम प्लांट्स थैलामस कंट्रीब्यूट्स द फ्रूट फॉर्मेशन सच फ्रूट्स आर कॉल्ड एज दिस हमर प्लांट मानन करे फ्रूट तयारी ओवरी ट्रांसफॉर्मेशन होई जिवो फ्रूट ठीक अछि ओव्यूल ट्रांसफॉर्म होई जिवो सीड ठीक अछि तो ओवरी रु फ्रूट फॉर्मेशन न होई जदी थैलामस रु जदी तयारी हो गला फ्रूट ताले से फ्रूट को कौन कह जिवो एग्रीगेट ट्रू फ्रूट पार्थेनोकार्पिक आ फॉल्स फ्रूट तो आंसर कोन हबो आंसर फॉल्स फ्रूट किछि फॉल्स फ्रूट रे एग्जांपल मु तो इंफॉर्मेशन पई को दे दैछि एप्पल स्ट्रॉबेरी पाइनएप्पल ए सब होचंती फॉल्स फ्रूट ट्रू फ्रूट का कहबा जदी से ओवर रु बाहर थिबो आ जदी से फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन तयारी हेछि विदाउट फर्टिलाइजेशन जे तयारी देन इट इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट ओके सीडलेस फ्रूट पार्थेनोकार्पिक but it is false fruit developed from thalamus 236 को जिबा functional megaspore in an angiosperm develops into megaspore female reproductive organ of plant megaspore functional megaspore कौन हो ovule endosperm embryo sac and embryo तार आंसर हबो एम्ब्रियो साक मेगास्पोर्टा बारंबार डिवीजन है कि 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियेटेड एंड एम्ब्रियो साक तयारी करिवो ठीक अछि तरो आंसर कोन हबो
एम्ब्रियो sac 236 आओ मात्र 3टा क्वेश्चन ovule of an angiosperm is technically equivalent to megaspore mother cell, megasporangium, megasporophyll. Ovule is equivalent to, very important question, ovule का साथ equivalent. Answer कौन होगा 237. Yes, option C, that is your megasporangium. Ovule is equivalent, technical equivalent to megasporangium. ठीक है मन रखु 237 C. 238 जो देखिबा सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन होची पार्थेनोकार्पी. एटी कोन कहला सीड फर्टिलाइजेशन, सॉरी सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन माने फर्टिलाइजेशन हे नै किंतु सीड फॉर्मेशन हो. ए टाइप रे यूनिक प्रोसेस बा फेनोमेना को कोन कहउची स्पोरुलेशन, बडिंग, सोमाटिक हाइब्रिडाइजेशन, एपोमिक्सिस. कोन हो आंसर 238. फ्रूट फॉर्मेशन जदि कहि थांता विदाउट फर्टिलाइजेशन पार्थेनोकार्पी. सीड formation without fertilization कौन होगा आंसर yes D, that is your apomixis हला seed formation without fertilization apomixis 38. then आज your marathon video last question, that is your 239 question को जिबा 239 question. yes coconut water question da. coconut water from tender coconut represents एंडोकार्प, फ्लेसी, मेजोकार्प, फ्री न्यूक्लियर प्रोएम्ब्रियो, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. कोकोनट वाटर टा कौन, कोकोनट वाटर कौन रिप्रेजेंट कुछ कमेंट सेक्शन जल्दी बोलू. 239 ये ना 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 ए ऑप्शन हबनी. कोकोनट वाटर होची फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मन रखु. आउ कोकोनट रो जो व्हाइट पार्ट ला, व्हाइट कर्नल एडिबल पार्ट ला जोड़ा हमें खाऊ कोकोनट रो व्हाइट पार्ट ला सी होची सेलुलर एंडोस्पर्म. कोकोनट वाटर होची फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दिजन जगह एंडोस्पर्म बट द वाटर इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंड द व्हाइट कर्नल एडिबल पार्ट इज सेलुलर एंडोस्पर्म. ओके सो आज लाइव सेशन एति कितला. थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट. धन्यवाद समस्त को आपण माने जोड़ी रहिले बहुत समय 8 रु 12टा 24-25 हेलाने. क्रिएटिव एजुकेशनल आईडिया यूट्यूब चैनल तरफ बहुत अशेष धन्यवाद समस्त को. आपण मानकर परीक्षा LTR मेंस बहुत भलो हो, भल से प्रिपेयर करंतु. जो माने मोर मैराथन देखि नांती लाइव सेशन जूलॉजी और बॉटनी कंप्लीट सिलेबस काइंडली देखि दियंतु. ओके ठीक अछि. जदि भल लागला भी जहाँ भी क्वेरी जहाँ कमेंट सेक्शन रे कहंतु. ए वीडियोटा आपण मानकर सेव हे कि रहि जिवो. ठीक अछि ताले मो स्ट्रीम एंड करछि. थैंक यू, गुड नाइट समस्त को. भल से पाठ पढंतु आ LTR मेन क्रैक करिक देखंतु. ओके थैंक यू.